अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको पिंडी में, जहाँ पर एक खूबसूरत सुबह है। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत मनाजर रावलपिंडी के, जहाँ पर चौथे मरहले के मैचेस शुरू हैं ओवरऑल। और ये है खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सिंध, जो कि टाकरा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन 2022-23 का आज पहला दिन। एक अच्छा आगाज होना चाहिए और तवक्को भी यही है। और अब तक की जो स्टैंडिंग्स हैं इन तमाम टीम्स की, वो कुछ इस तरह से रही। नॉर्दर्न इस वक्त टॉप पे है 3 मैचेस के बाद, 2 में फतह समेटी 59 पॉइंट्स हैं एक्सीलेंट 40 नंबर्स के साथ। सेंट्रल पंजाब है दूसरे नंबर पर, जबकि बलूचिस्तान का है तीसरा नंबर। 1 फतह और 1 नुकसान के बाद उनके हैं 32 पॉइंट। 30 पॉइंट्स हैं सिंध के, अभी तक कोई फतह का मज़ा नहीं चख पाई अपने 3 मैचेस में। जबकि ATF सदर्न पंजाब 3 मैचेस में 1 हार गई है, जबकि इसके पॉइंट्स हैं 29। और 22 नंबर पर है खैबर पख्तूनख्वा, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं 3 मैचेस के बाद। खैबर पख्तूनख्वा अपना पहला मैच खेलने जा रही है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और ये मनाजिर हैं टीम के यादगार लम्हा, जो कि हर फर्स्ट क्लास गेम से पहले ग्रुप पिक्चर बनाई जाती है। KP की टीम काफ़ी अच्छे और बेहतरीन प्लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान, जो कि बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे मैच का, जहां पर 22 यार्ड कैसी खेलेगी। और नॉर्मली हमने देखा कि इस ओवरऑल टूर्नामेंट में पिचेस अच्छी रही, रिजल्ट्स लगभग 9 मैचेस में से 3 में रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो आज जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी पिच कैसे खेलेगी, क्या कुछ होगा, फैसल हमारे साथ मौजूद है। आइए चलते हैं उनकी तरफ। It's a surprise that we haven't got a result here at the Pindi Cricket Stadium in the first 3 rounds of Quaid-e-Azam Trophy. The reason I say that, because we had some excellent pitches, and looking at round 4, if we look at this one, it's no different. गुलाम, न्यू कैप्टन खालिद उस्मान की क्या रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, वो आज रेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे अहमद खेल रहे हैं। पिच को देखते हुए अगर ऑप्शन आपके पास होती तो क्या आप भी पहले बॉलिंग करते? जी डेफिनेटली। एक चीज़ जो हमने देखने को मिली है वो आपके बैटिंग पॉइंट्स हैं, जिस पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। 8 बॉलिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन जो बैटिंग पॉइंट्स है वो सिर्फ 4 हासिल किया आपने। तो क्या वो एरिया ऑफ कंसर्न है आपके लिए? जी बिल्कुल, काफ़ी लड़के हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह तो उस पर काफ़ी वर्क किए, तभी इस मैच में अच्छा से अच्छा करेंगे। आपकी टीम न्यूज़ क्या है? हमारी टीम इमरान सीनियर खेल रहा है, इरफानुल्लाह शाह की जगह सरवर खेल रहा है, खालिद उस्मान की जगह। चलिए, ऑल द बेस्ट कामरान गुलाम। थैंक यू सो मच। Right, the news is that Sindh captain Saud Shakil, he was the away captain and he's decided that he's going to bowl first. टॉस नहीं हुआ और सिंध की टीम अब करेगी पहले बॉलिंग। और आपको बताते चले, खुरम मंजूर सिंध साइड में अच्छे टॉप ऑर्डर बैटर हैं। साइम अयूब अच्छी फॉर्म में, अच्छा टैलेंट है। उमैर बिन यूसुफ, सऊद शकील लीड कर रहे हैं। एक बड़ी इनिंग खेल चुके, लेकिन एक आध और बड़ी इनिंग से उनकी तवक्को है। फवाद आलम, साद खान, मोहम्मद हसन आज की शमूलियत है। उसके बाद मोहम्मद उमर, मीर हमजा, आसिफ महमूद को शामिल किया गया सिंध की। इनके पास भी शुरुआत कह सकते हैं आप, 5 मैचेस 332 रन। बस तो आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने साथी के साथ मिलकर एक अच्छी शुरुआत करें। दूसरी जानिब मीर हमजा बहुत ही मंजे हुए टैलेंटेड बॉलर हैं। 91 मैचेस में 370 विकेट्स। यासिर? जी हाँ, बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। पिछले मैचेस में भी हमने देखा बहुत अच्छे स्पेल्स किए इन्होंने। अनफॉर्चुनेट रहे, विकेट्स नहीं मिल सकी, लेकिन इनका जो लाइन लेंथ है, एक्सपीरियंस है, नो डाउट वो उनके फिगर्स बता रहे हैं। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तीन स्लिप है, एक गली है। Here we go, पहला बॉल आज के दिन का। ऑफ स्टंप से बाहर। और जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉल है, हमने पिछले मैच में भी देखा, जब मीर हमजा या उनके जो साथी बॉलिंग करवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विविड रहे। नया बॉल प्रॉपर्ली इस्तेमाल होना चाहिए। जी हाँ, तीसरा मैच खेल रही है सिंध यहाँ पे, और मेरे ख्याल से इनको अब तक सीख जाना चाहिए कि कौन सी जगह जो है इस पिच में कहाँ पे बॉल करने हैं और कहाँ पे बॉल पिच होना चाहिए। प्रोफेसर नासिर,
इस वक्त ऑन फील्ड अंपायर हैं, अच्छे सीनियर अंपायर। अच्छा बॉल था, आगे पड़ा और इसके साथ ही ऑफ द मार्क हुए। उनके साथ खालिद महमूद सीनियर। इनके लिए पिछला मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा, फैसले बहुत ज़बरदस्त और एक्यूरेट किए। जी हाँ, अच्छी अंपायरिंग की पिछले मैच में खालिद महमूद ने। ऑन साइड पे एक फील्ड कैचिंग पोजीशन पे है, जबकि ऑफ साइड पे 3 स्लिप और एक गली है, तो अटैकिंग मूड में ऑफ स्टंप के बाहर बॉल होना चाहिए। और इससे पहले भी ये बात कर चुके यासिर के जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉल है नए का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस तरह के लॉन्गर फॉर्मेट में, कि आप जो नया बॉल है इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। या बिल्कुल, जगह पे बॉल बहुत ज़रूरी है, नया बॉल। और जिस तरह के अमीर हमज़ा हमें पता है, इज़ सीजन कैंपेनर और अच्छे बॉलर हैं। और इन्होंने पिछले मैच में भी जैसे हम बात कर रहे थे अच्छी बॉलिंग की, और तीसरा मैच खेल रही है सिंध यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इनके माइंड में होंगी। बहुत उम्दा, एक्सीलेंट बॉलिंग, अच्छी लाइन है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब एक टीम एक क्लाइमेट में एक सरफेस पे लंबा खेले तो उनको आइडिया होता है कि जो विकेट है वो कैसी खेलेगी, कहाँ पे बॉल पिच होना चाहिए। या थोड़ा सा स्विंग हुआ बॉल और अच्छी हाइट पे आया। अभी तक जो बाउंस जो लग रहा है इस पिच में, बाउंस लग रहा है कि है, तो लेट्स सी के बॉलर्स से अच्छे बॉल देखने को मिलेंगे। इस बॉल में भी हल्का सा मूवमेंट जरूर था, लेकिन उतनी अच्छी शॉट थी, थोड़ा फंबल हुआ, मिसफील्ड, रिजल्ट एक एक्स्ट्रा रन। ये छोटी छोटी चीजें यासिर जो कि अपोनेंट पे दबाव बढ़ाती हैं, कि अगर आप इस तरीके से आसानी से देते हैं। आसिफ महमूद थे जिनसे मिसफील्ड हुई। जी हाँ, पिछला मैच नहीं खेले, रेस्ट किया था और अभी दोबारा आए हैं मैच खेलने, और सिंध ने इनको मौका दिया है गुलाम मुदस्सिर की जगह। बोल्ड कर दिया, बॉल पड़ के थोड़ा सा अंदर को आया और पहली विकेट, पहली कामयाबी यहां पर मिली है सिंध की टीम को। खैबर पख्तूनख्वा यहां पर डगमगाते हुए। जी बहुत अच्छा बॉल मीर हमजा का। परफेक्ट लाइन, परफेक्ट लेंथ, बॉल स्विंग होके अंदर आया। ये शॉट बिल्कुल ऑन नहीं थी, कवर्स खेलने गए वकार अहमद, जो कि पिछले मैच में जिन्होंने इस सीज़न में एक सेंचुरी भी स्कोर की है, सिर्फ 2 रन बना के पवेलियन की तरफ लौटे। खैबर पख्तूनख्वा 2 for 1। नए आने वाले बैट्समैन रेहान आफरीदी, जो कि वाइस कैप्टन भी है इस टीम के, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। इनको ऑर्डर पे प्रमोट किया गया है। यूजुअली ये इस नंबर पे नहीं खेलते, ये मिडल ऑर्डर खेलते हैं। इकहत्तरवां मैच, 3,347 रन, अच्छे बैटर हैं। और जैसे यासिर अभी कह रहे थे कि उनको प्रमोट किया गया, तो यकीनी तौर पर जब एक विकेट इतना अर्ली गिर जाए तो थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर चाहता है कप्तान। लेकिन सऊद यहाँ पर खुश होंगे जिस तरीके से मीर हमजा ने बॉलिंग करवाई, और जो अर्ली यूज़ हम बात कर रहे थे सरफेस की, बॉल की, वो प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं। मोहम्मद उमर अच्छे बॉलर हैं, और इनफैक्ट जो पिछला गेम था यहाँ पर उसमें भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नफीतुली बॉलिंग करवाई, अच्छा बॉल को पटकते रहे। नवा मैच इनका, 18 विकेटें इनके पास।
लेकिन बहुत ज़बरदस्त बॉलर, एक्यूरेट इनफ। ये मोहम्मद उमर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल रहे, 2 विकेट्स नहीं ले सके पिछले मैचेस में, लेकिन बड़े टाइट लाइन और लेंथ से बॉल करते रहे। बहुत बाहर बॉल लेग साइड पे, अच्छा टेक था और हवा में उड़कर एयर बॉर्न हुए और इस बॉल को पकड़ा और अंपायर खालिद की जानिब से वाइड का सिग्नल। जी हाँ, मोहम्मद हसन जो है आज इनको मौका मिला है, सिंध की टीम में सरफराज अहमद रेस्ट कर रहे हैं और ये अच्छे विकेट कीपर हैं। अच्छा टेक। या यकीनी रन्स यहाँ पर बचाए और इस मौके को प्रॉपर्ली अवेल करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा बॉल, बहुत उम्दा, राइट ऑन मनी। और यही वो लाइन है जिससे आप बैटर को बैकफुट पे रख सकते हैं। जी हाँ, ये ऐसा पिच है कि यहाँ पे ऑब्वियसली बॉलर्स का बॉल तो हो गई। ये बॉल देखें, लास्ट जो पहला विकेट मिला बहुत अच्छा अंदर आया, परफेक्ट डिलीवरी नए बॉल से मीर हमजा की। और इस तरह की शॉट्स खेलने से गुरेज करना पड़ेगा केपी की टीम को। आइडियल जो बॉल हुआ मीर हमजा ने वो किया, जो लेफ्ट आर्म स्पिन और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का जो आइडियल डिलीवरी होती है। अच्छी बॉलिंग उमर की और सिंध की टीम डेफिनेटली चाहेगी कि वो जो नए बॉल का एडवांटेज है वो लें और शुरू में कुछ विकेट्स हासिल करके केपी की टीम को बैकफुट पे ले जाया जाए। जी हाँ, लेकिन दूसरी जानिब जो शुरुआत है केपी की, यकीनी तौर पर जो बाकी खालिद उस्मान इस वक्त नॉर्मली वो कप्तान नामजद हुए थे लेकिन आज नहीं खेल रहे। काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है जिस वक्त आप टॉप के इस तरह के बैटर्स को, कप्तान को या बॉलर्स को तब्दील करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये भी शुरुआत है आज इस मैच की। जी हाँ, बिल्कुल। एज सेट के सिंध अपना तीसरा मैच खेल रही है पिंडी स्टेडियम में और डेफिनेटली बहुत एडवांटेज होता है प्लेयर्स को। ऑलरेडी उन्होंने टाइम गुजारा होता है ग्राउंड में और बड़े अच्छे मैचेस खेले हैं, बड़े टाइट मैचेस खेले हैं इन्होंने। तो इस मैच में जो मुझे एडवांटेज लग रहा है वो सिंध की टीम को लग रहा है। बहुत उम्दा। वेल, खैबर पख्तूनख्वा डिफेंडिंग चैंपियन भी है। बलूचिस्तान ने सरप्राइज़ किया था पहले ही मैच में 134 रन की फतह समेट कर, और सऊद शकील अपने बॉलर से बात करते हुए, और बिल्कुल ये बहुत बेहतर है। हमने इससे पहले भी देखा हसन जब अपने, या अब्बास इनफैक्ट, अपने बॉलर के साथ बात कर गुफ्तो शनीद करते हुए उनको बताते हुए कि कौन सी लाइन बेहतर है अर्लियर ऑन। अभी तक सिंध कोई फतह समेट नहीं पाई इस इवेंट में। इनफैक्ट ये चौथा राउंड है, 3 मैचेस उनके ड्रॉ हुए। इसके साथ ओवर का अभी अख्ताम नहीं हुआ, लेकिन भागे ऐसे थे विकेट कीपर जैसे वो एक बॉल ज़्यादा काउंट कर गए। इमरान खान जो कि अच्छे टेस्ट क्रिकेट फास्ट बॉलर हैं। बल ये बेहतर है आप हैवी ब्रेकफास्ट की बजाय इस तरह के हल्के फुल्के स्नैक्स खाएं। बेहतर लाइन ऑफ स्टंप पे। इसके साथ ओवर का इख्तिताम हुआ, 2 गए, 4 पे 1 केपी। वेल, चौथा राउंड इस वक्त शुरू है। एबटाबाद, फैसलाबाद और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम होस्ट है। ये 10वां मैच बलूचिस्तान वर्सेस ATF सदर्न पंजाब जो कि एबटाबाद स्टेडियम में जारी है। उसके साथ सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न जो है ये इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पे मध्य मुकाबिल है। केपी और सिंध का मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे है इस वक्त कंटिन्यू। वेल, रेहान से इस वक्त उम्मीदें हैं क्योंकि जिस तरह से पहला विकेट गिरा, थोड़ा सा वॉचफुली रहना पड़ेगा क्योंकि बॉल इस वक्त थोड़ा सा हिल रहा है।
काफी वॉचफुली खेला। यह बड़ी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ, बिल्कुल स्पॉट ऑन। मीर हमजा 3 स्लिप्स, और एक गली खड़ी है कैचिंग के लिए। मिड ऑफ पॉइंट, स्क्वायर लेग और मिड ऑन। थोड़ा सा शफल किया था ऑफ स्टंप की तरफ रेहान ने, और जिस तरह से उन्होंने सिग्नल दिया कि ऑन साइड पे वो शायद गैप निकालकर ऑफ द स्ट्राइक होना चाहते हैं। ये एक अच्छा मूव केपी की तरफ से। रेहान जो कि रन्स करते आ रहे हैं केपी के लिए, लगता है कॉन्फिडेंस, उन पे कॉन्फिडेंस है कप्तान को, मैनेजमेंट को। जो जल्दी विकेट गिरी है तो उनको ऊपर भेजा गया है। काफी फॉरवर्ड इस बॉल को खेला और जिस्म से दूर था। जी आपने सही कहा, रेहान आफरीदी की अगर हम बात करें, अब तक ये 3 मैचेस खेले हैं, 54 इनका बेस्ट है। अच्छा बैट करते हैं और टॉप ऑर्डर पे जिस तरह से अभी बॉल हिल रहा है, जैसे इन्होंने डिफेंसिव अंदाज अपनाया है, मेरे ख्याल से कप्तान ने बिल्कुल इन्हें सही भेजा। दूसरी जानब ये अबरार बहुत ज़बरदस्त बॉलर, 11 विकेट्स प्रीवियस गेम, और कप्तान को आज भी इनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अर्लियर ऑन अभी फ़िलहाल जो पेसर है वो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त व्हिप अप हुआ ये बॉल। जी एक्सीलेंट बॉलिंग मीर हमजा की, अपनी लाइन को होल्ड किया। इस बार अंदर आ रहा था, सारे बॉल अंदर आ रहे थे, बॉल एंगल के साथ बाहर निकला और बहुत ही अच्छी डिलीवरी। रेहान, अच्छी चीज़ ये है कि बल्ला जो अपनी बॉडी के पास रख रहे हैं, अगर चेस करने जाते तो मुश्किल में पड़ सकते थे। एक्सीलेंट, बिल्कुल बॉल आगे रख रहे हैं और ये बेहतर है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो विकेट मिला उसमें बॉल में मूवमेंट था, और अब भी थोड़ा सा बॉल फुलर रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी हिल के बॉल पैड पे लगे तो उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अच्छा, इस वक्त रेहान आफरीदी की जानिब से भी डिफेंसिव अंदाज, कोई पैनिक नहीं है। क्या जबरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं इस वक्त, ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब, अनसर्टेनिटी का जो कॉरिडोर है वहां पर मीर हमजा का एक अच्छा ओवर मेडन, और यासिर, ये बॉल थोड़ा सा सीम हुआ पढ़कर और उसी तरह बाहर की जानिब गया। ये दोनों बॉल इन्होंने किए हैं, खुद किए हैं, ये बॉल बाहर निकाले। एक्सीलेंट बॉलिंग। दोनों टीम्स इस वक्त अच्छी बैलेंस साइड्स हैं दोनों। अगर हम देखें टेस्ट क्रिकेटर्स की, अगर बात करें टॉप पे खुरम मंजूर, उसके बाद सऊद शकील, फवाद आलम, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, और केपी की टीम में भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और इमरान खान सीनियर, कामरान गुलाम, साहबजादा फरहान सीजन कंपेनर हैं और परफॉर्मर्स हैं केपी के लिए। कामरान गुलाम ने तो लास्ट सीज़न में टॉप किया और सबसे ज़्यादा रन्स के रिकॉर्ड किया पाकिस्तान का कायज़ाम ट्रॉफ़ी में। जी हाँ, कामरान गुलाम की आपने बात की, 1 सेंचुरी और 2 50s अभी इस सीज़न में भी बना चुके हैं, लेकिन अच्छे बैटर हैं। शॉट कवर, 2 स्लिप और 1 गली,
काफी इंटरेस्टिंग मूव, लेकिन खेल गए इसको लेग साइड पे। बॉल पिच भी लेग साइड पे हुआ। जी हाँ बिल्कुल, एक रन हासिल किया अशफाक ने। अशफाक ने भी पिछले सीज़न में रन्स किए थे केपी के लिए और रेगुलर खेलते हैं केपी के लिए। फवाद आलम जो इस वक्त शॉट कवर पे कैचिंग पोजीशन पे फील्डिंग कर रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग फील्ड सेट है सऊद शकील की तरफ से। रैश शॉट खेलने गए, लकी रहे यहां पर कि बॉल ने किनारा नहीं लिया। बहुत करीब था, न जाने कोई सुई का फर्क था बल्ले और बॉल के दरमियान। ये बिल्कुल यही चाहती है सिंध की टीम के केपी के प्लेयर्स इस तरह की शॉट्स खेलें। प्रेशर शॉट कह सकते हैं इसे। कवर का फील्डर ऊपर है और बाज़ दफ़ा बैट्समैन के माइंड में कुछ ऐसा आ जाता है कि मैं इस बॉल पे चौका लगाऊं। एक और अच्छा बॉल, और उनकी कोशिश यही है कि बैटर को फॉरवर्ड लेकर आए। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। थोड़ी सी जो लाइन है मेरे ख्याल से थोड़ी सी बाहर है, और वो वॉक करके आए इसको स्विंग को नेगेट करने के लिए और फील करवाना चाह रहे हैं, बल्ले से खेलना चाह रहे हैं। लेकिन ये ख़तरे से खाली नहीं होगा। अगर बॉल बल्ले को छू गया तो स्लिप्स में कोई टाइम नहीं लगेगा। जी वॉचफुल होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5 रन हैं और 1 विकेट गिर चुका है। ये आसान है किसी भी बैटर के लिए इस तरह के बॉल को खेलना। डॉट बॉल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 4 गए, 5 पे 1। वेल दोनों साइड पे कुछ तब्दीलियां हैं, जैसे मोहम्मद हसन सरफराज की जगह आए और आसिफ में, ये दोनों तब्दीलियां। और दूसरी जानब जो केपी है उसमें अशफाक अहमद टॉप पे हैं, जो कि तब्दीली हुई। उसके साथ मोहम्मद सरवर आफरीदी और इमरान खान। जी और खालिद उस्मान नहीं खेल रहे ये मैच, जो पिछले मैच में कप्तान थे। जी इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब मोहम्मद उमर का बॉल बाहर निकल रहा है और इशफाक अहमद के वही टैक्टिक्स होंगे नेगोशिएट करने के। लेट्स सी। अच्छा बॉल था, तेज आया, और उमर की जैसे आपने बात की कि अच्छी पेस, अच्छी लाइन, बॉल को हिला रहे हैं। जी हाँ, नए बॉल से आउट स्विंगर करते हैं और अच्छी जगह पे बॉल करते हैं। हमने पिछले मैचेस में देखा इकोनॉमिकल हैं। बैट बॉल्स बहुत कम करते हैं, टाइट लाइन और लेंथ है। सऊद ने गो हेड दिया हुआ इस वक्त अपने पेसर्स को, और अच्छा इस वक्त मुजाहिरा करें अपनी बॉलिंग का, और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस वक्त बैटर्स में कि वो किसी न किसी तरीके से इस वक्त को गुजारें। इक्का दुक्का ऐसे बॉल हैं जहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हो रहा है बैटर्स को कोप करने में। जी हाँ, साजिद एफर्ट्स हैं जो कि टीम एफर्ट्स कहलाती हैं, कि अपने बॉलर्स को सपोर्ट करें, कोई भी रन जो हैं वो लीक ना करें। देखिए अच्छी डाइव उमर की। जी हाँ, अच्छी डाइव उमर की, लेकिन ऑपोजिट हैंड से उन्होंने रोका। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि उनकी लेफ्ट साइड पे बॉल था, तो लेफ्ट हैंड से वो उसको स्ट्रेच करना चाहिए था। तेजी से बॉल अंदर को आया और मैरिट पे खेले। वेल इस वक्त
रन्स जो है वो उतने फ्लो से नहीं आ रहे, जिसका मतलब है कि बॉलिंग बेहतर हो रही है और बैटर्स के माइंड में यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं ये शक का आंसर ज़रूर है कि बॉल हिल रहा है, तेज़ आ रहा है। क्लियरली इम्पैक्ट देखें, 8 रन एक विकेट के नुकसान पे, छठा ओवर। ये बिल्कुल जो पिच का मॉइस्चर है उसका फ़ायदा भरपूर भरपूर तरीके से उठा रहे हैं और वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं बैट्समैन के माइंड में। एक्सीलेंट डिलीवरी, बहुत अच्छी बॉलिंग। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 8 पे 1। पढ़कर ये बॉल उठा और चूंकि आप क्रीज से बाहर थे, आगे बढ़ रहे थे, सरप्राइज किया बॉलर ने और लकी रहे यहाँ पर। बॉल एज होने के बहुत करीब था, स्लिप के गली के फील्डर बिल्कुल तैयार हैं कि बॉल उनकी तरफ आए। 6 ओवर गए पर केपी 8 पे 1। यहाँ से अभी तक डबल फिगर्स में नहीं गया कोई भी बैटर, एक विकेट भी गिर गई। तो अच्छी बॉलिंग इस वक्त सिंध के बॉलर्स की जानिब से। इनफैक्ट अगर हम बात करें पेसर्स की, टू बी प्रिसाइज, कि उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवाई है, अटैकिंग बॉलिंग करवा रहे हैं। जी मीर हमजा 4 रन दिए सिर्फ अभी तक, 3 ओवर्स किए और स्पॉट ऑन है अपनी लाइन और लेंथ में। लेग साइड पे। वेल ओवरऑल अगर हम देखें इस हिस्से में जहां पर एबटाबाद, फैसलाबाद और पिंडी में मैचेस चल रहे हैं, अब तक 21 सेंचुरीज बन चुकी हैं। और अगर हम पिचेस की बात करें तो तीनों जगहों पे सेंचुरीज भी बनी, विकेट्स भी अच्छे थे। और अभी भी जो पिच है ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बीइंग अ पेस बॉलर। देखिए इम्पैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सपोर्टिंग पिच लग रहा है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट स्ट्रिप है। सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। ड्राइव किया इस दफा, थोड़ा सा लीन हुए फॉरवर्ड। कितनी अच्छी टाइमिंग है, बॉल की स्पीड बताएगी, लेकिन बाउंड्री के करीब जाकर बॉल आहिस्ता हुआ। यहां पर बन सकता था रन, लेकिन केयरफुल, बहुत केयरफुल यहां पर रन्स लेते हुए। इस बार कनेक्ट करने में कामयाब हुए रेहान आफरीदी। थोड़ा सा आगे बॉल था और अपनी फ्लिक ऑफ द रिस्ट, हाथों को स्ट्रेच किया और पिछले मैच में जैन ने ये शॉट्स खेली, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, और काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज हासिल की उन्होंने। 100 भी किया इस पिच पे। इस दफा फिर कनेक्ट किया लेकिन प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पाए। वेल बैटर के लिए नॉर्मली हम देखते हैं कि जब 2-3 दफ़ा वो बल्ले के दरमियान में उसके बॉल लगता है तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो मेरे ख्याल से अब तक जो अच्छे स्ट्रोक्स हैं, लेकिन जैसे ड्राइव है चौके के लिए कवर्स में, या ऑन साइड पे ऑन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, उस तरीके से प्रॉपर्ली हिट नहीं कर पा रहे। जी हाँ, बिल्कुल अभी टाइम है इस पिच में और एज ए बैट्समैन इनको टाइम लेना पड़ेगा। शॉट्स के पीछे नहीं जाएं, वेट करके खेलें। लेकिन एक बात जो है वो श्योर है कि इस पिच में रन्स हैं। अगर आप सब्र से खेलें और बॉडी के पास खेलें और सिलेक्ट करें अपनी शॉट्स को, हर शॉट पे भी नहीं जाना। और अगर हर सारी शॉट्स खेलने जाएंगे तो वो उसमें आप बॉलर्स को चांस देंगे। लेकिन अगर पूरी कंसंट्रेशन से खेलें, हमने पिछले मैचेस में देखा रन्स हुए इस पिच पे, लेकिन मेथड के साथ खेलने से। जी हाँ, जिसका मतलब यही है कि आप जो पहला सेशन है उसको मोहतात होकर खेलें, वक्त गुजारें पिच पे। और ये बेहतर है क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले कवर पे या ऑन साइड पे थोड़ा बाहर निकल के ड्राइव करने की कोशिश में थे या तेज़ मारने के चक्कर में। तो ये बेहतर है कि आप रोटेट करें जब आपसे इस तरह के मिडल ऑफ द स्टिक शॉट नहीं लग रहे। अभी भी
3 स्लिप्स हैं, आप खुरम मंजूर को देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, जो कि बिल्कुल डिलीवरी 7 ओवर गए। केपी 13 पे 1। "13 for 1 after 7 overs. KP been put into bat by Sindh, the away side. There was no hesitation at the toss from South Shakil that he wanted to ball first on this pitch. Bit hard, bit lively pitch that we have witnessed. And they've taken 1 wicket so far. Shah Faisal alongside me, the pitch master. What do you think so far? Good morning, Ali, and good morning, all. Yeah, it is another very good wicket. No ball called by Khalid Mahmood. Yeah, the wicket is a bit harder than the previous one. Even covering of grass. It looked like a bit drier to start out. So probably this is the driest of all the 4 pitches that we've seen. That means that at the back end, we do expect some wear and tear. If you have a close look, even covering of grass, which will remain pretty green for the first session at least. So yeah, another good cricketing pitch. I expect another good game of cricket on this Pindi Stadium pitch. Yeah, on the other hand, it's been a little strange start from KP side. They've been flashy, they've been just trying after the bowling, trying to go after the bowling lineup. The shot that Waqar Ahmed played, I think that was uncalled for. Not the choice of shot you should be playing on a pitch like this. Expensive drive. This is what coaches tell you, not to play a shot like this early on. Look at that gap between bat and pad. He could have driven a truck through that. Mir Hamza too skillful, and the youngster's weakness was exposed badly. Yeah, coming off of playing at Faisalabad at times, we to play those pitches. That's what the adjustments you have to make in a long first-class season. The demands here on the first day pitch completely different to any other venue. Was in the air for a bit again. This is what the disappointment is from Umar. Rehan Afridi, we all know that what he's capable of. Yeah, you make a point that playing at Faisalabad, these are different conditions. But early on, have a look at that again. Just using his feet in the air, it was again. This is what Rehan Afridi will do. He's been promoted up the order. And probably for this reason, just to see off this new ball. That's not the best way to do it, though. You're playing way out in front. The moving forward is good, but then you have to allow the ball to come and play close, because if you... Nicely played this time with soft hand. Yeah, if you extend your arms and play out in front, you're likely to hit the ball in the air, and there's plenty of catchers there. Strange approach from KP, but they've survived so far. Yeah, if you look at their results also, it's their batting that has disappointed them. Look at that again. Soft hands actually saved him. Still he got squared up and pushed at it. Look at that. Not the ideal technique. Squared up, chest on to the bowlers. That occasion he just remained in a better position. Was side on, although that angled face of the bat is not advised early doors here. 14 for 1 after 8.
Waqar Ahmed was bowled by Amir Hamza. He'll regret that shot that he attempted. 2 runs he scored. Couple of changes for KP side. Imran Khan coming into the side. Arshadullah also. They just strengthened their fast bowling department. They've dropped down Khalid Usman, the captain, and this is what you expect from KP side. They're not shying away of dropping captains. Sarwar Afridi coming into the side. Arshad Iqbal not included. Surprised? Yeah, there's a lot of competition in the fast bowling department in KP. I was talking to Irfanullah Shah earlier as well. He's been left out and he's been bowling pretty well. But I think they decided to give the experienced man Imran Khan a go here on this pitch, because he will bowl that fuller length. That is guaranteed to bring you success here. Yeah, I was just talking about the tournament so far from KP side. They're just at the bottom of the table. Just 4 batting points, 8 bowling points they've done in that department. They're all right with bowling, but 4 batting points only. That's been their concern. They've not scored runs, only Sabzada Farhan getting 100, Waqar Ahmed also getting 100, but rest have struggled. Yeah, Kamran Ghulam has also scored 100 and 250s, but like you said, most of those performances, Sabzada Farhan's 100 came in the second innings. Very few points on the board after the 3 games, 22. Obviously no wins. It doesn't include the batting points and the bowling points, this graph. 8 bowling points and 4 batting points for KP so far in this tournament. That is disappointing. Maybe the expensive drive that we already saw, maybe the reason that they're not getting many runs. It's the bowlers who've done well. On the other hand, Saud Shakil and his men, 3 matches, 3 draws, and they've come so close of winning the games on a couple of occasions. They would like to win this one, because they're the ones who know these conditions better. It's the 3rd game over here in Rawalpindi. They would know in and out how to bowl, where to bowl, which areas to hit. Ah, he's bowled him. Second one from Mir Hamza. That is beautifully bowled, a consistent bowling. And he dragged it onto his stumps. Disappointed Ishfaq has to go back. It was just a matter of time. You could see it coming. KP batters were all at sea, playing very loose and expensive. Like I said, coming down the pitch to just shorten the length is a good idea. But doing that, you don't want to move your head, and then you don't want to play away from your body. On that occasion, a nothing shot. He was leaving the ball in no position to do that. He was on the walk when that ball hit the bat and ricocheted onto the stumps. Ashfaq, the senior man, goes for 6. KP 14 for 2. KP's most prolific batter. It's not Kamran Ghulam, it's Sabzada Farhan. Both of them equally good. Sabzada Farhan already has 100 in this tournament. The last time that he played, he's in good touch. A big inning is required here from him, because they've lost 2 wickets inside 10 overs of this game. Both wickets going to Mir Hamza. Both wrong shots attempted. Lots of similarities in those 2 shots. 45 games, 2,971 runs, 20 50s, 400s, best of 163, the average 39.61. Yeah, that conversion rate has to be better for a player of Sabzada Farhan's caliber. Just the 400s out of the 20 50s. But yeah, KP is really struggling. And like you mentioned, their struggles with the bat. Their first innings totals have been 220, 240 and 291. That will only yield you 4 points, and that's where the problem has been this season.
Yeah, we'll talk about the approach that they have since morning. There's not been extravagant movement, nothing that you cannot play normally. Punched. Good feeling also. This is where Sindh is so good. These young fielders, the young legs of Sindh, they're just brilliant in the field. Umair bin Yusuf, we know that. He is a brilliant fielder. Yeah, talking about, I just want to ask you the approach from the two batters. They've lost wickets, Ashfaq and Waqar Ahmed. Let's have a look at the second wicket. What was that? Why that extra movement in the crease? There's nothing wrong with that if you finish it before the ball arrives. He was on the walk when he put bat to ball. Runs. That is a good start by Sabzada front, right from the middle of the bat. Couple of runs. Yeah, we've seen Khurram Manzoor do that, and he was very successful against Abbas doing that movement in the crease. Look at that. When the ball hits it, he's still moving. With head in no position whatsoever, he's looking bamboozled. He would not want to see that replay again. But the question, Shah Faisal, is was there a need of doing it? Because we haven't seen much movement from Mir Hamza. Just a couple of deliveries, going with the angle, one seaming away. That's it. Normal swing. There's not been extravagant movement that you have to do all these changes in your stance. Probably they'll have to sit back and rethink the approach. You can have different approaches to tackle the seam and swing. There's nothing wrong with that. It's new ball and Mir Hamza swinging it both ways. You want to tackle that, but then the execution left a lot to be desired. We've seen many players do that, do it with success, but all your movements has to finish before you're attempting to play the shot. And he was not doing that. Sindh on top. It's 16 for 2 KP. Asif Mahmood making a comeback, or all 7 of them actually. He took here on debut, had a very good match. Had a little niggle in the last game, he was rested. Two slips and a gully to start off. Edged! Oh, just fallen over the slip cordon for 4. It's a very good start by Asif. That is what would you expect when Rehan Afridi is playing. He's going to go after the bowling. Lucky boundary. It is indeed. And now the point you were making in the last over, this is what they don't have to do. They're playing so loose. And we've seen on this Pindi pitch, even when you're settled in after 50 or 60, you cannot play like that. But Rehan is flirting with danger. No control whatsoever. It could easily have gone into any of those slippers. Yeah, for Mir Hamza, they had 3 slips. For Asif Mahmood, they just a couple of slips and a gully fielder. There's a fielder at mid-wicket also placed. Get 3 slips? Definitely. I don't like these 2 slips. This is not good from South. Especially to somebody like Asif Mahmood, who you know that he swings the ball in the air. You got to have 3 slips, give him the maximum chance. And also looking at the type of shots that KP batters are attempting, you need to have that 3rd slip also. Absolutely. And we've seen in 3 rounds, most of the batters, when they get out behind the wicket. We haven't seen anybody driving and getting caught at covers or short cover or short mid-wicket because the ball is not stopping.
It's just the movement. They may rue the fact if anything goes in the air in that gap. And that's the best time to make inroads. Sindh need to capitalize. Yeah, not to forget that this is the third game of Sindh on the same venue, Rawalpindi Cricket Stadium. By this time, they should know which areas to hit, where to ball, which fielding positions to put to which bowler, which length to apply. Look at that, 2 slips and a gully fielder at short cover and a fielder at mid-wicket. It's good bowling, good start by Asim Mahmood. That fielder at mid-wicket is really not needed at all. And I would show Rehan Afridi the way he's playing, going after the bowling. I'll show him that gap at covers as well. Go for it. Get more catchers behind. But Saud is thinking differently. Again, walking up to the length. That's what Rehan Afridi is doing. Yeah, the last game, when I had a word with Saud at the presentation, he was like, we gave away too many easy runs in the first inning. Probably that thing's still in their minds. And they just want to restrict KP to a minimum score. Because remember, they gave away lots of runs against Southern Punjab in the first inning. And they were just catching up in all the game after that. The best way to do that, to get him out. High. Good movement off the seam though. High on the thigh pad. Look at that, back of a length. That ball is bouncing very nicely. There's good bounce on this pitch. Very enthusiastic from Asif Mahmood. 20 for 2 after 10. Swung in. This is where Mir Hamza is so good. You cannot really predict him which side the ball is gonna go. Very good character, very nice human being, always smiling, always giving his 100%. Somebody you can rely on. Absolutely. He's toiled hard, and I'd have to say, you only think it's only fair that he got a couple of cheap wickets this morning, because he's really had to work hard during the matches that we've seen him here. Those are the only ones he played because he took a break in one of the games. Now with that ball swinging and the way KP is batting, well, not Sabzada Farhan, he's looking pretty compact, but the others, I think he may be licking his lips that there may be a few more quite cheap wickets. Imran Khan Senior included in this match. It's a good change. He will like bowling on this surface because he's somebody who bowls wicket to wicket. That drive me length, he will use that. All this will run down for a boundary. Saibzada Farhan very lucky on this occasion. Just a tickle and 4 runs taken. Slightly offline, Mir Hamza. Just a little inside edge onto the thigh pad as well. That's why it took a lot of pace off of it. Oh, probably not. Just off the face of the bat and ran away. But this rare loose delivery from Mir Hamza. He's got excellent control. In talking about the choices that KP had to make, they must have had a tough decision to leave Irfanullah Shah out. He's been in good bowling form. Tall and lanky with good bounce on this pitch. Must have been tough. Edged. Falling short of the gully fielder.
It's all happening for Mir Hamza at the moment. He's been spot on with his line and length. Couple of wickets to his name. And when you get, as a fast bowler, get couple of wickets up front on a pitch like this, really, you know, boosts your morale. This is what is happening. Yeah, that's true. Because the confidence goes up. Wickets early in the spell as well. That really lifts your confidence. But Shahzada Farhan, he's probably looked the best of the KP batters, although he's only played 9 deliveries. He's playing tight, close to the body, bringing all his experience. You see a change in the gloveman for Sindh. Mohammad Hassan is back. Sarfraz Ahmed taking a break. Yeah, Sarfraz Ahmed was really disappointed from the effort the last time he played. Such a wonderful character. Maybe taking a break at the moment, resting a bit. Give the opportunity to the young Mohammad Hassan, who's also a very, very good wicketkeeper. Edged. Oh, that's gone right between the two fielders. Point fielder couldn't do much. This will run down to third for another boundary to Shahzada Farhan. Yes, Sindh pays the price for being ultra defensive. They started off with 3 slips and a gully, and for no reason they took the gully fielder out. It would have gone straight into his lap. And that too of Shahzada Farhan must have been a big wicket. Looking to get the teams out on the first morning. That staggered slip cordon wouldn't work. Would have gone straight to gully. A boundary to finish off the over. 28 for 2. Nicely driven. Superb batting by Rehan. Through cover region for 4. Yeah, he's got Sindh rattled somehow. It was too full. He would rather err on the fuller side, inviting that drive, which Asif did, and Rehan was up to the task on that occasion. But look at that fielder at backward point, 2/3 of the way. Just strange from Sindh. Yeah, I think they're trying too many things too early in the inning. Short point, mid wicket in place. They got to be just normal. Play out with the normal 3 slips and a gully. This fielder at mid wicket is wasted in my opinion. Oh, beautiful bowling. Just pulled up the length a little, realizing that Rehan is using his feet. That's a good move by Asif. Good sensible bowling. But again, a poor shot. Look how far out he pushes his hands. These are the balls you should be leaving very comfortably from your crease. But Rehan has been promoted to do a job, I guess, if that's their plan. But so far, he's been lucky that he's still there. Yeah, the fielder at mid-wicket that we were talking about is just a wasted person. Because we have not seen one ball go to that area, not even attempted in that position. So better to have 3 slips there. Is too concerned, I believe, Saud Shakil, about the runs. That is really very hard to fathom what Saud Shakil wants here. KP batters are playing loose. They're playing away from the body. They're not settled at the crease. And you put sweeper at the point boundary. You tell me, Ali Yunus. I'm going to ask Saud Shakil.
and then tell you what he's thinking, the plan, what the plan is. Indifferent from Asif as well. They haven't challenged the KP batters' technique enough. Asif has, because if they do that, the way Rehan is playing, they can create some opportunities. There's no doubt about that. Very lucky. It was a gentle full toss around his leg stump. Should have put away. End of 12 overs, 33 for 2 KP. These two sides, KP and Sindh, they played the final of National T20. What a game that was! Sindh dominated it. It's been a mixed approach from KP side in this tournament. In this year's Quaid-e-Azam Trophy and National T20, they've struggled. It's not the usual KP side who would top every time. What may be the reason? They're missing some of their stars. But they always dominate without stars also. Generally, if you cast your mind, go back to that Pakistan Cup as well, their batting has started to struggle. They miss the likes of Iftikhar. Adil Amin has had a lean patch. It's a good run. There's a chance. Freedy makes it easily. Yeah, probably it's their batting which is struggling. They've got good fast bowlers, good spinners also. And if you look at their batting points, just 4 of them. That's sloppy from Sindh again. On the heel, skipper. Too far, allowing that easy single. Rotation of strike at this stage is the best to just build a partnership. Both the batters not allowing a bowler to build a plan. Just the 2 slips for Umar. Good run again. Very good running between the wickets. Really like the approach from Sahibzada Farhan. He's looked positive. He's looking to get runs. And the type of form he is in, he will enjoy batting on a pitch like this. Because he's normally a back foot player. This one was excellent. Just played the ball into the gap. Easy. Sahibzada Farhan and Kamran Ghulam are the 2 experienced men in KP batting lineup. So they would have to stand up tall and be counted today. Surprise, surprise. A good leave by Rehan Afridi outside the off stump. I think now he's getting over that nervous energy that he had. He was just moving around the crease and very nervous, poking at everything. He's just like a cat on a hot tin roof. But now, that last leave, that may just tell you that he's settling down. That would not be a good news for Sindh, because Saud can take the blame for that, because he's allowed that to happen. Firmly driven. Straight to the man. Yeah, it's almost 1 hour to the game. Things have started to settle. They now know the pace of the pitch. The movement also. They're getting used to it. And normally when as a batter, when you first come to the ground and see a pitch like this, green top, you do get worried. There's another one, not worried at all. Lovely hat. Professor Nasir Hussain, very good umpire. Change in pace. Slower one this time by Umar. And also it's psychological, because you see, when you see the opposition captain putting out a sweeper for you, taking the slip fielder out, that gives you an impression that you've got the opposition skipper thinking. So that was a good tactic, but Saud fell for it too easily. I
I still believe in that. But anyway, a lot of cricket left to be played here. First hour. It's been a good one. One to end the over. It's 36 for 2 KP after 13. It's time for drinks. खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सिंध और ये बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं। अशफाक अहमद ने 6 रन्स बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बोल्ड किया हमजा मीर ने। वक़ार ने 2 रन्स बनाए। रेहान आफरीदी इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं 15 रन्स पर और साहिबजादा फरहान ने 11 रन्स बनाए हैं। सो 36 रन्स पर 2 विकेट्स का नुकसान हुआ है। ये देखिए जिस तरह से बोल्ड किया था, इन स्विंगिंग डिलीवरी और यहाँ पर इनसाइड एज हुए और बोल्ड हो गए। मेरे साथ कॉम बॉक्स में है ये बॉलिंग कार्ड देख सकते हैं। मीर हमजा ने 2 विकेट्स यहाँ पर ली, 6 ओवर्स में 19 रन्स दिए। मोहम्मद उमर और 5 ओवर्स किए हैं अब तक और आसिफ महमूद ने 2 ओवर्स किए हैं। तो पहली विकेट गिरी थी 3 रन्स पर, दूसरी विकेट गिरी 14 रन्स पर। मेरे साथ कॉम बॉक्स में है यासिर हमीद। यासिर अब तक बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है सो फार। अगर आप देखें जिस तरह से मीर हमजा ने कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया। जी हाँ बिल्कुल, जो अर्ली एडवांटेज था वो सिंध की टीम ने हासिल किया थैंक्स टू मीर हमजा, उनकी अच्छी बॉलिंग की बदौलत। और इस वक्त बॉलिंग में तब्दीली हुई है। पवेलियन एंड से अब्रार अहमद को लेके आए हैं जिन्होंने पिछले मैच में 11 विकेट्स हासिल किए और ये जो है कप्तान के लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है जब इस तरह की पिच पे स्पिनर्स जो है वो आउट करे। और ये आप देख सकते हैं और पहले ही गेंद पर डाउन द ट्रैक इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब 4 रन्स के लिए और कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, चार्ज किया। जी हाँ, पॉजिटिव इंटेंट
रेहान आफरीदी की तरफ से पहला बॉल स्पिनर का लूजनर होता है नॉर्मली, और इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। रेहान आफरीदी ने 4 रन हासिल की। इब्रार अहमद पे डेफिनेटली अटैक करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको सेटल डाउन ना होने दिया जाए, क्योंकि एक ख़तरनाक बॉलर हैं। पिछले मैच में 11 विकेट्स हासिल किए और काफ़ी टैलेंटेड है। तीनों चीज़ें ये करते हैं, लेग स्पिन, गुगली, फ्लिपर। ये फ्लिपर किया इब्रार ने। जी हाँ, अब्रार रिसेंटली T20 में भी डेब्यू किया था और काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली थी इनकी जानिब से कराची में। और यहाँ पर अपील हुई है, ज़ोरदार अपील थी और अंपायर जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। जी हाँ, देखना होगा, इंटरेस्टिंग रिप्ले है। बॉल पिच हुआ आउटसाइड द ऑफ स्टंप और इम्पैक्ट जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, जिसकी वजह से शायद अंपायर ने आउट नहीं दिया, और शायद हाइट भी थोड़ा सा हो। जब आप लेग स्पिनर की बात करते हैं, ये डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर के अख्ताम हुआ है 40 पर 2। कामरान गुलाम इस वक्त आप देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम में इमरान खान उनके साथ हैं। और केपी की जब हम बात करते हैं तो केपी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करती रही है डोमेस्टिक में। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिफाई अंदाज में खेला, और जो पिच का बिहेवियर रहा है यासिर पहले घंटे में हमने देखा, और उसमें जिस तरह से मीर हमज़ा ने बॉलिंग की, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंडीशंस का फ़ायदा उठाया, और अर्ली ऑन ये विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी थे इस पिच पे। जी बिल्कुल, जो पिच में जो मॉइस्चर है या जो घास जो नज़र आ रही है उसका एडवांटेज उठाया है सिंध की टीम ने। लेकिन जब से साहबजादा फरहान आए हैं पिच पे, बहुत ही अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, और यहाँ से एज हो सकता था। ये वो लाइन और लेंथ है जिसके ऊपर काबू रखना होगा, और साहिबजादा फरहान यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा बॉल, बीट हुए बिल्कुल। जो लाइन है वो जज नहीं हुई उनसे, और बीट हुए। बहुत अच्छा बॉल पढ़ के बाहर निकला। और इस दफ़ा एज हुआ, लेकिन यहाँ पर रन्स मिलेंगे, और जी हाँ 2 रन्स बने। एक दफ़ा फिर ये जो लाइन और लेंथ है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर साहिबजादा फरहान, सो 2 रन्स मजीद मिल गए। जी हाँ बिल्कुल, आउटसाइड एज हुआ। मिड ऑन पे खेलने जा रहे थे, और एक बार फिर अच्छी बॉल मोहम्मद उमर की। अच्छी लाइन और लेंथ से बॉल कर रहे हैं। इस दफ़ा साहिबजादा फरहान पहले ही आगे आ गए थे, और मैं ज़ाहिर आप जब आप
पिच के ऊपर आगे आकर खेल रहे हैं, इट मीन्स कि आप प्रेशर ले रहे हैं बॉलर का। यासिर? जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ें उनके माइंड में हैं कि पिच काफ़ी कुछ कर रही है। तो हमने इशफाक को भी देखा, वो आगे आके खेल रहे थे, तो इसकी वजह से वो इनसाइड एज हुए और बोल्ड हो गए। तो एट टाइम्स ये आपको फ़ायदा भी देती हैं, और फिर ये भी होता है कि आपसे कोई गलत स्ट्रोक खेला जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए देखते हैं कि अब फरहान अब आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, ये लाइन और लेंथ वो है जिसके ऊपर साहिबजादा फरहान जो हैं उनको यहाँ पर स्ट्रगल करवा सकते हैं। और जिस तरह से उमर ने अब तक बॉलिंग का मुजाहरा किया है, बहुत ही शानदार बॉलिंग की है उमर ने। यासिर, ये मैं आपसे पूछ रहा था कि जब बैटर जो है वो पिच से क्रीज से आगे खड़े होते हैं, पॉपिंग क्रीज से, हम टेस्ट क्रिकेटर्स में रिकी पोंटिंग को कई दफ़ा ऐसा देखा गया था, माइकल स्लेटर को देखा गया था, तो ये टेक्निक कितनी इम्पोर्टेंट होती है, स्विंग बॉलर को खेलने में कितनी मददगार होती है? और यहाँ पर एक दफ़ा फिर लकी रहे, कैरी नहीं किया, फर्स्ट स्लिप में गेंद गई थी। तो एक और बहुत ही शानदार गेंद और शानदार ओवर, 42 पर 2 केपी। जी हाँ, एक बार फिर अच्छा बॉल, काफ़ी सारे डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं वो बैट्समैन के माइंड में, और स्लिप में बॉल कैरी नहीं हुआ। लकी रहे साहबजादा फरहान, अच्छी जगह से बॉल हुआ। काफ़ी आगे गिरा था खुरम मंजूर से। अबरार अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे फॉरहैंड से। और अबरार की बॉलिंग की बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कैरम डिलीवरीज भी करते हैं। और रेहान अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, और तेज़ी के साथ एक रन लिया है यहाँ पर। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट, या अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और कोई भी रन का मौका जो वो ज़ाया नहीं कर रहे केपी की टीम, इसी वजह से अब थोड़ा सा इनका रन रेट बेहतर हुआ है। 10 ओवरों में सिर्फ 18 रन थे, और इन 5 ओवर्स में इन्होंने ऑलमोस्ट 27 स्कोर किया। थोड़ा सा रन रेट अच्छा कर दिया केपी की टीम ने। यही कह रहा था, फरहान के आने से थोड़े से रन्सों में थोड़ा सा इनमें अप्रोच चेंज हुई है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्विक सिंगल्स हैं और विद इन द सर्कल जब आप ये देखते हैं। और जैसे आप ये कह रहे थे कि अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रही थी केपी की टीम, बट ये जो छोटे सिंगल्स हैं ये प्रेशर आता है। ये देखिए तेज़ी से इसको खेला था मिड ऑन की जानिब, और बहुत अच्छी कॉल दोनों ही बैटर्स की। और एक दफ़ा फिर यहाँ पर अपील हुई है, और अंपायर खालिद का इशारा कि ये बैट से टच हो गई बॉल। ये बिल्कुल काफ़ी करीबी मामला था, लेकिन बिल्कुल पिच पे और इनसाइड एज हुआ, इनसाइड एज की वजह से बच गए रेहान। और ये पिच इन लाइन, और ये मेरे ख्याल से ग्लव्स को लगा है बॉल, ग्लव्स को टच हुआ है। और एक दफ़ा फिर यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करना चाहा था। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अबरार की जानिब से, बेहतरीन ओवर, और केपी 44 पर 2। जी हाँ, अबरार एक दफ़ा फिर बॉलिंग अटैक में आए, और कुछ ना कुछ हो रहा है। पिछले मैच में भी हमने देखा, जब ये बॉलिंग में आए तो अचानक इन्होंने जो गेम का मोमेंटम था वो चेंज करके सिंध की तरफ कर दिया था। कुछ शुरू में विकेट्स ली और 11 आउट किए पिछले मैच में। बड़ी शानदार बॉलिंग की इन्होंने।
उमर ने अब तक बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है और ये अपना 7वां ओवर का आगाज़ किया है उमर ने। और जो इनकी लाइन और लेंथ है वो बहुत परफेक्ट है, बैटर्स को बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ये कप्तान हैं सऊद शकील। जो उमर अपना जो रोल है वो अच्छा अदा कर रहे हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट्स नहीं ली थी, लेकिन काफ़ी इकनॉमिकल थे। बड़ी टाइट लाइन और लेंथ से बॉल करते हैं, रन ज़्यादा नहीं देते। अभी भी देखें 7वां ओवर कर रहे हैं और 10 रन है सिर्फ इन्होंने दिए। ये आप देख सकते हैं कि खुर्रम मंजूर स्लिप में यहाँ पर बॉल कैरी नहीं किया था पिछले ओवर में और थोड़ा सा आगे गिर गई थी। सो ये जो डिस्टेंस होता है यासिर, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक्यूरेट जगह पे खड़ा होना है। और इस दफ़ा इस गेंद को फाइन लेग की जानिब खेले हैं। गेंद अंदर आई थी और 2 रन बड़ी तेज़ी से हासिल कर लिए। डीप फाइन लेग में फील्डर मौजूद थे। ये गैप में खेले, इस दफ़ा बॉल अंदर आया। आप बात कर रहे थे ये देखें बॉल पड़ के अंदर आया और साहबजादा फरहान ने आखिर में अच्छा उसे खेला 2 रन्स के लिए। जो डिस्टेंस है और जो स्लिप्स की आप बात कर रहे थे, तो देखें थोड़ा सा अगर आगे हो स्लिप तो कोई इसमें मुजायका नहीं है, क्योंकि बॉल कैरी नहीं होता तो आगे जब गिरते तो बड़ा अफसोस होता है कि यार ये मैं थोड़ा सा आगे होता। और इस दफा इसको कवर्स में खेले हैं, नो बॉल कॉल है। शानदार तरीके से इसको मिडिल किया, 4 रन यहां पर हासिल किए। पॉइंट पोजीशन पर बेहतरीन बैकफुट पर इसको पुश किया था। जी अच्छा शॉट साहबजादा फरहान का, बैकफुट पे काफ़ी पीछे बॉल गिरा, काफ़ी टाइम मिला उन्हें और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। 4 रन हासिल किए, अच्छा शॉट। एक बड़ा गैप है यहाँ पर और साहिबजादा फरहान की रेप्यूटेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं और इस दफ़ा बहुत अच्छी लाइन और लेंथ। पिछली दफ़ा चूक गए थे लेकिन अच्छा कमबैक किया उमर ने। जी हाँ, और अच्छा खेल रहे हैं फरहान, फाइट कर रहे हैं। स्लिप एक निकल के कवर में आ गई है इस चौके के बाद। जी अगर डिस्टेंस की बात करें, स्लिप्स की डिस्टेंस की अगर आप बात करें, तो अब जो मोहम्मद उमर की पेस है इसमें अगर स्लिप लगती है तो डेफिनेटली वो इतनी इस तरह कैरी नहीं होगी। अगर सेकंड स्लिप रखी जाए और थर्ड स्लिप रखी जाए, फर्स्ट स्लिप ना भी हो तो उसमें कीपर के पास भी चांस है। जिस तरह के हमें पता है हसन जो है इनकी रीच बहुत अच्छी है, ऑफ साइड पे भी और लेग साइड पे भी इन्होंने बहुत अच्छे टेक्स किए हैं आज। और मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड स्लिप रखनी चाहिए, फर्स्ट स्लिप को इनको माइनस करना चाहिए। सिर्फ इन्होंने कवर का फील्डर लिया। और साहिबजादा फरहान इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि रीच जो है उसको चेक करना है। तो इस डॉट डिलीवरी के साथ 17 ओवर्स KP 51 पर 2। अब्रार फॉर एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और इस दफ़ा इसको शॉर्ट लेग की जानिब खेला है, 1 रन यहाँ पर लिया। एक
एक्साइटिंग किस्म के नौजवान हैं अबरार, और हमेशा विकेट हासिल करने की तगोदो में रहते हैं। जो बड़े लाइवली रहते हैं फील्ड में और इन्जॉय करते हैं अपनी बॉलिंग को भी, फील्ड को भी। इस दफ़ा गुगली की बैक फुट पे आके आराम से खेले साहबजादा फरहान। प्रॉपर अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर काबू रखे हुए हैं और बहुत अच्छी गुगली भी करते हैं। 2 स्लिप्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं अबरार, और ज़रा सा भी बैटर ने गलती की। देख सकते हैं फवाद आलम स्लिप में मौजूद हैं। इस दफ़ा इसको खेला ऑन साइड पर, पहला रन तेज़ी से लिया है और दूसरा रन भी आसानी से ले लेंगे। मौका ज़ाया नहीं कर रहे साहिबजादा फरहान भी, रेहान भी, जहाँ पर रन्स मिल रहे हैं। और ये जो छोटे सिंगल्स हैं यासिर, ये हमेशा प्रेशर डालते हैं अपोजिशन के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, और अच्छा रीड कर रहे हैं फरहान ने, पहले से फॉरवर्ड नहीं आ रहे। यासिर जो गुगली कर रहे हैं अबरार, अब फील्ड में हल्का सा चेंज भी किया है कैप्टन ने, और ये खालिद उस्मान, और इस दफ़ा इसको खेल दिया है ऑन साइड पर। फील्डर ने कोशिश ज़रूर की थी लेकिन कारगर साबित नहीं हुई और ये बाउंड्री हासिल हो गई। यहाँ पर बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा साहिबजादा फरहान की जानिब से। जी हाँ, इनकी बैटिंग में ही नज़र आ रहा है, जो भी बॉल लूज़ होती है उसको नहीं मिस नहीं कर रहे। ये भी लूज़ बॉल था और जिसे कहते हैं बैट बॉल, पीछे गिरा बॉल, और उसको आराम से उन्होंने गैप में खेल के 4 रन हासिल किए। बैक फुट पे आए, अच्छा शॉट, अच्छा मिडल किया। केपी की बैटिंग की अगर बात की जाए तो अशफाक अहमद और वकार दोनों ही बोल्ड हुए थे और मीर हमज़ा ने उनको बोल्ड किया था। इस वक्त रेहान आफरीदी 21 पर नॉट आउट हैं। साहिबजादा फरहान ने 26 रन बनाए हैं, एक्स्ट्रास 3 हैं। 18 ओवर्स के इख्तिताम पर 58 पर 2 खैबर पख्तूनख्वा। जी हाँ, अच्छी पार्टनरशिप, 44 रन की पार्टनरशिप होगी इन दोनों के बीच में। आसिफ की ये आगे पिच हुई गेंद और रेहान ने इसको ऑन साइड पर खेला, 1 रन हासिल किया। ये ड्रेसिंग रूम है केपी का। अब कुछ मुतमईन नज़र आ रहे हैं कामरान गुलाम भी। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ये पार्टनरशिप ने इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया होगा डेफिनेटली, और अच्छी पार्टनरशिप जा रही है। 45 रन की पार्टनरशिप होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है ये। और एक दफ़ा फिर हल्का सा गेंद अंदर आया था, इसको खेला स्क्वायर लेग की जानिब। और ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल है केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही बैटर्स जो हैं वो अब सेट हो चुके हैं, अब इनको लंबी बैटिंग करनी होगी। जी बिल्कुल, जो डिफ़िकल्ट टाइम था उन दोनों ने अब गुजार दिया। अब इसको किस तरह वो अपनी इनिंग्स को आगे लेके जाते हैं, अब यहाँ पे अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा इनको। जिस तरह ये खेल रहे हैं इसी तरह खेलते रहें लंच तक एटलीस्ट। इस दफ़ा इसको पॉइंट की जानिब खेले हैं और फील्डर डीप कर लिया है पॉइंट में। बिल्कुल आपने ठीक कहा यासिर, दोनों ही बैटर्स जो हैं सेट हो चुके हैं और अब ये लंबी बारी करते हैं। दोनों के पास अच्छा मौका है कि एक लंबी पार्टनरशिप करें, दोनों अपनी जानिब से अच्छे रन्स बनाएं और एक बड़ा टोटल जो है वो यहाँ पर सजा सकते हैं बोर्ड पर। जी हाँ, जो ख़तरा था केपी की टीम को,
अर्ली विकेट्स खेलने से। अच्छा शॉट फरहान का, तो वो जो है इस पार्टनरशिप ने वो उस चीज़ को किल कर रहे हैं, उस इंटेंट को किल कर रहे हैं सिंध की। जिस तरह मीर हमज़ा ने एक टोन सेट की शुरू में 2 विकेट्स हासिल करके, तो दूसरे एंड से विकेट्स नहीं मिली। और रेहान अफरीदी को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा, और फरहान जिन्होंने फ़ाइट की, रेहान ने और फरहान ने आके उनके साथ स्ट्रोक प्लेस किए, तो उससे इन दोनों में कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ से ये लंबा जा सकते हैं। इस दफ़ा इसको मिड विकेट की जानिब खेल दिया है फरहान, साहिबजादा फरहान की शानदार बैटिंग यहाँ पर। ओवर पिच डिलीवरी थी और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, 4 रन हासिल किए यहाँ पर। जी एक अच्छा शॉट फरहान का, ऑफ द टोज, बीच में था बॉल लेकिन बहुत अच्छा मैनेज किया उसे, बॉल की लाइन में आए जल्दी, बहुत अच्छा मिडल करके 4 रन हासिल किए मिड विकेट से फरहान ने। सबसे ज़्यादा फरहान, इनका हेड बहुत स्टिल होता है जब ये बॉल को खेलते हैं। एक दफ़ा फिर एक और खूबसूरत शॉट, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से होता हुआ बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। 4 रन साहबजादा फरहान के। एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त अपनी बैटिंग, 35 पे पहुंच गए, 36 बॉलें सिर्फ उन्होंने फेस। ये ओवर पिच डिलीवरी और एक दिलकश कवर ड्राइव देखने को मिला यहाँ पर। ज़बरदस्त टाइमिंग और कवर और एक्स्ट्रा कवर्स में, हालांकि आउटफील्ड इतनी तेज़ नहीं है लेकिन टाइमिंग इतनी शानदार थी कि इस गेंद को फील्डर रोक नहीं पाए। मैनेजर जाहिद सईद जो कि काफ़ी अरसे से केपी के मैनेजर हैं, और जब मैं खेलता था उस वक्त भी ये मैनेजर थे। साथ में इनके राइट साइड पे अगर हम देखें तो साजिद शाह बैठे हैं, साजिद शाह जिन्होंने अपनी सारी क्रिकेट हबीब बैंक से और ऑब्वियसली केपीके से खेली है। यासिर, ऐसा लग रहा है कि साहिबजादा फरहान जो है वो स्ट्रगल करें, उनकी एल्बो में जो है वो पेन महसूस हो रहा है और फिर उन्होंने फिजियो को कॉल किया है। जी उनको लगता है टेनिस एल्बो में कोई इनको निगल है या कोई इस किस्म का है, जिससे रिस्टी प्लेयर है तो शायद उनकी मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेस है। देखें ये शॉट देखें, अगर आप बैलेंस देखें, हेड पोजीशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सब कुछ ही अच्छा था इस शॉट के बारे में। शिकायतें We've seen some wonderful cricket in the first 3 rounds for the most part of those 12 days that we've been here. I have to really admit that the first hour was very, very scrappy. Rehan Afridi down the wicket and down the ground. Couple of bounces into the fence. He's been looking to be proactive, and Abrar has given him the opportunity. Good use of the feet. right, getting to the pitch of the ball and playing it straight. That is the quality, right way of doing it. Realized it, it's pitched up, got to the pitch of the delivery very quickly. Nice quick feet.
This is a good inning. He fought well in the first hour and now he's capitalizing on it, Rehan Afridi. Saad Khan quick at backward point. He fought well. He took chances. He wasn't at his very best, but again, like we discussed, the first hour was very scratchy from both sides. KP coming into the game with their batting underperforming as a unit, and then Saud, like you said, was worried about conceding too many runs in the first day in the previous game, so he was a bit cagey as well. But now the batters look settled. Yeah, similar sort of approach Sindh opted this morning. What Southern Punjab did the last time in the last inning. Too defensive to start off. They've got mid-wicket in position and deep point very early in the inning. That had made these two batters settle down. Now they're playing with some confidence. It's not easy facing Abrar. He's got 11 for in the last game. Will look to repeat that performance. End of 20 overs, 73 for 2 KP. Two wickets for Mir Hamza. First spell of 6 overs. A lot was happening at that time. KP got away with it. Asif Mahmood has bowled an indifferent spell. Saud really needs him to come to the party and bowl a good spell, build pressure from one end. At the moment it looks like his tactic is to just allow Abrar to bowl from one end like he did in the first game. He was not happy with the result that he achieved on the first day of the last game, but he's going exactly the same plan. Finding the middle of the bat quite regularly. Sabzada Farhan has been good. Look at that strike rate, 35 of 37. Yeah, talking about the approach from Sindh side, I think they haven't learned. They haven't learned the areas to bowl at this pitch. If you look at both the wickets, they were gifted to them. They haven't really bowled those wicket-taking deliveries. There were oohs and ahs early on, but nothing really working for them. The most impressive bowler, I think, as far as the fast bowlers are concerned, has been Mohammad Umar for them. That was a beautiful shot from Sabzada Farhan. It looked very good. Fresh from the 100. Sindh would want to take his wicket as early as possible, because we know that once he stays in, he gets those big hundreds. Key has been his balance from the word go. You've seen the other KP batters really struggle, but Sabzada Farhan was really settled at the crease. That's why you can get, when you get the on drive away early in your innings, you could tell that the batter is having a good balance. He's lining it up nicely, and then that cover drive that followed. Good for KP, because Sabzada Farhan and Kamran Ghulam, like I said, are the two key men in that middle order. More example of that good balance. Really timed it sweetly, and it will run away. Beautiful piece of batting from Sabzada Farhan. Yeah, that is superb. Too full again towards the leg side. Easy picking for somebody like Sabzada Farhan. As you said, the balance was right. The placement was excellent, right between the two fielders. Sabzada Farhan is in some form and he is making the most use of it. The strike rate is very impressive. 39 of just 40 deliveries at a time when ball was doing a bit. And now coming and playing with at his own will. So talented this boy is. Been scoring runs for years and years now. And he's nailed all formats as well. Beat 50 overs, 20 overs, first class cricket. Last year he was prolific in the Quaid-e-Azam trophy.
A slow start this year, but that 100 in the second innings has really given him a platform to build on. From Sindh's perspective, Asif is not really bowling a good spell, and that will worry South Shakil. Well, if I was South Shakil, I would not really be that unhappy or worried at the moment, because on a pitch like this, we have witnessed that a good spell here or there on a bowler can get you wickets, can get you quick wickets. Once again, really creamed it. Look at that smile on his face. He really enjoyed that. For no runs though. Once again, coming right off the meat of the bat. And nicely driven. Unlucky that he didn't get a 4 out of this. The placement was not quite there, and a good piece of fielding also. This inside is a very good unit as a fielding unit. Umair bin Yusuf, the young Saim Ayub, Saad Khan, they're all brilliant fielders. 77 for 2 KP. Khalid Usman missed out. Another very good cricketer, an all-rounder. Got a 6 for in the last game, missed out in this game. Adil Amin also with him. Arshad Iqbal, 3 very important characters of KP cricket. He's got himself into a tangle here, Rehan Afridi. You see him, he's played a short ball, but he's dug himself into a hole here, especially against Abrar, not picking up his wrong uns. Lunging at it with hard hands. No close-in catcher on the offside. Sun goes past the outside edge. A quick leg break from Abrar. He's mixing it up very nicely. Yeah, he's developed into a very smart bowler. Abrar, more cricket he plays, better he will get, and this is a good example. He was included in Pakistan T20 side, and since then he's looked a different bowler altogether. We witnessed that in National T20, and after that in this last game he took 11 wickets, bowled too many overs though, but got those 11 wickets. Googly. He was setting him up for that because he bowled 2 leg spinners, drew Rehan outside the off stump, but that length wasn't there on the Googly, slightly shorter, allowed Rehan to adjust. The control is just amazing. That one skidded through. Good over. Asking plenty of questions there from Rehan Afridi, who's not picking him. 22 gone, 77 for 2. Beautiful blue skies here at the Rawalpindi Cricket Stadium. Weather has been gorgeous. Temperatures have come down in the last week or so. We had some good rain last week. We feel that the winter is on the way. Crunched again. Nice piece of timing. Yeah, if you look at the field positioning, it's all set for that offside line bowling. They've got the extra cover, deep point in place, mid-off also. It's a run-saving position. So the plan is to bowl at one side, frustrate the batters, make them make a mistake. There's only one slip and a gully in place. So yes, you can say that Sindh is clearly on the back foot at the moment. Why? I don't know. They've allowed it to happen to themselves. There was a sweeper as early as over number 10 or 11. Backward point. You can't do that. But now
When the two batters get set here at Pindi Cricket Stadium, because of such nice bounce, they can get their strokes away, and it's hard to dislodge them. We've seen this many times here. Both of them have got a start now, especially Sabzada Farhan is looking in ominous touch. Yeah, maybe the reason they are going for run saving is last couple of occasions they played here in this ground, they struggled in the end. They were so close to chase down those totals, but on both occasions the total was a little too much, and that was because of their first inning totals. Probably that thing is there in Sindh's camp. The need to stop the runs flow in the first inning. Thinking early about that fourth inning. You look too far ahead, you stumble under your feet. That's crunched down the ground. What a beautiful stroke from Sabzada Farhan, presenting the full face of the bat. Weight coming into the shot. Gorgeous. Yeah, it's the most difficult one to play, the on drive, but the most attractive one also. If you can get this right, you look so beautiful. Look at that. Everything right in position. The placement also, it was a pitched up delivery, asking for this type of shot. He's got one. So this is a very, very good start by Sabzada Farhan. He's quickly moved on to 43. Good innings. Slightly slower in pace, and just allowing him to just free those arms. Sabzada Farhan is not really thinking about anything defensive at the moment. Yeah, I think what has happened to Sindh bowlers is from the last two games they were too short. They're realizing that they need to pitch the ball up to the batters, and they're pitching a little too much. That the drive is quite easy now. We've seen many deliveries being right there in the zone to be hit. This is a good line. Just pulled up things a little bit. That's where you should be bowling most of your deliveries. It's 81 for 2. Asif has really bowled a disappointing spell. 5 overs for 28 runs. Just 15 minutes go to lunch. So you watch another googly there from Abrar. Won't be a bad idea to just bring back Mir Hamza from the media center end. Because Abrar needs someone to bowl in tandem with him and build pressure from the other end. And unfortunately, Asif hasn't been able to do that in this spell. I think they really played Abrar well, especially Rehan Afridi. Came at a difficult time for the team, and since then he's done really well. Earlier it was the moving ball, now it's the spinning ball, which he has to negotiate, and he's done equally well to both. Rehan Afridi, a wicket-keeper batter, very talented one. Scored 100 in the last year also, Quaid-e-Azam trophy. Was brought in late in National T20 and made a difference. Was player of the match in semi-final. Good cricketer, handy cricketer. Good glove man too. His front foot where it's pointing, almost to cover. That shows he's not actually reading Abrar. First day pitch, and the amount of turn Abrar is getting is credit to him, because normally the spinners wouldn't have much of an impact. But remember, he got a 5-for on the first day in the previous round. It's in the air, will land safely. Wasn't in complete control. Khurram Manzoor labouring after that, but Saad gets there first. Running has been good from KP this morning. Absolutely fantastic running. 3 runs they took.
84 for 2. Let's have a look at the last shot. Flighted. Was there to be hit. Not quite timing it. There was no control though. But still lucky that he got it over the head of those two fielders and got 3 runs for himself. Good effort by young Saad. And Khurram Manzoor with him. 84 for 2. "24 overs bowled, and there's another break. A substitute has come in. I think if I can count, after the first drinks break, this is the 3rd or 4th interruption. How do the umpires allow that? I have no idea. Wicket taker, Mir Hamza, still not at the bowling crease. I thought he may be a good option, but skipper is giving Asif an extended run, so he can find his length and rhythm, because the afternoon session will be key. It's good from South, showing a lot of confidence in the young man. Loud call of no. Yeah, Asif has replayed. Ghulam Mudassir, the left arm seamer, got 2 wickets. The last inning that he bowled really well, and that second inning against Southern Punjab. But Asif Mahmood with his batting potential with him, making a comeback in this inside. His showed potential. Look at that, it's all scattered. 1 slip and a gully. So the first morning of the game, you're the away team. You take the option to bowl first, and then by lunch you're reduced to 1 slip and a gully. You really got to question these tactics. So there's a very, very shrewd captain, very intelligent cricketer. This morning his tactics has really baffled some. Yeah, he's thinking about the 4th inning, I tell you. Don't want to give too many runs, but he still is giving. Sliding down. Look at Hassan, where he ended up. Umpire Nasir Hussain is a very good umpire. Finally, Asif is getting that ball to seam from a back of a length. Look at that. Long way down as well. And look at the angle. Hassan appealing from almost from leg slip. You're not going to get that. Wry smile there from Professor. This is exactly what he told Asif, I guess. Why are you appealing? He's a good character. Nasir Hussain, very animated, always involved. His hat has become very famous recently in the Pakistan Junior League, although it was a black one. But I've seen him carry this as well for quite some time. We've covered him in domestic cricket. Yes, the color combos really matching nicely. 2 full again. This is where they've not been consistent this inside, considering they're playing their 3rd game here at the same venue, on same sort of pitches also 3 times that we've seen, where they've just chosen to bowl first. They've not capitalized on it because of their inconsistency in their lengths. That has been their main flaw for that side. I miss his sunglasses though. Even more impressive. Asif needs to find that in-between length. Either he's too full or too short. 84 for 2. Two wickets for Sindh. Ideally, they would want 1 more before the lunch interval, having bowled first.
And if they can get Sabzada Farhan out, there'll be a happy camp going into lunch. The second hour clearly has belonged to KP because of Sabzada Farhan. Run rate is really propelled in the second hour. We really questioned Saud's tactics, and that's the reason KP has propelled. Sabzada Farhan on the other end probably will look to get to 50 before he goes for the lunch break. He'll enjoy his lunch a bit better. Yeah, he must realize that spending time on this pitch will give him a lot of runs, because bowlers will try to bowl at him, and in doing so they will pitch the ball up. You have the opportunity to score runs also, but you need to pick your balls. The bad deliveries, Sabzada Farhan is good enough to do though, and we've already seen that the intent has been positive. And the way they both have dealt Abrar, I think that will dent a lot of chances of Sindh, because if you can negotiate their best bowler, you just nearly won half of the game. That is what they're doing, not giving wickets to Abrar. It's a good run, right between the fielders. Must look to get two. Nope. Rehan Afridi was late in reacting. It's 85 for 2 after 26. Nice relaxed camp. Once again, good run. Sabzada Farhan called and Rehan responded very quickly. Good understanding. This has been the feature though. In the early part of the day, they were able to do that consistently, which meant that the bowlers couldn't work on a plan, and the partnership grew. 72 of just 107 deliveries. That is pretty good going, especially considering they had lost 2 for 14. Real aggression for the first time that we've witnessed, a shorter one. It's been called wide though by umpire Nasir Hussain. These are the first signs of real aggression from Asif. That's a good sign. Every now and then you should keep telling the batters that you got that short delivery, but you got to be directing it well. This was way over his head. This is waste of energy. The edge, that gully fielder Fawad Alam really got down really quickly and stopped the ball. Wasn't a chance. And that's not the first time the ball is pitched short of the fielders. Have a look at that. Again falling short of him. Soft hands. Although he did go after it, but with the soft hands. Let the ball come to it, played late. It's the right way of doing it. Rehan Afridi has done really well. It's really crunched it. Use of the feet and smashing it over the boundary. Asif didn't like it, but this has been Rehan's tactics. Once again taking the bowler by surprise. Aggression been dealt with aggression. That's what Rehan has done. Look at that. Didn't like the shorter one, early one. This one came down the track, gave him some a little room towards leg side and played it all around the ground for 4. Good shot. Good positive intent. Good attacking cricket by Rehan.
That's the length, Asif. That's your length and the line as well. You have to produce that ball after ball after ball to trouble these quality batters. A touch fuller maybe would help get that edge. But this is beautiful bowling, particularly this delivery. This is where you should be bowling most of your deliveries. We've been saying it. This is the fourth game rather. We've been saying it. They're not learning. See, there's help there for the bowlers in this pitch, has been in all games, but the margin of error is small. You have to stay on those good areas. Remember, I was talking to Paul Nixon in the third game, and he was all praise for the Southern Punjab bowlers. They produced 80 to 85% deliveries in the right areas. Only then they got the results. You cannot do it by just bowling an odd ball here and there. And we've seen in games where people have done that. But Southern Punjab was spot on with their lengths. Reasonable over there from Asif. 27 gone, 91 for 2. We were talking about the pitches. I think they've been beautiful. There's been something for everyone in the pitches here at Rawalpindi Cricket Stadium. They've tested the technique of the batters. Spinners have got wickets. Fast bowlers, they need to be consistent. So there's a learning in this pitch. Good cricket pitch. And nothing has come easy for anyone. There's been a lot of test of skills of captains as well. Once again, hit the Rehan's bat at the non-striker end. Yeah, the reason I say this, because nothing's happened easily. So to get people out, captains have to come up with plans. And their tactics has really been tested. So it's been a test for everyone. Yeah, almost. If you look at the results also, 3 draws, fine. But they've been very close draws. It's not that simple forward draws. It's been hard-fought draws also from all these 3 games that we have witnessed. Balochistan also struggling. They had to bat all day to get a draw. South Sindh couple of occasions. They could have won both games. Use of the feet, not quite where intended, but it will still run away to the fence. Not quite. 3 more runs, but the intent is there. And KP's really rollicked along in this second hour. Yeah, not quite timing it. The idea was all right. Fielders were up in the circle, but it's a long, long boundary. It slowed down till the end. Good chase. Read it off the pitch. Abrar has really bowled nicely, but without much help from the other end. He hasn't been able to build pressure that has allowed KP batters to play him with some ease and freedom. It's a little too short. Once again worked away. There's no one back there. This is timed a bit better, and it may go all the way. It does. 50 for Sabzada Farhan. What a wonderful knock this has been. Came in with real pressure on his side, but he was positive and he was aggressive. Very, very assured. Excellent knock. Yeah, it's been a special knock from this special player, Sabzada Farhan. A boundary to get that 50. Nicely played towards onside. 99 runs in the first session already. This is a good one for KP. Considering the lost couple of wickets in the first hour, and since then Sabzada Farhan has just changed the game solely on his head. Solid, very solid to end the session. Over and time, gentlemen. This is what Khalid Mahmood says to the players.
as KP really will be delighted with this first session. It was a nervous start for them. The first hour, they really scratched along and they were lucky, helped by some indifferent tactics from Saud Shakil. But that second hour has clearly belonged to them, especially this man to the right of your picture, Sabzada Farhan. He was magnificent. Rehan Afridi also flourished in the partnership. Yeah, 99 runs coming off in this session, just 2 wickets. That over rate 14 good, and the run rate has been excellent, 3.54. Sindh side on the other hand would be really disappointed after getting those 2 quick wickets. They just gave away too many runs. They were defensive in their plan and strategy that have costed them this session, I would say. So clearly in the end the session belongs to KP. Absolutely right, Ali. KP the winners of this first session, also considering that Saud decided to bowl first. It has been a very, very good session for KP, languishing at the bottom of the table. They needed the good start. Well, the 2 wickets fell quite early, but then this partnership really resurrected things, and going into lunch at 99 for 2, they will be the happier side. Mir Hamza, the lone wicket taker, 2 for 19 in his 6 overs. It's been struggle for Mohammad Umar and Asif Mahmood, no wickets for them. Abrar Ahmed has already bowled 8 overs for 29. They played him really well without giving him a wicket. It's 99 for 2, Sindh. Session full of action. As always, the first session here at the Rawalpindi Cricket Stadium. Look at that huge gap between bat and pad, and Ashfaq all at sea. Couple of disappointing dismissals. Rehan was really scratching around. Wasn't challenged much by the close-in fielders. No gully on that occasion once again. Sabzada Farhan really came to the fore. Rehan Afridi was aggressive against the spin of Abrar. This is where he found more comfort. But Sabzada Farhan was delectable, both against pace and spin. Complete control. Look at that beautiful on drive. Just the flick of the wrist and then that off drive. Rehan, in his own peculiar way, continued through the session. Another gorgeous flick there from Sabzada Farhan. Probably the shot of the morning. The one to match that. Well, can't differentiate between the two. But that was not a replay. And this is where he brought up his 50 just on the stroke of lunch. Really magnificent knock there, giving KP the first session. Beautiful sunny day as players are taking lunch. We'll take a short break as well, and we'll be back in just about 35 minutes.
अहमद 6 रन बनाकर आउट हुए। 2 रन पे वकार अहमद वापस हुए पेविलियन को। इस वक्त शराकत जुड़ी है रेहान अफरीदी और साहिबजादा फरहान के दरमियान। और सुब अशफाक और वकार 2 खिलाड़ी जो है ये पेविलियन को लौटे। पहला बॉल अच्छा था मीर हमजा का, जो कि पढ़ के अंदर को आया। स्ट्रेट खेलने के थे ड्राइव, लेकिन जो गैप था वहां से बॉल निकल गई। उसके बाद छोड़ें या खेलें, ड्रैग ऑन हुए और अपनी विकेट गंवा बैठे। ओवरऑल बॉलर्स की कारकर्दगी, मीर हमजा टॉपर 19 रन के इवज 2 विकेट। बाकी कोई भी बॉलर जो अब तक विकेट नहीं ले पाया। दोनों अंपायर्स एक बार फिर सेंटर में मौजूद और कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हमीद। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको। शुक्रिया एजाज। खाने से पहले सिंध की टीम ने पहले बॉलिंग की, उनके पास जो एडवांटेज है उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया। 2 विकेट्स ली शुरू में मीर हमज़ा ने, लेकिन बाद में साहिबजादा फरहान और रेहान अफरीदी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में। 85 रन की पार्टनरशिप 118 गेंदों पे। जी हाँ, ये सब ज़्यादा फरहान 50 रन किए उन्होंने। बड़ी अच्छी हेड पोजीशन इनकी होती है और जिसकी वजह से बहुत अच्छे शॉट्स देखने को मिले इनके से। कवर ड्राइव, कट शॉट, ये बैक फुट पे इन्होंने स्पिनर को बड़ा अच्छा खेला। ऑफ द टोज बड़ी अच्छी शॉट्स खेली। ड्राइव अगेन ऑफ द टोज और ड्राइव, ये दोनों शॉट्स इन्होंने बहुत अच्छी खेली। सीधा बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा। 50 सिर्फ 59 गेंदों पे उन्होंने 50 रन मुकम्मल किए। जी हाँ, बैटेड वेल, एक्सीलेंट। जब 2 विकेट ऊपर नीचे जल्दी गिरे उसके बाद उन्होंने अच्छा संभाला दिया और उनका साथ दे रहा रेहान अफरीदी। 37 पे बर्जुमान, इस 80 बॉलें खेली तक अच्छा टाइम स्पेंड किया। 5 चौके उनकी इस इनिंग में है, तो अच्छा जो मुश्किल वक्त है वो गुजार चुके। बिल्टअप करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। साहिबजादा फरहान अपने 50 मुकम्मल कर चुके। 9 चौके उनकी इस इनिंग में शामिल थे। इससे पहले 2 50 और 1 सैकड़ा इनके पास है। मीर हमजा ने जब स्ट्राइक किया अर्लियर ऑन, खाने के वक्फे के बाद पहला बॉल लो रहा। जी हाँ, दोबारा मीर हमजा ने ही प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया सिंध की टीम के लिए। पहला बॉल थोड़ा सा लूजनर था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। मीर हमजा ने 6 ओवर किए हैं और 19 रन दिए। इसमें 7वां ओवर कर रहे हैं और 2 विकेट्स जो इन्होंने हासिल किए हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने शुरू में, लेकिन उसके बाद सिंध की टीम थोड़ी सी हमें हिकमत अमली में थोड़ी सी नज़र आई कि थोड़ा सा फ्लॉ है। फॉरवर्ड जाकर इस बॉल को खेला और अब जो फील्ड पोजीशंस हैं यासिर, हमने देखा जिस वक्त अर्लियर ऑन गेम शुरू हुआ बॉल थोड़ा हिल रहा था। 3 स्लिप थे, लेकिन लंच के वक्फे के बाद सिर्फ 1 स्लिप और एक गली के साथ ऑपरेट करें और ये दोनों बॉल जो है ऑफ स्टंप से थोड़े से बाहर रखे। या बिल्कुल शॉर्ट कवर, एक कवर जो है वो सर्कल की पोजीशन से आ रहा है। एक डीप पॉइंट इन्होंने लिया हुआ है और डीप पॉइंट बहुत जल्दी ले लिया था इन्होंने इनिंग्स में। फुलर बॉल था, मौका मिला यहाँ पर रन लेने का। और बसा औकात ये देखा जाता है कि इवन बॉलर जब अच्छा बॉल कर भी रहा है, लेकिन जो रन्स हैं वो तब भी तवातर से आते हैं, भले चौके ना आए लेकिन रोटेशन पे आते हैं। जो उसमें रनिंग बिटवीन द विकेट जो थी इनकी थ्रू आउट इस इनिंग्स में बहुत अच्छी रही। ये रन भी देखें, मिड ऑन के फील्डर पे प्रेशर डाला, हालांकि ये सिंगल नहीं है, ये जो है ये इस पे बॉलर बहुत ज़्यादा जो है उसको अपसेट होता है कि इस तरह का जब सिंगल दिया जाए। जी हाँ, और मुसलसल लिए जा रहे हैं। ये ओपन स्पेस है ऑफ साइड और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान जहां से रन्स आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आपने बैट बॉलिंग के लिए फील्ड सेट की हो। मेरे ख्याल से लॉन्गर वर्जन में ये एक इतना अच्छा तरीका नहीं है। आपको चाहिए कि
आप स्लिप्स रखें, बॉलर को क्या आप राइट एरियाज़ में बॉल करें, वहाँ से अगर बैट्समैन आपको अच्छा खेलता है तो ये उसकी क्वालिटी है, उसको क्रेडिट जाएगा। मुसलसल फॉरवर्ड, और ये बॉल भी जो है वो थोड़ा ड्राइव कर से अंदाज में खेला। वजह इसके कि आप जैसे आपने पहले बात की कि ओपन स्पेसेस हैं टुवर्ड्स ऑफ साइड, तो अभी जो कनेक्शन है वो बेहतर आ रहा है। जितने भी बॉल अब तक खेले हैं इस ओवर में, उसमें बिल्कुल बल्ले के दरमियान रही बॉल। देखिए हमें पता है साहबजादा फरहान की जो क्वालिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो यही है कि वो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत अच्छा है, उनकी हेड पोजीशन अच्छी है, वो बॉल के साथ जब बल्ले का कनेक्शन उनका होता है तो उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो कनेक्ट करते हैं। आपने यहीं से गलती करानी है, दैट्स तब जाके आप अच्छे बॉलर होंगे जब आप उसको वहीं से आप गलती करवाएं। 102 पे 2। अबरार अहमद 11 विकेटें समेटी इन्होंने पिछले मैच में, और अब 8 ओवर करवा चुके हैं। अच्छा शॉट, आराम से वो टैप करके रन ले सकते हैं। पूरा बॉल था, ऑन साइड पे खेल गए आसानी के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी जो स्पिन है, क्योंकि 30वां ओवर है, उतना ज़्यादा कुछ परचेज नहीं होगा। जी पहले मैच में जो हमने देखा था अबरार को, तो वो एक डिफरेंट हमें नज़र आया था, लेकिन इस मैच में उन पे भी प्रेशर पड़ गया थोड़ा सा, क्योंकि रिहान ने भी और फरहान ने भी बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की इनके अगेंस्ट। कहीं पे लूज़ बॉल हो उसको जाने नहीं दिया, उस पर रन्स मिस नहीं हुए इनके, तो उससे फिर बॉलर जो है वो सेटल नहीं होता। जब तक उसकी लाइन लेंथ ना बने वो विकेट्स लेना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। मेरे ख्याल से अबरार जो है इस चीज़ पे ज़रूर वर्कआउट कर रहे होंगे, किस तरह इनके ये सिंगल्स रोके जाएं। एग्जैक्टली और कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस वक्त आप अपने बॉलर को कोई फील्ड प्लान देते हैं और वो उसी के मुताबिक बॉल करवाए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इस वक्त प्लान अबरार को दिया है वो ये है कि ऑफ स्टंप पे बॉल रखो, और अगर ब्रेक नहीं भी मिल रहा तो कंटेन करना चाहिए। बहुत अच्छी बॉलिंग, टर्न हुआ थोड़ा सा, गुड लाइन से। ये देखिए आगे लेके आए बैट्समैन को, और एक्सीलेंट डिलीवरी। जो इनका रोल है वो यही है कि आप ये विकेट टेकर भी हैं, अगर इनके रन्स रुकते हैं तो फिर इनका बॉल जगह पे घिरना शुरू होगा, फिर टर्न भी होगा। अगर इनको सिंगल्स होते रहेंगे तो वो प्रेशर ये क्रिएट नहीं कर सकेंगे जो ये चाहते हैं। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सिंगल जो है यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन लिया, स्टील किया इनफैक्ट। और इस सिंगल के साथ 30 ओवर गए। केपी 105 पे 2। एक चीज़ जो केपी बहुत अच्छा कर रही है वो सिंगल्स ले रहे हैं। अभी भी लंच के बाद 2 ओवर्स में इन्होंने 5 सिंगल ले लिए, और हालांकि कोई बाउंड्री नहीं लगी। यही चीज़ है जो प्रेशर को बिल्ड नहीं होने दे रही। ये एक अच्छी हिकमत अमली है केपी की। जी हाँ, एक एंड से स्पिन, दूसरे से पेस मीर हमजा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा बॉल, मीर हमजा लगभग टारगेट पे हैं शुरू से ही। जब उन्होंने पहला बॉल फेंका तो विकेट समेटे, प्रेशर लेकर आए,
लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो रिलीज हुआ, कर्टसी जो आप बात कर रहे थे इजी सिंगल्स की। ये बॉल थोड़ा सा ऊपर आया। रेहान जो इस वक्त 41 पे खेल रहे हैं, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स खेल रहे हैं लेकिन इफेक्टिव है उनके लिए। सिंगल्स भी ले रहे हैं और कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले तो बाउंड्री भी इन्होंने ली है। तो मेजर डैमेज जो है ये पार्टनरशिप कर रही है अभी सिंध को। जी हाँ, शराकतदारी बेहतर है। सऊद शकील यकीनी तौर पर इस सोच में होंगे कि किसी न किसी तरीके से इस शराकत को तोड़ा जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई लगता नहीं कि किसी तरह का कोई इस तरह का चांस बल्लेबाज निकाल रहे हैं। उन्होंने टेस्ट भी किया, अबरार को भी इस दफ़ा थोड़ा पेश था, लेकिन गैप निकालने में कामयाब हुए 4 रन्स के लिए। जी अच्छा शॉट रेहान का, थोड़ा सा आगे गिरा हुआ बॉल और देखिए थोड़ा आगे था बॉल और उस पर गुड हैंड्स रेहान के, पॉइंट से थोड़ा सा अवे था यह बॉल और 4 रन हासिल किए रेहान ने। जी अच्छा, थिक आउटसाइड एज लगा और फ्लैश की जानिब, फ्लैश की तरह इनफैक्ट बॉल जो है वो बाउंड्री पार कर गई। अंपायर ने गेंद को चेक ज़रूर किया और अच्छा बॉल उम्दगी के साथ डिलीवर किया। और यूज ऑफ बॉल इस बहुत इस वक्त इंपॉर्टेंट है इस सेशन में। जी दूसरा मौका है इस ओवर में कि इस लेंथ का बॉल जो है वो थोड़ा सा ऊपर आया है, जो नॉर्मल हाइट है, जो एक्सपेक्टेड हाइट है उससे ऊपर आया है। पिछला बॉल थोड़ा सा फुलर था, उस पर बाउंड्री हासिल की रेहान ने। इस बॉल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा जो बैक ऑफ लेंथ बॉल है उस पर थोड़ा सा रेहान को प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा खेला दिफाई अंदाज, और यही नीड ऑफ टाइम है क्योंकि जो लाइन है इस वक्त वो बहुत बेहतर है। इससे पहले भी हमने देखा ऑफ स्टंप से अगर ज़रा बाहर बॉल गिरे तो जो रन्स का एरिया ऑफ साइड पर या डीप बैकफुट पॉइंट वहाँ से रन्स निकल रहे हैं। लेकिन अच्छा कमबैक किया इस वक्त मीर हमजा ने। ऑलरेडी एक चौका इस ओवर में आ चुका। हाफ ड्राइव के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम 31 का है। केपी 109 पे 2। केपी की टीम इस वक्त थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में, क्योंकि पार्टनरशिप जो है इनको एक कंफर्ट जोन में लेके जा रही है। और यकीनन जो आने वाले बैट्समैन हैं गुलाम, कामरान गुलाम और नबी, दोनों को हम देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे। नबी गुल ने एक मैच खेला इस सीज़न में ट्रॉफी से, तो इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, इम्पॉर्टेंट टाइम होगा उनके लिए भी। लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट है स्पिन अटैक। कोशिश कर रहे हैं कि बैटर को फॉरवर्ड लेकर आए। ये इनको मेडन्स चाहिए, मेडन्स से ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। मेडन करेंगे तो बैट्समैन पे प्रेशर बिल्ड होगा। जिस तरह सिंगल्स हैं वो एकदम जो सेटअप जो प्लान किया होता है बॉलर ने वो उससे एकदम वो चेंज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इनकी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट किए जाएं और प्रेशर को क्रिएट किया जाए। जी और अच्छा फुटवर्क भी। इससे पहले हमने देखा बॉल ड्राइव करने के उसके साथ ही आप बैकफुट पे जाकर लॉन्ग ऑफ पे खेल के एक सिंगल लिया। तो जहाँ पर रन्स बनते हैं वहाँ पर ले रहे हैं, और जहाँ पर थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए बॉल को, रिस्पेक्ट यहाँ पर शो हो रही है।
एक्सीलेंट, ये अच्छी जंग है बैट और बॉल की, और ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात रेहान जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी लम्हात में अपने उस पूरे ड्राइव को रोककर दिफाई अंदाज अपनाते हैं। जी अच्छा बॉल था, ब्रेक खेलने गए लेकिन इन्होंने फ्लिपर किया। ऊंचा खेले लेकिन इस दफ़ा प्रोटेक्शन मौजूद है खुरम वहाँ पर, और एक और ओवर गया 32 के, नेल्सन फॉर 2। आगे बॉल था, थोड़ा अपिश खेले रेहान, लकी रहे कि एक्स्ट्रा कवर की तरफ नहीं गया ये शॉट। एक रन फिर हासिल किया। अच्छी पार्टनरशिप जा रही इन दोनों के बीच में। रेहान जो कि 46 पे हैं, एक स्ट्रोक अवे हैं अपने 50 से। दिफाई अंदाज मुसलसल इस वक्त अपनाया है केपी ने। वेल केपी बड़ा टॉप क्लास परफॉर्मर रहे, डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन इस वक्त टेबल पे बिल्कुल बॉटम पे प्रिवेल कर रही है। या केपी ने ओवर द इयर्स बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बड़े अच्छे उन्होंने परफॉर्म किए। सर कामरान गुलाम ने, इन्होंने जो एक ट्रॉफ़ी जीती थी उसमें 11,500 रन किए थे, पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा था कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का। इस तरह रिजवान पूरा सीज़न खेले हैं। इफ्तिखार, रिजवान, ये लोग जब भी उनको मौका मिलता है, अगर ये फ्री होते हैं तो फ़ौरन आके क्रिकेट खेलते हैं, और इससे एक टीम का इनका जो मोराल जो है, उनका जो हाई है, उसकी ये बहुत बड़ी वजह है कि जो जिस तरह रिजवान है, रिजवान का बहुत इफ़ेक्ट है। फिर इनके जो कोच हैं रिफ़तुल्लाह, वो टीम में मौजूद हैं और वो शुरू से टीम के साथ हैं, वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर हैं। फिर अब्दुर्रहमान जो कोच हैं, साजिद शाह हैं, तो ये इन लोगों की केपी की तरफ से वैसे एज ए प्लेइंग डेज़ में भी काफ़ी खिदमात हैं। साजिद शाह, रिफ़तुल्लाह, तो प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। प्लेयर्स जो हैं अपना, इनको रोल का पता है, इनको लाइक ये नहीं है कि रोकना है नहीं, ये रन्ज़ों के पीछे पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। तो वो भी एक इनकी डोमिनेंस की वजह है कि ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। और साजिद शाह की बात करें तो साजिद शाह ने हबीब बैंक से काफ़ी आउट, इनके 600 से ज़्यादा विकेट्स हैं। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस अगर ड्रेसिंग रूम में हो तो प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टर होता है, मोटिवेशन होती है। जी एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं। साजिद साहब जैसे बॉलर्स, और इवन जब प्रैक्टिस जिस वक्त यहाँ पर हो रही थी गेम से पहले वार्म अप में, तो उस वक्त भी वो काफ़ी इन्वॉल्व थे प्लेयर्स के साथ। जी हाँ बिल्कुल। और इमरान खान है, इनको भी आलमोस्ट 8वां-9वां सीज़न है इनका, और बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, इन्होंने टॉप किए हुए हैं। अभी भी इनमें हंगर है वापस आने की। साजिद नज़र आ रहे हैं हमें, साजिद ने अभी रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए आउट भी किए हैं। इनका बहुत अच्छा चांस है कि उनका कम बैक हो जाए अभी इंग्लैंड सीरीज़ में। तो सारे जो लड़के हैं बड़े एक दूसरे के साथ जेल टुगेदर हैं। बड़ा इनके जो टीम जो का माहौल है, जो बड़ा अच्छा इनका एक बना हुआ है, और एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को टॉलरेंस है, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा आपकी मोरल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जी एग्जैक्टली, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत बेहतरीन है सर केपी का। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल, डॉट डिलीवरी, इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 33 ओवर गए, केपी 112 पे 2। अट्ठानवे रन की शराकतदारी हो चुकी है अब तक रेहान आफरीदी और साहिबजादा फरहान में। 148
बॉलों का सामना किया उन्होंने इस शराकत में। 3 रन की दूरी पे हैं रेहान अफरीदी अपने 50 से। रेहान ऑलरेडी एक 50 जोड़ चुके हैं इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीजन में। ओह, ये बहुत अच्छी डिलीवरी इब्रार की। ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी लो रखी इसमें और बॉल में पेस थी और मजबूर किया आगे आने पे रेहान को। अच्छी लाइन है ऑफ स्टंप के बाहर और ये वो चीज़ चाहिए थी, प्रोटेक्शन जो कि ऑफ साइड पे अब नज़र आई कि बॉल इससे पहले बसा औकात जब गया ऑफ साइड पे या कवर्स की जानिब तो रन आसानी से बना, लेकिन इस दफ़ा जो ऑफ साइड की फील्ड है उसको बेटर प्लेस किया। यह पहला बॉल बहुत अच्छा था, फिर दोनों बॉल जो हैं वो थोड़े ज़्यादा फ्लाइट दिए इब्रार ने। मिड ऑफ का फील्डर बिल्कुल पीछे बाउंड्री पे खड़ा है उस शॉट के लिए। अच्छा शाउट, लेकिन आई थिंक या तो लेग स्टंप मिस कर रहा था या फिर इनसाइड एज हुआ। बहुत अच्छी डिलीवरी। ये देखें बॉल पड़ के अंदर आया, काफी क्लोज था लेकिन शायद हाइट की वजह से आगे भी थे। और अच्छा ओवर कर रहे हैं इब्रार। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ये अब फील लेना शुरू कर गए हैं और अपनी बॉलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। ये ओवर हमने देखा सारी काफ़ी सारी चीज़ें की इन्होंने और सारी स्पॉट ऑन थी। एक्सट्रीमली वेल बॉल। इस दफा अंपायर की उंगली फिजा में उठी और रेहान अफरीदी अपने 50 से 3 रन की दूरी पे सफर खत्म कर गए। जी हाँ, बिल्कुल लग रहा था कि इस ओवर में इब्रार कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। जिस तरह उन्होंने ये ओवर किया राइट फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी, और इस दफ़ा बिल्कुल स्पॉट ऑन गुगली की उन्होंने और मिडल स्टंप पे ये बॉल लगा। थोड़ा सा आगे थे लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन, नी रोल से नीचे लगा, इस वजह से आउट दे दिया। रेहान अफरीदी के अच्छे फाइटिंग 47 रन्स किए उन्होंने और केपी 112 पे 3। नए आने वाले बैट्समैन कामरान गुलाम, जो कि इस टीम में साहबजादा फरहान के साथ एक रेगुलर रन गेटर हैं। मिडिल ऑर्डर में इन दोनों ने काफ़ी रन्स किए हैं और इस सीरीज़ में भी इस जो ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है इसमें 100 और 250 कर चुके हैं कामरान गुलाम। जी एग्जैक्टली, अच्छे रन्स कर रहे हैं। 1 सैकड़ा 250 इस सीजन में। ओवरऑल 10 सेंचुरी इनके पास और 15 50। बहुत ज़बरदस्त बैटर और 3000 रन टच कर सकते हैं अगर अच्छा खेलें इस सीरीज में। मीर हमजा कंटिन्यू करेंगे। एक एंड से स्पिन और एक एंड से पेस को लगा रखा है और अभी तक जो इस एक विकेट की हम बात करें प्रोडक्टिव रही। अच्छा बॉल आते साथ जो बॉल है वो लगभग बिल्कुल सीधा रहा, बल्ले के बिल्कुल टो पे लगा। तो एक विकेट के बाद जो बॉडी लैंग्वेज है या जो कॉन्फिडेंस है, इनफैक्ट
बॉलिंग डिपार्टमेंट का वो बढ़ जाता है यासिर। जी हाँ बिल्कुल, मच नीडेड विकेट जो इब्रार अहमद ने हासिल की, लेकिन नी रोल से नीचे लगा था ये बॉल और काफ़ी क्लोज था और बहुत अच्छा डिसीजन मेरे ख्याल से दिया खालिद महमूद ने। इब्रार जो पहली विकेट थी उनको हासिल हो चुकी है, जिसकी वो तलाश में थे। 10वें ओवर में उन्होंने पहली विकेट हासिल की अपनी और इस वक्त वो बहुत अच्छा डेफिनेटली फील कर रहे होंगे और ये एक चांस है सिंध के पास कि इस मैच में वापस आ सकते हैं ये अच्छे तरीके से। वैसे अभी फ्रेम में आपने खालिद सीनियर को देखा, उनके साथ अबरार, तो इन दोनों का जो पिंडी का यहाँ का वेन्यू बड़ा लकी साबित हुआ, दोनों अपने 100% परफॉर्म करते हुए। काफ़ी बाहर ये बॉल था, ड्राइव करने गए, ज़बरदस्त साइम अयूब। और ये जेल, ये एनर्जी चाहिए फील्ड में भी, क्योंकि ऑलरेडी जैसे हमने बात की कि एक विकेट के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है फील्डर्स का। जी बिल्कुल, इसी किस्म की एफर्ट की ज़रूरत होती है बॉलर्स को, कैप्टन को, टीम को। साइम अयूब जो कि एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन और साथ ही साथ अच्छे फील्डर भी हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉल, इक्का दुक्का इस तरह के बॉल आते रहे, सरप्राइज करते रहे बैटर को, तो वेल इन चेक रहता है बैटर। जी हाँ, बाहर निकला ये बॉल, मीर हमजा ने एफर्ट डिलीवरी की और बीट हुए फरहान, लकी रह के एज नहीं हुआ। चार की चार अब तक डॉट बॉल फेंके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अगर कोई स्ट्रोक आने की कोशिश करे बैटर, लेकिन बड़ा वॉचफुल खेलना होगा क्योंकि अभी अभी लंच खत्म हुआ। जी हाँ, लंच के बाद विकेट मिली सिंध की टीम को और जिसकी वजह से जो फील्डर्स हैं वो भी, क्योंकि नॉर्मली लंच के बाद बड़ा एक स्लो सेशन होता है, उसमें विकेट्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन पहला दिन है और सारे जो फील्डर्स हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा विकेट्स गिरें, फ्रेश पिच है, लेकिन उनको पहले सेशन में उस तरह रिजल्ट्स नहीं मिले, तो लंच के बाद पहली विकेट ने इनको बूस्ट अप किया है। एक्सीलेंट, तो देखिए कितना सॉलिड नॉइस आता है जब भी बॉल बल्ले को लगता है। इस डॉट डिलीवरी के साथ 35 ओवर गए, केपी 112 पे 3। वेल अबरार इस वक्त स्माइल देते हुए, और देनी भी चाहिए क्योंकि तमाम तर कॉन्फिडेंस रिदम हासिल कर चुके हैं। अच्छा बॉल और बहुत अच्छा छोड़ा कामरान गुलाम ने। हालांकि ये मिस्ट्री स्पिनर कहलाए जाते हैं इब्रार, इनको इस तरह का लेफ्ट करना, आई गेस उन्होंने चेक कर लिया था कि लेग स्पिन है। यहाँ से ये गुगली भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत केयरफुल खेलना पड़ेगा। वेल प्लेड, अच्छा बॉल था लेकिन पीछे जाके मैनेज किया कामरान गुलाम ने आसानी से। जी हाँ, और हाइट भी इस वक्त अच्छी मिल रही है, जो ग्रिप है बॉल की वो भी बेहतरीन है, लाइन अच्छी है, कंट्रोल अच्छा है इस वक्त अबरार का बॉल पे। थोड़ा सा ऐसा लगा कि सरप्राइज किया है बैटर को, अच्छी लाइन। जी हाँ, इवेंटफुल, हर दफ़ा जब भी बॉल करवाने आते हैं या इनफैक्ट ओवर करवाने आते हैं तो उनकी बॉडी से, उनकी डिलीवरी से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इवेंटफुल करेंगे। एक्सीलेंट,
ये बहुत ही आला बॉल इब्रार की, थोड़े से वर्ड्स की एक्सचेंज भी हुई दोनों में, क्योंकि कामरान गुलाम नॉर्मली फाइटर क्रिकेटर हैं और बॉल के खेलते हैं ये भी, लेकिन ये बॉल जो है उनको बिल्कुल समझ नहीं आई इस बॉल की कि इब्रार क्या कह रहे हैं। एक्सीलेंट। जी हाँ, आपने सही कहा कि बॉलिंग में तो शायद ना समझ आई हो, लेकिन जब वर्ड्स एक्सचेंज हुए यकीनी तौर पर उन्होंने सुने होंगे। अच्छा ओवर, अब तक मेडन जा रहा है, इनफैक्ट 5 डॉट डिलीवरीज। बहुत जबरदस्त ओवर अबरार का इख्तिताम पजीर हुआ। 36 ओवर हुए, केपी 112 पे 3। बॉक्स में तब्दीली, शाह फैसल और के आसिफ। $112 for 3. Breakthrough for Sindh in the first half an hour after lunch. Mir Hamza now bowling around the wicket with a slip and gully in. Sabzada Farhan has also been a bit circumspect after the lunch break. But these two men in the middle are really a key in the KP middle order. It's a gorgeous afternoon here at the Rawalpindi Cricket Stadium. It's a very good time to say a very warm welcome and a very good afternoon to K. Asif. Thank you, Shah Faisal. It's a very good start after the lunch for Sindh. The way they started, they came up with an aggressive approach. Looks really nice. Mir Hamza certainly has been the pick of the bowlers, especially the seam bowlers for Sindh. Really enjoying his work into his 5th over of the spell. Good line, good length. Sabzada Farhan was tempted at one stage to play for it, just bailed out at the very last minute. Well, again, a very good delivery. It's Mir Hamza. Look at this. Is coming round the wicket now, targeting stumps. Look at this. Away. Well, I'll ask you the concept of the 4th stump. Look at this. And well left by the batter as well. He's just challenging him in that channel outside the off stump. Sabzada Farhan is obviously set, so he's looking to block his scoring. They packed the offside. A slip in a gully, but there's also a short cover catching and a couple of fielders in the ring. Well, the minute we say that he's bowling with good discipline, he slips one down the leg side. One thing I must say that I'm not getting that why Mir Hamza changed his and why he is coming around the stumps, because he was pretty much good. He has taken lots of short cover, you can see, and a gully slip. I think why don't he's coming again, once again, from round the stumps? I don't know. Yeah, the change of angle, he's looking to upset Sabzada Farhan, especially because he doesn't want to give him too much room from that over the wicket angle, which is a natural angle, will take the ball away. But he's looking to angle and just cramp him for space. Just try and do something different, create a different angle.
Also, if he can straighten the ball from here, and that will leave the right-hander, that could be a difficult delivery to negotiate. Can't do it from that far wide of the crease that he's been doing so far. Needs to come closer. Once again, sweetly timed, but straight to the fielder. Sabzada Farhan has looked $1 million today. On this difficult pitch, he's really batted with some flair and fluency. 1-1-2 for 3. Kamran Ghulam has already made 100 in this year's championship. A couple of low scores as well. He's normally very prolific for KP. This is a crucial partnership here. And also he's a very good player of spin, Kamran Ghulam. That will come to his aid against Abrar, who's really in a groove now, bowling very nicely. It's a quick call, yes, no, and in the end, no. I like his temperament. I like, if you talk about his averaging 48 in his first-class career, it was a gentle push. So good call in the end. These two have played a lot of cricket together, so should have good understanding. Balls for Kamran Ghulam. Still looking to open his account. Abrar has wheeled away. 13th over, unchanged. Pretty much similar to what he did in the previous game. At one stage he bowled 32 overs, unchanged, and that was 2 on the first day. Three fielders on the onside. Again, a good delivery, ending of this over with this dot delivery. KP 112 for 3. That spell from Asif before lunch was really disappointing. He didn't give his skipper any control. Looking to do better when called upon in this afternoon session. See the first bowling change from the media centre end. Umar is coming into the attack. He also bowled 7 overs, quite tidy. Didn't look very penetrating. Back to the attack now. In first spell, bowled nicely, conceded just 17 runs in 7 overs. Bowled really nicely with proper line of length, disturbed the batters. Starts off with a beauty. Just angling in and then straightened. Sabzada Farhan was looking for that in swing. Just left him at the last minute. Well, it's a very good delivery, and it was inches away. So very good start again from Umar. Looks in a very good rhythm. Bowled nicely so far. Generally bowls that back of a length. That's why you see, we've seen him here actually in 3 games where he beats the bat a lot, but doesn't get many edges. You got to bowl slightly aggressive lengths to get that edge. Just maybe a yard fuller. Just tempt the batter into that drive. On this Pindi pit, we've seen that driving on the up hasn't been easy, especially for the newcomers. I know Sabzada Farhan's been there for quite a while, but when he gets a chance to bowl to Kamran,
he'll find it difficult to play with this kind of fluency, talking about Kamran Ghulam. So Umar needs to concentrate on that slightly fuller length. Yes, that's right. Kamran Ghulam still two lids, one for the keeper and one for the short leg when Abrar is bowling. Big shout! Big shout! Oh, that looked very, very close with the naked eye. Umpire Nasir Hussain shakes his head. Umar cannot believe it. It will be an interesting replay. very close call. Look at this. Pitching in line. Oh, goodness me. Could easily have given it out on another day. Once again, the process. Did that pitch in line? It doesn't matter because he was playing a stroke. The impact was on. I think it was on. Was it going to hit the stumps? Nasir thinks that the angle was too sharp and it might have taken it down. Just hit slightly above the knee roll. If anything, I would have thought it would have challenged the top of middle. Looked with the naked eye. I have to say, with the naked eye, on the first instance, it looked out with the naked eye. Well, it was a very close call, and I must say that bowler didn't look happy, and umpire is so confident, and of course that's oh, taken. It's a very good delivery. Wow, Umar is so happy chappy. Well, the justice done, it may seem, just a couple of balls later, but Umar has got the reward. He's been persistent. This one got the extra bounce as well. Almost took the shoulder off the bat, and Hassan has been very tidy behind the stumps. Excellent catch, and Umar deserved that wicket. Have a look, Shahzada Farhan. Well, just opened up a little, just fishing outside the off stump. On another day, he could have left it, but Umar deserved the luck and the wicket as well. Excellent bowling, good persistent work from Umar. It's been an excellent inning from Shahzada Farhan. Gone for 53. KP 112 for 4. Nabi Gul is the new man in. Sixteen matches rather, 862 runs, 150 and 400. So he converts, and once he gets in, he score 'em big. 148 not out as his best. Good average at the start of his career. But he is at the non-striker end. Two new batters in the middle. This is what Sindh would have wanted. This is what they would have discussed at lunch. But that last wicket, Shahzada Farhan, just playing it away from his body. Probably he didn't look in the same rhythm as he was before lunch. He scrapped along. He was 50 unbeaten at lunch, so only 3 runs in about 40 minutes after play. So that is the reason he just was feeling anxious, wanting to put bat to ball. That will allow Abrar. He's into a groove now. It's good work from Sindh. Look at this. Well, beautifully bowled and nicely taken.
Abrar looks so confident after taking his wicket, and Kamran Ghulam struggling still. He is on duck after facing 16 deliveries. Pressure back on KP. Yeah, this is what happens when you lose wickets in quick succession. The partnership of 98 for the third wicket and then none for the fourth. Wickets falling at 112, the third and the fourth. That really has put them under pressure. Once again, a little leg break. Kamran, who's generally very assured, I think he's feeling the pressure, like Asif said. Excellent over once again from Abrar. 1-1-2 for 4. Khalid Usman is not playing, so KP has a long tail. Sarwar Afridi is next. Sajid can bat, but then the three fast bowlers, Sindh could really get one quick wicket and get into that lower order. Now Umar has got 2 slips and a gully for Nabi Gul. Nabi Gul is also a stroke player. It'll have to be interesting to see his approach towards this innings. When we talk about batters batting in test cricket or in 4-day match, when they're playing away the body, they struggle. And this is what happened with Sahibzada Farhan as well. And also, if you look at Umar's action, he looks to angle the ball into the right-handers, and the one that is the danger delivery, the one that straightens off the wicket. There you go, another one of those. The batsman's always feeling that that ball is coming in, but it leaves him at the last minute. Once again, good areas there. Again, very close and a very good delivery. But I have to say, a very tentative stroke from Nabi Gul. He just hung the bat. There was no intent. Is it nerves or it's just early doors? His technique is not spot on. I've seen him score some runs, and I've also seen him get dismissed early in his innings quite often. Once again, another nervous prod off the thick outside half of the bat. This is good from Sindh, good from Umar. Yes, before the lunch, we have seen that Saud Shakil, the captain of Sindh, bit defensive. But now they are again in attacking position, attacking mode. Umar bowling wicket to wicket and targeting fourth stump. Really nice stuff. Last couple of strokes that Nabi Gul played, he was very upright. We'll have another look in a minute, but he's really not transferring that weight and just getting into the stroke. That last one, although the length was back, but it was easy leave. The forward defensive stroke that Nabi Gul has played on the previous 2 deliveries, he really stays upright and just not into his rhythm. Have a close look. That front knee is absolutely straight. Just want to get a bigger stride and maybe just slight bend on that front knee to get your head over the line of the ball. Feeling his way at the moment. This time he got it away. Once again, not entirely convincing. We'll get a couple of runs. Oh, just the one. What is going on? And yes, started with this couple. It's a very good shot, over pitch delivery, timed nicely towards point area. Outfield is a bit slow and well fielded by the fielder, Omar bin Yusuf. He's an excellent fielder. He's a good slipper too. We haven't seen him much in slip, but he's a good outfielder too. Once again, that nervous prod, quite upright. Another edge, another couple of runs.
Look at that. He's very tentative, to say the least. He's not playing this stroke. He's just half-hearted, it may seem. He's lucky to get away with it. And 1 run short as well. And that must have been Nabigul, because it's at the media center end. Well spotted, sir. And I know he enjoyed it. He's on top of his games, I can tell you that. 115 for 4. And went for the cut shot, but good thing is that his length is proper. Kamran Ghulam, a bit struggling. I like his aggressive approach sometimes, Kamran Ghulam. A very experienced guy. And a very good performer as well. Yeah, since he broke those records a couple of years ago in the first class cricket, he's been in the limelight. He made it to the national test squad. Well, there's a lot of eyeballs following his progress. Today, he's taking his time. The pressure's building. 21 deliveries. Still not yet off the mark. Looking for that quick single, but Nabigul sent him back. Khurram Manzoor was on the back foot. You could see that in picture. He was on his heels. That's why Kamran Ghulam thought he had an opportunity. We've been observing that these close fielders, they're now really aggressive, they're very active, and no chance to take some sharp singles. Before the lunch, when Sahibzada Farhan was playing with Rehan, and they were really good in the mutual understanding in running between the wickets. Another maiden from Abrar. He's going through his overs quite quickly. That will help the over rate as well. 115 for 4. It's Khalid Usman, the regular captain of KP, not playing because of a bad back. Never short of a word. He always has a story to tell. Excellent cricketer and a character. Somehow I just don't like the way Nabigul is shaping. Even when he left that ball, you could see that off stump. He's not taking a full stride, not covering the line of off stump. It's a good thing, you know, that when a bowler like Umar bowling wicket to wicket, targeting fourth stump, it's always a bit difficult for the batters to take first 10, 15 early runs. Not easy. And I must appreciate the way he's coming up, really smooth, his bowling action. Just crunched away. This one was too full. And Nabigul took the opportunity and smashed him through the cover boundary for another 4. It's a delightful cover drive. Over pitch delivery this time. And middled it properly. Look at that shot. Lovely timing. Good use of the hands and the wrists as well. Just turn the face of the bat at the last minute to get it through the gap. This will give him some confidence. It's a good opportunity for Sindh that they've taken a couple of wickets after the lunch. Now if they keep the same pressure on the batters. You were talking about the stories of Khalid Usman. He's still going, look. Everybody else is listening. Such a character, like I said. Once again full.
Nabigul is prepared to go for those drives. Umar shouldn't mind that. You just need to lure him into slightly back of a length delivery. Well, not quite back of a length, but just a yard shorter of that driving length, because Nabigul is going after it. This is what I was about to ask you. What if we take and place a fielder on a short cover on catching position? Would be really helpful, isn't it? Well, the ball is not stopping Asif on this pitch, so we haven't seen anybody getting out at short cover, short mid-wicket. It's just that it does seam around, and if you go for that drive away from the body or out in front, you're likely to nick it and it goes behind square. We've seen people get out in slips, gully, backward point. That's the area. When you play a loose drive, that's where the ball ends up. At the moment, they just got 2 slips for Nabigul, and after getting hit for that 4, Umar has pulled his length back. So that's allowed Nabigul to play off the back foot, which is a bit comfortable length to manage on this pitch. First time he got his head over the top of the ball, which means that he's getting comfortable after spending some time in the middle. 4 of the over, 119 for 4. Just feeling the heat a little bit, Muhammad Umar. He's called for a drink as well from the dressing room. And Asif is not that hot, but fast bowling is hard work. And Umar has bowled a lot of overs already in this season. It's really good line, and Kamran Ghulam still have to face the music. Yes, Sindh is making it hard for them. Good work there from Saim Ayub, just getting the foot in the way. Kamran Ghulam, like I said, he's a confident player. After losing 4, now all the responsibility on his shoulders. He would have to come up with very strong and solid innings, though he's struggling. His role is important because we were discussing earlier that KP struggled with their batting, especially the middle order batting. Now that Kamran Ghulam is in and Sabzada Farhan is gone, who was a prolific run scorer, it's all down to this man. He got his opportunity finally. Bad ball, and he's dispatched it with ease, and it's gone all the way. So Kamran Ghulam off the mark with this maximum. It was a bit poor stuff from Abrar. Got the opportunity, look at this. Bit wayward and got full opportunity. Very good shot. Yeah, rank bad ball there from Abrar. Back on his lines and lengths. Very few bad balls there from Abrar, and that was one. And credit to Kamran, he waited and waited, and when it came along, he just took full toll. Ending up 44th over with this dot delivery. KP 125 for 4. Battle resumes between Nabigul and Muhammad Umar. Now the flowing drive
through the gap. This was timed much better. Best shot by Nabigul so far. Another marvelous cover drive from Nabi. Started up this over with this boundary. Umar this time pitching once again. And brilliantly done by Nabi. Look at that shot. Nabi does take a stride down the pitch. Not necessarily covers the line, but he's got good hands through the ball. And that bails him out. That one was timed sweetly. Came off the middle of the bat. Got the edge and gone. It was just a matter of time because Nabi was playing loose outside the off stump. And this time, no footwork once again. And that hands just came out in front and got the edge. Umar deserved that wicket. Wonderful bowling. Excellent piece of bowling by Umar. Very good delivery. Outside edge and nicely taken by Hassan. Look, very upright once again. He's not bending that front knee and he paid the price for that. Umar got the reward and Nabi's knock has come to an end. Gone for 11, 129 for 5. And players will take drinks. जो बाउंसर ने मैंने मारी है ना तीन छोड़ के मोहम्मद सरवर अफरीदी 14 मैच 307 रन्स बहुत करीब था आउटसाइड एज के। इस वक्त बॉलिंग अपना रोब बिठाते हुए कि 5 विकेट आधी टीम इस वक्त आउट हो चुकी है 129 पे और कर्टसी इससे पिछला विकेट जो कि खड़े खड़े अपने शॉट को खेला टिप कर रहा था बॉल। अच्छा टेक विकेट कीपर का एक्सीलेंट जबरदस्त बॉलिंग हसन ऑन फायर।
जी हाँ, ये सही वर्ड आपने इस्तेमाल किया। हसन उमर इनफैक्ट इज़ ऑन फायर। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग किया लंच के बाद, कमाल कर दिया है। और ऐसा लगता है कि अब शायद वो जो लेंथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट तीसरा या चौथा मैच है, लेंथ की बात करें तो अब जाके उमर ने कहीं इस स्पेल में सही लेंथ का इस्तेमाल किया है। बहुत ही शानदार तरीके से बॉलिंग की और एक पर्पस लेके लंच के बाद आए हैं, क्योंकि जब आप पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं तो आपको बॉलिंग अच्छी करनी है। और लंच से पहले हमने देखा काफ़ी वेवर्ड नज़र आई थी सिंध की बॉलिंग साइड, लेकिन लंच के बाद तो कमाल किया है। एक्सीलेंट सऊद शकील की कप्तानी। अर्लियर ऑन 2 विकेट लिए, थोड़ा सा डल सेशन था, ऑफ साइड के बाहर इम्पैक्ट। अंपायर का अच्छा फैसला। जी हाँ, इम्पैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप डेफिनेटली, लेकिन क्या शानदार कमबैक किया है उमर ने। जहाँ आप देख सकते हैं लेग स्टंप नजर आ रही थी, ऑल्दो पिछली टांग पे जरूर लगा, लेकिन इम्पैक्ट स्टिल आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही रहेगा। अच्छा डिसीजन अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से। well, इस वक्त दोनों बैटर्स नए हैं। मुझे एक पार्टनरशिप लगी थी 129 पे, 5-6 विकेट गिरी। और कहीं ना कहीं अली इस वक्त हम बात करेंगे अगले ओवर में कि जो इम्पैक्ट है इन विकेट्स का वो नज़र आ रहा है, झलक आ रही है बैटिंग पे। 129, 5 के नुकसान पे केपी। वेल अर्लियर ऑन मीर हमजा ने जब 2 विकेट हासिल की, उसके बाद थोड़े से लम्हात आसान थे बैटिंग के लिए, लेकिन इन 3 विकेट्स के बाद जो कि मोहम्मद उमर ने 2 समेटी, एक अबरार ने, अब प्रेशर आ चुका है बैटिंग लाइन पे। दाद होनी होगी अबरार को, जिस तरीके से उन्होंने एक एंड से बॉलिंग की है, प्रेशर डाले रखा है। बहुत उम्दा, बिल्कुल विकेट के आगे नहीं आने दिया। कामरान गुलाम एक बहुत ही मंजे हुए मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, और हम देख रहे हैं काफ़ी बैंटर भी जारी है दोनों के दरमियान, अबरार और कामरान के दरमियान। बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, लेट खेल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने आखिरी मैच में देखा था, सलमान अली आगा लेंथ को नहीं पढ़ पाए थे और अगले बॉल को ही पीछे चले गए थे, लेकिन यहाँ कामरान गुलाम क्योंकि ज़्यादा लंबे कद के हैं नहीं, रीच इतनी है नहीं है, तो लेट खेलते हैं, अपने पास आने देते हैं बॉल को। यही क्वालिटी है इनकी, और इसीलिए बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं ये। टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं। एक स्लिप के साथ ऑपरेट करें, और बेहतर है कि जिस अंदाज से वो बॉल को थोड़ा सा लूप दे रहे हैं, एयर देते हैं। और अभी तक कामरान को बैकफुट पे रखा, बिल्कुल पिच के अंदर विकेटों के सामने बॉल को रख रहे हैं। कदम निकाले, चार्ज किया, और बॉल फिजा से होती हुई फेंस के बाहर 6 रन्स के लिए। एक्सीलेंट हिट। जी हाँ, बताते हुए कि मैं जब चाहूँ आपको बड़ी हिट मार सकता हूँ। यही बैंटर चल रहा है दोनों के दरमियान। कदमों का शानदार इस्तेमाल, पिच ऑफ द बॉल पहुंचे, और सबसे अच्छी बात कि सीधा मारने गए, यही क्वालिटी है। सेफ शॉट है ये। थोड़ा रूम भी दिया अपने आप को, और एंड रिजल्ट बहुत शानदार है। 6 रन हासिल किए। कमाल की बैटिंग जारी है कामरान गुलाम। अब जाने एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सरप्राइज किया। इवेंटफुल ओवर जिसमें चौके भी, जिसमें इनफैक्ट एक छक्का लगा, और सरप्राइज भी किया बैटर को। ओवर का इख्तिताम।
परेशानी डेफिनेटली हल्की सी होगी केपी के कैंप में। एहसानुल्लाह आपके सामने मौजूद हैं, बहुत ही शानदार उभरते हुए राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। ऑन साइड पे गैप के दरमियान से बॉल निकाला, यकीनी तौर पर 4 रन होंगे। जी हां, बहुत उम्दा टाइमिंग। जहां लेंथ की तलाश में अक्सर हमने देखा है कि 2 फुल बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी लेंथ है जिसपे बैटर को इनविटेशन है कि आइए जहां दिल कीजिए मारिए। एक बार फिर आगे पिच हुआ बॉल, लाइन भी लेग साइडिश थी जिसे आसानी से खेल दिया। बहुत ही शानदार हेड पोजीशन, बहुत स्ट्रेट रही, बैलेंस बहुत कमाल का रहा, प्लेसमेंट उससे भी शानदार रही और 4 रन हासिल किए। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर ये बॉल पड़ा था और आसानी इसको खेला। काफ़ी इस वक्त वो लम्हात है जब बैटिंग जो है कम बैक करने की कोशिश में, क्योंकि अर्लियर ऑन 5 विकेट 139 रन पे आधे दिन की कार्रवाई, और इस वक्त दोनों जो बैटर हैं नए हैं और उनकी कोशिश यही है कि थोड़ा सा अटैक करें, उनके इंटेंशंस हैं। लेकिन दूसरी जानिब थोड़ा वॉचफुल होना पड़ेगा क्योंकि 6वां और 7वां पे बैटर इस वक्त क्रीज पे है। देखिए ये इनके केपी की टीम की डीएनए में शामिल है पॉजिटिविटी। जिस तरीके से पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी फॉर्मेट हो, वाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, इनकी पॉजिटिविटी झलकती है इनकी क्रिकेट में से। यहाँ पे आसिम महमूद शायद अपने अगले स्पेल के लिए तैयार हैं, अभी तक डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लेंथ को सही तरीके से जांच नहीं पाए हैं। मोहम्मद उमर ने शानदार तरीके से भांप लिया अपने सेकंड स्पेल में और उनको कामयाबी भी हासिल हुई है, 2 विकेट्स हासिल किए हैं। अब खुश होंगे, कदरे बेहतर होंगे सऊद शकील, क्योंकि अब बॉलिंग उनके प्लान के मुताबिक हो रही है। स्पेशली उमर की अगर बात करें, बहुत ही जान से बॉलिंग की है। ऐसे बॉलर लगते हैं जो हमेशा अपनी 100% देते हैं और ऐसे बॉलर बहुत ज़रूरी होते हैं टीम के लिए, जान से बॉलिंग करते हैं। और अब हमें ये नज़र आ रहा है कि सीखने की कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं इनमें। जी हाँ, बिल्कुल बजा कहा कि इनकी जो बॉलिंग है हर बॉल में जान नज़र आती है, एनर्जी नज़र आती है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेसर जो है उनका एक स्पेल अच्छा होता है, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आता है या थकावट का जो आसार हैं वो नमूदार होते हैं। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, इस लाइन को उन्होंने मेंटेन किया और यही बात कर रहे थे अबे अली के हर बॉल में इनकी जो एनर्जी है वो शो होती है, झलक नज़र आती है, कहीं पे भी ग्राफ गिरा नहीं। यहाँ एक बार फिर अच्छी लेंथ, थोड़ा लाइन अगर थोड़ा और अंदर की तरफ होती, बैटर की तरफ होती तो और ख़तरात पैदा हो जाते बैटर के लिए। अच्छा स्पेल किया, मानिए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मैच में वापसी करवा दी है इस स्पेल ने सिंध की टीम को, क्योंकि लंच से पहले वाला जो घंटा डेढ़ था वो बहुत डोमिनेट किया साहबजादा फरहान ने और रेहान आफरीदी ने। इस ओवर से आए 4 रन, केपी ने बनाए 139 रन 5 विकेट गवा के। इस वक्त एक अच्छी हवा चल रही है और काफ़ी तेज़ है, उसके साथ मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अब मोतदिल है और इनफैक्ट अगर आप बात करें शाम की तो हवा काफ़ी ठंडी होती है। एंजॉय करते हैं अली। क्योंकि वो शामें जो गर्म मौसम से सर्दी की तरफ बढ़ती हैं तो बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है, मोतदिल। एक स्माइल सी है आपके चेहरे पे जब आप हवा और मौसम की बात करते हैं एजाज। जी हाँ, मौसम बहुत बेहतर हो गया,
स्पेशली कुछ दिन से तो हल्की हल्की ठंड हो गई है और क्रिकेट खेलने के लिए शानदार मौसम है ये, और घूमने फिरने के लिए भी। और इस्लामाबाद जैसे शहर है ये देखिए, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, और शायद यही वजह है कि अबरार भी उस एंड से बॉलिंग करते हुए नज़र आए हैं हमें, जो कि फार एंड जिसे कहते हैं। इसकी एक मेन वजह है कि उनका जो ड्रिफ्टर है, उनकी जो गुगली है, उसमें मदद हासिल होगी इस हवा से, क्योंकि वो बैटर को अंदर लेके आते हैं, राइट हैंडर को, और जिस तरह ये हवा चल रही है उसको काफ़ी मदद देगी इस गुगली को। ये अच्छा साइन है, अगर सर्वर के ज़्यादा चांसेस हैं इब्रार के आगे विकेट हासिल करने के इब्रार को, क्योंकि कामरान गुलाम बहुत शानदार तरीके से उनको खेल रहे थे, तो ये अच्छा इम्तिहान होगा सर्वर के लिए। एग्जैक्टली इससे पिछला बॉल जो था उसमें भी थोड़ी सी वो जगह बनाकर खेलने गए थे, ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा उन्होंने रूम दिया, स्पेस दिया, बॉलर को शो की स्टंप, तो अच्छी बैटल है सर। चार्ज किया लेकिन बहुत लकी रहे कि आखिरी लम्हात में अपने बल्ले को बॉल के सामने रखा, अदरवाइज अगर फ्री फ्लो होता तो चांस निकल सकता था। देखिए दाद तो देनी होगी इन बैटर्स को, घबरा नहीं रहे हैं, गुगली चेक हो गई थी शायद, लेकिन उस तरीके से एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए कि ऊपर से खेल देता है मिड ऑन के फील्डर के। ये अच्छी बैटल है, क्योंकि सर्वर हम जानते हैं ये बड़ी हिट मारते हैं। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त ओवर अबरार की जानिब से, 140 रन 5 के नुकसान पे। कामरान गुलाम ने 13 रन बनाए जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की बैटिंग की है, इब्रार को बहुत शानदार तरीके से खेले हैं। दोनों 6 रन जो हासिल किए वो इब्रार के अगेंस्ट ही हासिल किए हैं। मोहम्मद उमर स्पॉट ऑन, और इतना आसान नहीं है जब एक पेसर अच्छी रिदम में हो, अच्छी फॉर्म में हो और कमबैक ऑलरेडी कर चुके हों, तो जहां पर वो चाह रहे हैं वहीं पे बॉल फेंक रहे हैं और उसी लेंथ पे बॉल जा रही है। बेहतरीन लाइन और लेंथ। काफी क्वाइट है और एक उस हवा के झोंके की तरह रन्स आते हैं जैसे चौका या छक्का, और उसके बाद फिर कुछ लम्हात के लिए बैटर जो है बैकफुट पे जाकर रन्स को रोकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर। वेल अली, अब ये चौथा राउंड है इस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी का, और अगर हम ओवरऑल बैटिंग की बात करें, लगभग जितने गेम खेले गए उनमें 3 में रिजल्ट आए, 21 सेंचुरियां अब तक बनी हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस 3 राउंड में इनफैक्ट जो बैटर्स हैं उन्होंने फैसलाबाद, एबटाबाद, पिंडी की पिचेस को एंजॉय किया। जी हाँ, बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि बॉलर्स तो उभर के सामने आते हैं, इस बार हम देख रहे हैं कि बैटर्स बहुत रन कर रहे हैं और यंग बैटर्स रन कर रहे हैं। ये सबसे जो खुशाइन बात है। अब्दुल्ला शफीक ने 200 रन की इनिंग खेली यहाँ पे। नॉर्दर्न के मोहम्मद फसी, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की। यंग बैटर्स, हुरैरा ने सेंचुरी स्कोर की, साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की, कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की, अजहर अली ने सेंचुरी स्कोर की, फैजान रियाज डबल 100। फैजान रियाज तो हमेशा ही रन्स करते हैं, बहुत ही अनलकी क्रिकेटर हैं कि वो पाकिस्तान से नहीं खेल पाए, लेकिन
बहुत रन्स करते हैं। उमैर बिन यूसुफ ने, अगर आप मेरी राय मानेंगे तो सबसे जो बेहतरीन सेंचुरी बनाई गई वो उमैर बिन यूसुफ ने बनाई थी चौथी इनिंग में, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की और तकरीबन ऑलमोस्ट अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया था। तो अगर मुझसे आप कहें तो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट अगर इनिंग देखनी हो तो वो उमैर बिन यूसुफ की होगी। साइम अयूब ने बहुत शानदार 92 रन की इनिंग खेली। तैयब ताहिर भी इनिंग खेल चुके हैं। ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपके यंग बैटर्स उभर के सामने आ रहे हैं। सऊद शकील ने 150 रन की इनिंग खेली फैसलाबाद में। और इम्पॉर्टेंटली इस वक्त ओवर हो चुका 49। मजीद आगे बात करें 141 पे 5 आउट केपी। और सेंचुरीज की आप बात कर रहे थे तो वो सेंचुरीज जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बनाई गई, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस मुश्किल रही हैं रन्स करने के लिए। पिचेस मुश्किल रही। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त शॉट पीछे हटकर इस बॉल को खेल दिया टीप मिड विकेट की जानिब। 4 रन हासिल किए। एक्सीलेंट शॉट। या कामरान गुलाम सिर्फ 2 गेयर्स में बैटिंग कर रहे हैं, या वो डॉट खेल रहे हैं या बाउंड्रीज मार रहे हैं, स्पेशली अबरार के अगेंस्ट। ये लेंथ को बहुत शानदार तरीके से परख लिया, बहुत जल्दी जांच लिया था कि ये शॉर्ट पिच डिलीवरी है। बहुत आराम से बैकफुट पे गए और ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। 4 रन शानदार तरीके से हासिल किए। अच्छी इंपॉर्टेंट इनिंग है ये कामरान गुलाम की जानिब से। तो जस्ट जो भी प्लेयर इस पिच पे रन करेगा वो टेक्निकली और साउंड होगा, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी होगी तो वो रन्स करेगा। इसलिए ये उमैर बिन यूसुफ ने जो रन्स किए टेक्निकली बड़े करेक्ट थे। चौथी इनिंग के रन्स थे, मैं उसे बहुत हाईली रेट करूंगा। जी एग्जैक्टली। और जैसे आपने बात की चौथी इनिंग की, तो चौथी इनिंग में जो बैटिंग, इनफैक्ट अगर हम बात करें जब टीम चेस कर रही होती है तो बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं। और मुझे याद पड़ता है शायद यूनुस खान सक्सेसफुल बैटर हैं चौथी इनिंग में जब सेंचुरीज बनाने वाले। एक दफ़ा फिर ऑन साइड पे वही शॉट, वही रिजल्ट, और इस दफ़ा फिर उन्होंने थोड़ा सा पीछे हटकर ऑन साइड पे ये शॉट निकाला। जहाँ लेंथ एक बार फिर बहुत ही शानदार तरीके से पिक की, बैकफुट पे गए। डिलीवरी, ये पिछला बॉल था, इस पे 4 रन नहीं हुए थे, ये तो हम गारंटी से कह सकते हैं। हमने देखना होगा जिस बॉल पे 4 रन हासिल हुए। काफ़ी मुश्किल बॉलिंग करते हैं, मुश्किल आर्ट है ये इब्रार का। दाद देनी होगी जिस कंट्रोल से इन्होंने इंप्रूवमेंट शो की है। कमाल बॉलिंग करते हैं। बिल रन्स का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ, इम्प्रूव होती हुई बैटिंग। इनफैक्ट जब 5 खिलाड़ी ऊपर नीचे आउट हों उसके बाद अब अपनी कैपिटलाइजेशन कर रहे हो रन्स की। एक्सीलेंट है कि प्रेशर में आप अच्छी बैटिंग करें और जहां जहां आपको बुरा बॉल मिले वहां पे आप चौके लगाएं या छक्के लगाएं। ये इतना पीछे गिरा हुआ बॉल नहीं था, लेकिन इतनी शानदार फॉर्म में बॉल इतना अच्छा दिख रहा है उनको कि लेंथ क्रिएट कर ली गई अपने लिए। ये क्वालिटी है कामरान गुलाम की। अब 22 रन पर पहुंच गए हैं जिसमें ज़्यादातर चौके और छक्के ही शामिल हैं। 2 चौके और 2 छक्के। इसके साथ डॉट डिलीवरी के साथ हुआ इख्तिताम 50 ओवर के 149 पे 5। शुरुआत बेहतर नहीं थी अली, मिडिल ऑर्डर पे जाके थोड़ा सा रन रेट बेहतर हुआ। रहान आफरीदी और साहिबजादा फरहान की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत शानदार रही और वो अच्छे टाइम पे भी आई। एक ऐसे वक्त पे दोनों इकट्ठे हुए थे जब 2 विकेट जल्दी गिर गई थी। अच्छा संभाला है और अब बारी है कामरान गुलाम और मोहम्मद सरवर आफरीदी की कि इस टोटल को मैक्सिमाइज किया जाए।
वेल चेंज इन बॉलिंग। मीर हमजा को लेकर आए हैं इस वक्त ऑपरेशन के लिए कि कोई एक आध विकेट मिल जाए। 11 ओवर किए उन्होंने, अच्छी बॉलिंग करवाई शुरू से। डॉक्टर मीर हमजा है ऑपरेशन के लिए। पैड पे लगा, लेकिन कंप्लीटली जो बॉल था लेग साइड के बाहर पिच हुआ, और जो इम्पैक्ट ऑफ या इम्पैक्ट पॉइंट है वो भी लेग साइड पे था। जी हाँ, ऐसा ही लगा पहले विजन में कि बाहर पिच हुआ लेग साइड से। जी हाँ, बहुत आसानी से लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ। मीर हमजा वाहिद बॉलर नजर आए सुबह से जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छे बॉल किए, अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग की है, और इन्होंने बहुत अच्छी अंपायरिंग की है। शानदार अंपायर हैं। हार्ट की तो तारीफ आजकल हो ही रही है, शेड्स भी बहुत अच्छे हैं। नो की शाउट है स्ट्रेट अवे। मजीद यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं कर सकते या रिस्क नहीं ले सकते इनफैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी विकेट कॉलम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। जी हाँ, मीर हमजा ने, आगे हम बात कर रहे थे, बहुत ही शानदार बॉलिंग की। ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ते हैं, कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे बॉलिंग करते रहते हैं। और यहाँ पे हमें लगता है कि अगर सोहेल खान इस टीम में मौजूद होते तो बहुत बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि वो ऐसे बॉलर है जो ऐसी पिचों के मास्टर हैं। पहले वक्त अब अगेन वो टाइम है जब रन्स नहीं आ रहे, और मेरा ख्याल से कामरान गुलाम वही 1 या 2 चौके लगाकर उसके बाद फिर वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब बुरा बॉल पड़े और दोबारा से वो गैप जो है रन्स का फिल कर सकें। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त लाइन, और रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए ऐसी लाइन पे जब बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल पड़ रहा हो और डॉक्टर भी हो। वेल खालिद महमूद सीनियर एक्सीलेंट। पिछला गेम जो तीसरे राउंड का था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, उसमें भी इनकी जो अंपायरिंग थी अप टू द स्टैंडर्ड्स थी। रेगुलेशंस इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पेशेंस, स्टेमिना, टेम्परामेंट दोनों जानिब से, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग की जानिब से भी, क्योंकि आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है बाज़ों का जब विकेट ना आ रहे हो, जो विकेट है वो आसान हो, बॉलर्स के लिए वर्कआउट मुश्किल हो रहा हो। अच्छा ओवर मिड इन, 51 ओवर गए, 149 पे 5। इकबाल शेख इस मैच के मैच रेफरी, बहुत ही अच्छे नफीस इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, एंजॉय करते हैं अपने काम को, बहुत ही पेन लेके अपना काम करने वाले इंसान है। शानदार। ऑफ स्टंप से बाहर, गैप मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं ऐसे स्ट्रोक पे कि बॉल कहां जा रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे अब्रार अब थोड़ा थकावट का शिकार हो गए हैं, बॉल उस जगह पे गिर नहीं रहा है जैसा शुरू में पहले स्पेल में हमने देखा था, और ये तीसरी बार ऐसा है जब शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल किया है। पहली 2 मरतबा तो ऑन साइड पे खेले, लेकिन इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन थी,
जिसे शानदार तरीके से प्लेस किया, लेट खेले दोनों फील्डर्स के दरमियान से होते हुए 4 रन्स के लिए। कमाल की क्रिकेट जारी है। इस दफ़ा थोड़ी सी पेस बढ़ाई बॉल पे, और ये बेहतर है कि आप बैटर को रीड ना होने दें कि अगर आप प्रेडिक्टेबल होंगे तो आसान होगा बैटर के लिए खेलना। और ये बेहतर है क्योंकि पहला बॉल जब फेंका ऑफ स्टंप से बाहर था, चौका लग गया, तो बेहतर है कि आप अगर स्पिन नहीं मिल रहा तो विकेट टू विकेट बॉल रखें। इस दफा फिर ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल था और प्रोटेक्शन मौजूद है, दूसरे के लिए भी पलटे। ये अच्छी जगह है रन हासिल करने के लिए, और 2 बॉलों में अगर आपको 6 रन मिले एक ओवर में इस तरह के लॉन्गर फॉर्मेट में, तो आसान है एक ओवर में रन हासिल करना। या शायद वक्त आ गया कि थोड़ा रेस्ट दिया जाए ब्रार को, क्योंकि पिछले कुछ ओवर से लेंथ नहीं चेक कर पा रहे हैं। ये भी शॉर्ट ऑफ द लेंथ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इजी पिकिंग है, ये आसानी से रन्स दे रहे हैं, क्योंकि 52 ओवर्स के अंदर 20 ओवर्स जो हैं वो अब्रार ने किए हैं। तो शायद अब वक्त आ गया कि थोड़ा उंगलियों को आराम दिया जाए, तो रेस्ट करें, दोबारा आएँ। इसके बाद चाय का वक्फा है आधे घंटे के बाद, उसके बाद एक नई एनर्जी से आए। यहाँ देखते हैं कि कप्तान किस वक्त उन्हें तब्दील करेंगे। इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 6 रन आए इस ओवर में, 155 पे 5 केपी। $155 for 5. Clearly this session belongs to KPK, rather Sindh at the moment, and still not finished. Another half an hour to go before tea. But they've really made a strong comeback. Just 56 runs in the session and 3 wickets. That run rate, which was at one stage up above 3.5, has now dropped down under 3. We've had quite a few breaks here, uncalled for. Unofficial drinks break. It's not that hot as it was at the beginning of the season, but still players taking plenty of comfort breaks. Mir Hamza with 2 slips in a gully. Half the side back in the hutch, and let's say a very good afternoon to Asif and ask him what side he sees this game going. Good afternoon, Asif. Yes, good afternoon. Looks very nice, and I'm happy that the way Sindh came back early on, they went back on the defensive position. You guys were discussing earlier on about Saud Shakil, his captaincy. But I like the approach now. And the way Kamran Ghulam responded, actually, liked his batting, especially he is taking strike against Abrar. Some pull shot on the back foot, then cut shot. Good cricket all round. Yeah, Kamran Ghulam took his time to get off the mark, and then ever since then, he's been quite quick to pounce on anything loose. It's the quality of the player, because he'll make you pay if you bowl a bad ball to him. He's also got powers of concentration. He's prepared to wait for the bad ball. Play and a miss. Server, like all the other KP batters, very, very loose outside the off stump.
Another interesting thing is that Hamza was hiding the ball. Is there some reverse swing going on? Away from the body. Would have left that delivery. Very close. A good intention from Mir Hamza, taking a couple of slips and coming up outside the off stump. Batters are struggling on this line of length. Hassan has had a good day behind the stumps. Hamza can bowl quick, but we've noticed in the last couple of games he's decided to just concentrate on areas and finding the right length more often than not. Today has been no different. Every now and then he slips himself and goes for that effort delivery. Generally he's relied on good line and length and that movement. Bowled 12.4 overs and conceded only 27 runs. Good thing is that when even Sahibzada Farhan was taking on the charge, he was coming up with the same proper line of length. Great stroke. What a shot. Straight down the ground. Sarwar Afridi looked good there. Taking full toll of that half volley. Lovely to watch this straight drive with a straight bat. And good batting from Server. Hamza looking to persist with that fuller length. Too full on that occasion. But like I said, the KP batters have gone for that big booming drive. And although they paid a price a couple of times, but they're still not holding back. That always will give a chance to the bowler. That's why those slippers need to be ready when the opportunity comes. Just that 4 of the over, 159 for 5. Smooth sailing there. Not quite for KP, but he's enjoying his ride. Look at that beautiful blue skies. It's absolutely gorgeous afternoon here at the Pindi Cricket Stadium. Nice breeze. The northwesterly this time of the year cools off things. Quite stiff as well. 9 miles per hour is northwesterly. Really keeping things pleasant for everyone. Cannot have asked for a better weather for a game of cricket. Change in bowling now. Asif Mahmood back to the attack. And bit wavered if you see, conceded 34 runs with an economy of 4.86. Good thing is that Kamran Ghulam is taking responsibility and understanding his role, being a skipper. Yeah, Ali Yunus was discussing earlier that probably Abrar needs a break. He's bowled, what, 20 overs on the trot. So skipper has decided to give another ball to Asif. First, he was bowling from the media center end, but now he's bowling from the pavilion end. Needs to respond to the call of the skipper. 1 wicket here for Sindh will really put them in a dominant position. That's better from Asif. Just need to stay there. Test Kamran Ghulam's patience. Ball after ball after ball in the same area. If we see the fielding position for Asif now, and he's coming up with some aggressive position. You can see that the extra cover, short extra cover,
Nicely timed. The call is for 2. He'll get it easily. This is what Kamran Ghulam will do. He'll bat serenely in his own bubble. The danger thing, Asif, that I can think of is if server loses his wicket, he may be left out to bat with tail. And KP's tail is quite a long one. But I would love to ask you about Kamran Ghulam, that how exciting player he is, and once he is the skipper, how important and crucial role. It's a very nice shot, just straight to the fielder, a good looking shot. Yeah, Kamran Ghulam is a very good performer. He's a very good player. Good off the back foot as well. You see how nicely he got on top of the bounce. Asif is a tall lad, so he'll get bounced, but Kamran Ghulam really riding the bounce quite nicely. He's a very good back foot player. Very rare in Pakistan. There's very few good back foot players. He's certainly one of them. Little bit of shape for Asif. This has been better for him, considering what he did in his first spell. Coming back to Kamran Ghulam, like I said, when he broke all those records, he's been in the reckoning. And Pakistan Test middle order. Salman Ali Agha got his chance and he got debut in Sri Lanka when he thought Kamran Ghulam was in a better position to do that. But now with the bumper season coming ahead, 5 test matches in almost 6 weeks towards the end of the year against England and New Zealand. That's the top edge. Will go over the head of the keeper. Sarwar Afridi got lucky there. Will earn a boundary, a lucky one. 166 for 5. Went for the pull shot. It was a top edge over the wicket keeper's head. I must say it's a welcome boundary. It is, and he runs in the first innings are valuable, and KP have had their struggles in the first innings. You see the top edge because Asif, being a tall bowler, will get more bounce. You see a couple of times in this over, and Sarwar got defeated by that bounce. I was just coming back to Kamran Ghulam, that 5 test matches coming up against England and New Zealand. And if he's in the runs, he will put himself in the reckoning, because he's not too far away. And if an opportunity comes along in the middle order, it must come down to Kamran Ghulam, maybe Saud Shakil and Salman Ali Agha, all those 3 vying for that one place. Salman hadn't had a good start to the season. Saud Shakil has already had a big 100, 158. So has Kamran Ghulam, 100 under his belt. But these are very important times for these players. They continue to perform, definitely their name will be in the reckoning for the national side. And as well as I will include one more name, and that is Fawad Alam. How do you see his performances? Fawad Alam is already in the side. He's occupying that one place at the moment, although he's got a lean series against Australia. But I think he's still occupying that middle order slot. That's why I say if it becomes available, Fawad also has a big 100 under his belt already this season. So yeah, the competition is tough for places, and that's always a good problem to have. As we were discussing during the break, that I haven't watched any quick bouncers from the fast bowlers, especially Mir Hamza early on. Yeah, that's a good call, Asif, because yeah, if you see a batter coming to the front foot and being really comfortable against you as a fast bowler, it should hurt your ego. You should just tell him that you're around, and you can do that by slipping in one or at least couple of quick bouncers
keep him on that back foot. Just a reminder. But like I said, Hamza is just looking to bowl the areas. But yeah, it's not a bad idea to slip one every now and then. Well, Server went for the straight drive as well early on, and targeting just outside the off stump, where Saud Shakil, the captain, already taken one slip and gully, and especially a short extra cover catching position. Change of angle there from Mir Hamza. The firm blow down the ground, this time straight to the fielder. Yes, if you're mentioning about the field, this angle may be a different one, but that mid-wicket fielder, as we look at Fawad Alam, probably it's time for him to turn his arm over just before the tea break. Remember, he got the wicket of Usman Salahuddin in the last game. Just check that mid-wicket fielder. I can't remember him being involved at all. I didn't think not a single ball has gone to that mid-wicket fielder. Well, commentators' curse are pretty common. I thought it was going to him, but it didn't. Yeah, what I'm saying, that he could be brought onto that offside and just in a catching position. Just allow yourself more chance to get batters out by putting more people in catching position and challenge them. Show them a few gaps here and there. Tempt them. Rightly said that. It's think out of the box. This is what you're talking about, and I like this approach. The good thing is that Mir Hamza now he is just targeting stumps to stumps. Another very good over, just 1 run conceded. 55 gone, 167 for 5. That time of the day, the evening approaches. These birds, they just arrive at Pindi Cricket Stadium before they head home. This is their final destination. I would really love to see if Asif can bowl 6 deliveries in good areas and just concentrate on that. He's a very, very talented cricketer. We've seen him, what he can do with the ball and with the bat. It's just a lot of learning for him at the beginning of his career. This guy looks really energetic, rightly said by Shah Faisal. This is the really good line, you know. And also he's getting that shape, Asif, for that fuller length, and looks like we saw Mir Hamza getting a little bit of reverse. This ball is 55 overs old, and Asif is getting to tail in. He's got a good action if you look at it for the reverse swing. And with his height, he can really be lethal. Just a little bit is enough just to keep the bowler interested. Shape starting off a little too wide on that occasion. Good thinking from Kamran Ghulam. There's the length where bat is used to get disturbed. Early on he was struggling, but now pretty much fine, already settled down there. Had some good and big hits, not out on 32. A very crucial innings from him. We'll be looking forward for KP. Again, this has been good from Asif. Much improved second spell already. So, it's got a good action. Very, very smooth run up to the wicket.
not the gallop that you normally see. It's not that sprint to begin with. He gathers pace and pump in his arms. Could use that front arm a little bit more. Just keep it up for a little longer. Once again, that fuller length. Kamran Ghulam will get a single. His run-up and bowling action reminds me Debashish Mohanty from India, if you do remember. Brutally charged by Ijaz Ahmed in Lahore Qaddafi Stadium. The good thing about this Asif's action is that, like I said, he uses his maximum height. He's a good athlete. Nicely struck. Server is looking to put the bad balls away, and he's done it a couple of times in the last few overs. This time too full from Asif, and Server was good enough to pounce on that. Again, very good shot from Server. Once again, it was an over-pitch delivery targeting extra cover area. Lovely to watch. 56 gone, 172 for 5. Change of ends for Abrar. Just 8 minutes to go before the tea break. Trying his luck from this media center end. Over rate has been good again in this session. That's a good result for Abrar. I think you would want to bowl at Server, because Server is an aggressive player by nature. He will take on the challenge. And this is the right time to tempt him for those big hits just before tea. Mid-on has been brought back in for Server. Mid-off is 2/3 of the way, not all the way back. Should be a good contest here between Server and Abrar. Abrar is bowling nicely. On the other hand, Kamran Ghulam was taking charge, and this time Server nicely pulled that shot towards mid-wicket boundary for the 4 runs. Shot again set up very nicely for Server. Like I said, he's aggressive by nature. He won't spare any bad balls. Got deep in his crease. Use of the bottom hand. Easy pickings there for Server. Important, valuable runs before tea for Khyber Pakhtunkhwa. Just closing in on that first batting bonus point. Remember, they'll get it when they get up to 200. Whenever he bowls a wrong one or a carom delivery, coming up with nice line, but sometimes he is missing that line and got some punishment. Server not out on 20, faced 38 deliveries, looks confident. Rocking back out to that back foot, couldn't find the gap. Server increasingly looking good. Now batting on 20, 57 gone, 177 for 5.
partnership of 48 runs of 76 deliveries. KP needed it. They were 129 for 5 at one stage. Flurry of wickets had fallen after the lunch break. These two have stopped the rot and also increased the scoring rate. Kamran is steady as ever. And Server looking to be aggressive. It's a good partnership, good combination. Oh, that's that short pitch delivery that we were talking about earlier. Clearly surprised Kamran Ghulam. Almost got an edge. Good start from Asif. It was a quick one. Rising delivery, and Kamran went for pull shot. Yeah, it was surprising for Kamran Ghulam. Big broad shoulders of Asif. He really dug that one in short. Kamran Ghulam missed out there. Normally he's quite good at that cut shot. Probably was just looking to hit it a little hard. Yeah, we're talking about this surprise short pitch delivery from Asif. Sindh could have used this ploy a little bit more than what they've done. But now when the partnership is on, Asif really looking to test the batters. Be interested to see one against Server as well. Reading an article of Michael Slater, and he writes that a batter comes up with a technique of using just V, playing an extra covers, long off and long on, would be more confident rather than playing cut shot, pull shot. Michael Slater, one of the very successful opening batters of Australia. I'm talking of him. He made 200s on this ground, 94 and 98 back-to-back series. I mean, it could be different from person to person. I've said and I've heard from a lot of players that early on, if they can get away a good hook shot or a pull shot, that really sets them up, because that really opens their eyes and they concentrate more. Even a good bouncer, if you let it go with confidence, that also helps a batter to grow in confidence earlier in his innings. That's nicely turned away. Just a couple of runs. Server wasn't looking to hit it hard. Asif is consistently getting that ball to swing in. Yes, again, it's a very good looking cricket shot, a proper cricket shot. Couple of runs more. Excellent bit of fielding, superb. Saim Ayub has been brilliant at that short cover position. He's really helped his bowlers there. Nice firm drive. Look at Saim go. Airborne and stops it with two hands. 180 for 5. Good recovery from Khyber Pakhtunkhwa. Probably the honours will be even if they don't lose another wicket for the session. 81 runs, 3 wickets. What do you think, Ajaz? Honours even, or you'll just shade it towards Sindh? Asif, I beg your pardon. Well, I'm fine that if Kamran Ghulam just trying to rotate his strike, the way he's playing, coming up with the straight bat, looking so nice, confident. Just 4 deliveries remaining before the
It's a cut shot, a very nice shot. It's a very good and welcome boundary right before the tee. Yeah, Kamran Ghulam is an excellent player of spin. Look at how far deep he goes into his crease, using the depth of his crease and playing it late, coming down hard on it. High to low, as they say, when you're playing that cut shot. Perfect execution. Abrar is trying too much, I think. He's just looking to bit desperate, probably. 70 runs for that one wicket. Just one delivery to go before that tea break. Negotiate it safely. Over and time, gentlemen, and it's time for a cuppa, says Professor Nasir Hussain. Excellent session of cricket. Once again, a seesaw battle. Sindh dominating the first hour and KP making a strong comeback in the second hour. 85 runs in the session and 3 wickets fell. Yes, Kamran Ghulam played nicely and supported by Sarwar. This session concluded by 3 wickets, conceded 85 runs. Over rate is good. The run rate is under 3. 31 overs. That's excellent over rate. Thanks to Abrar, because he's bowled quite a lot of overs. But these 2 batters will really be welcomed by the KP dugout because they made a good comeback. Sindh toiled hard. They got the rewards in the first hour. But their patience was tested by this partnership of 55 between Kamran and Sarwar. KP's batting card. There have been some contributions there. The best one in the first session came from Sahibzada Farhan. Rehan Afridi also contributed quite nicely, but couldn't kick on. Kamran Ghulam has the opportunity to do that, batting on 39 at tee. Sarwar Afridi has looked good for his 22. 59 overs, 184 for 5 at tee. Action-packed session once again. Began at 99 for 2. And boundaries kept coming. This was a close call. Lunging forward, not sure. And then that was the period where Sindh really dominated. Umar bowled an inspired spell. He got the wicket first. Nabi Gul and Kamran Ghulam pushed the scoring along, but Nabi Gul never looked confident and he lost his wicket. But then Kamran Ghulam, we saw the best of him. First against spin and then pace. Abrar was put to sword. Anything short, Kamran Ghulam was quick to pounce on it. This low center of gravity uses the depth of the crease quite nicely. Sarwar also chipped in with some nice strokes. One down the ground and one towards extra cover. Partnership built from strength to strength as the session came to a close. Some impressive stuff from Mir Hamza and Muhammad Umar early on. And then Abrar Ahmed took 1 wicket. Well, as players are taking tea, we'll take a short break as well. And we'll be back with live action in just about 15 minutes.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पे मैच जारी है खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान। सिचुएशन कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा को पहले दावत दी थी सिंध ने बैटिंग करने के लिए। 2 विकेट्स गंवाने के बाद अच्छी पार्टनरशिप लगी रेहान आफरीदी और साहिबजादा फरहान के दरमियान, उनकी भी विकेट्स गिर गए। और अब सिचुएशन ये है कि कामरान गुलाम और मोहम्मद सरवर आफरीदी की एक पार्टनरशिप जो कि अब 55 रन पर पहुंच चुकी है, थोड़ा संभाला दिया है इस केपी की बैटिंग लाइन आपको 183 पर 5। ये सेशन अच्छा रहा है बॉलिंग साइड के लिए। इब्रार ने पहली विकेट हासिल की थी, रेहान आफरीदी गुगली को समझ नहीं पाए, अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन ये बॉल शायद समझ से बालातर थी। ये बेहतरीन बॉल रहा, एक ऐसी लेंथ बॉल, थोड़ा सीधा रहा, खड़े खड़े खेल गए। ये शानदार डिलीवरी थी, ये कोई मौका नहीं था बैटर के लिए। लाइन और लेंथ का अच्छा इस्तेमाल किया है मोहम्मद उमर ने इस स्पेल में। 4 बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया अभी तक। मीर हमजा, मोहम्मद उमर ने 2-2 विकेट्स हासिल किए, 1 विकेट हासिल किया है इब्रार अहमद ने 70 रन देकर। यासिर हमीद मेरे साथ हैं, थोड़ी बात करते हैं सेशन में जिस तरीके से बॉलिंग हुई, काफ़ी कुछ सीख के आए हैं यासिर। एक कंट्रोल बॉलिंग नज़र आई है इब्रार और मोहम्मद उमर की जानिब से सेशन में। जी हाँ, स्पेशली मोहम्मद उमर ने इस जो लास्ट सेशन था उसमें बहुत आला स्पेल किया। दोनों बॉल बड़े अच्छे जगह से उन्होंने किए, जिस तरह फरहान साहबजादा फरहान का, और जो दूसरी विकेट गई, दूसरे जो थे वो थोड़ा सा स्लो आए मेरे ख्याल से, अगर उनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो थी। बट हैविंग सेड दैट बॉलिंग बहुत अच्छी की उन्होंने, और इब्रार एक एंड से तो अच्छा कर ही रहे हैं। ये पार्टनरशिप जो है 55 रन पर पहुंच गई है। कामरान गुलाम और सरवर आफरीदी की जानिब अच्छी बैटिंग की है। सरवर आफरीदी ने अच्छा साथ निभाया है कामरान गुलाम का। और कामरान गुलाम की अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने इब्रार को बैटिंग की है, शायद ये सबसे बेहतरीन बैटिंग अभी तक हमने इब्रार के अगेंस्ट देखी है। जिस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को, फुटवर्क का इस्तेमाल शानदार किया है, बैकफुट पे कमाल तरीके से गए। जी, कामरान गुलाम ने वाकई बहुत आला बैटिंग की है, और अगर देखा जाए तो इस वक्त वो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इससे पहले जो साहबजादा फरहान ने इनिंग खेली वो बड़ी कॉम्पैक्ट इनिंग थी, और उसमें हमें सारे स्ट्रोक्स देखने को मिले। उन्होंने ड्राइव मारी, उन्होंने ऑफ द टोज बड़ा अच्छा खेला, और स्ट्रेट ड्राइव्स उन्होंने अच्छी खेली, बॉल अच्छा छोड़ा, सिंगल्स अच्छे किए। वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी उनकी और रेहान आफरीदी की। अगर वो वहाँ पे पार्टनरशिप ना लगती तो इस वक्त केपीके की टीम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में होनी थी। दोनों अंपायर्स अब ग्राउंड में आ चुके हैं, अब आखिरी सेशन का खेल होना है, और केपी चाहेंगे कि इस पहली इनिंग के लीड को पहले मैक्सिमाइज किया जाए। पहली इनिंग के रन को 183 पर 5 विकेट्स हैं, और दूसरी जानिब सिंध की साइड थोड़ी बेहतर बॉलिंग करनी होगी, थोड़ी पिच के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बॉलिंग करनी होगी। अभी हमें ऐसे लगा जैसे कंसिस्टेंसी मिसिंग है, और एक ऐसी टीम जो कि अपना तीसरा मैच इस ग्राउंड पे खेल रही है, उनसे बेहतर एक्सपेक्ट किया जाता है। रेहान आफरीदी, इमरान खान, साजिद शाह राइट पे मौजूद हैं, बहुत ही शानदार बॉलर यासिर अपने टाइम के। जी हाँ, बहुत कंसिस्टेंट बॉलर थे और बड़े लंबे लंबे स्पेल करते थे साजिद शाह, और इनकी ये बड़े इमैक्युलेट होते थे अपनी लाइन और लेंथ से में, और बड़ी जगह से आउट स्विंग इन स्विंग वहीं से ट्रैप करके आउट करते थे बैट्समैनों को। मैं काफ़ी क्रिकेट खेला उनके साथ। और अब जो है वो जूनियर्स की कोचिंग करते हैं, और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स इनके नीचे से निकल के आए हैं। अंडर 19 की कोचिंग करते हैं केपी की जानिब से। एहसानुल्लाह को बहुत हाई रेट करते हैं, और वो दिखा रहे हैं कि किस वजह से हाई रेट किया जाता है। हम रियली लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एहसानुल्लाह को इस पेज पे बॉलिंग करते हुए देखने का। ये एहसानुल्लाह बिल्कुल, अभी मैं एक लीग में एक मेंटोर था तो वो मेरे साथ टीम में थे, बड़े बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और इनको मौका मिला अभी इस मैच में वो अपनी जोहर दिखाएं। मेरे ख्याल से वो he'll be one to watch, और बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर है, एंथुसियाज्म है उनमें, बड़ी एनर्जी है, तो उनके वो जो स्पेल्स होंगे बड़े ज़बरदस्त होंगे, उस वक्त हम बोर्ड नहीं होंगे एटलीस्ट। कामरान गुलाम अच्छी इनिंग रही है, 39 रन पर मौजूद हैं, और आप यही एक्सपेक्ट करते हैं एक सीजन बैटर से कि मुश्किल हालात में वो अपनी टीम के लिए खड़े हों, रन्स करें, और ऐसा ही कुछ कामरान गुलाम ने किया है जब साहबजादा फरहान और रेहान आफरीदी दोनों जल्दी अपनी विकेट गंवा बैठे थे। यहाँ पे शायद साद खान
से आगाज़ करने का फ़ैसला किया है कप्तान साउथ शकील ने। ये पहली बार है इस टूर्नामेंट में हम साद खान को बॉलिंग करते हुए देखेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, एक नया चैलेंज होगा दोनों बैटर्स के लिए ये भी। और शायद अच्छा डिसीजन है, थोड़ा रेस्ट दिया है अबरार को, या शायद उनका एंड चेंज किया है, क्योंकि जिस आर्ट को अबरार करते हैं वो बहुत मुश्किल आर्ट है, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए उंगली में उसके लिए। जी नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं सिंध की टीम। इससे पहले हमने साइम को देखा, वो लेग स्पिन भी की, उन्होंने ऑफ स्पिन भी की। सरवर आफरीदी ये आपके सामने हैं, 22 रन पे खड़े हैं, 41 बॉलें खेले, 5 चौकों की मदद से। कामरान गुलाम 39 रन पे खड़े हैं, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं, ये बड़ी मैच्योर इनिंग खेल रहे हैं। साद खान पहला बॉल करेंगे, अच्छी फ्लाइट से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए यहाँ से सिंध की साइड का, अगर हम बात करें? बॉलिंग का फैसला किया, 7 विकेट्स अपने करियर में हासिल किए हैं साद खान ने। सीधा रहा है बॉल, अच्छा बॉल, रिसीव कर गए थे ऑलमोस्ट। दोनों बॉलें अच्छी जगह पे की। प्लान इनका देखें, इनका प्लान जो है वो सिंपल होना चाहिए कि एक तो इन्होंने रन्स देखने हैं, रन्स थोड़े से अच्छे लग रहे हैं उनके केपी के, क्योंकि वो जो सिंगल्स लिए उन्होंने वो एटलीस्ट 40 to 50 रन्स उन्होंने ऐड ऑन किए उनसे। और मैं ये समझता हूँ कि अब इनको चाहिए कि एक तो रन रोकें और किसी न किसी तरीके से ये विकेट लें कामरान गुलाम की, ये बहुत ज़रूरी होगा। वरना अगर इन्होंने 100 कर दिया लंबा तो वो जो एडवांटेज है फ्रेश पिच पे बॉल करने का, तो वो लूज़ कर देंगे। आपको लगता है कि अभी तक उन्होंने एडवांटेज हासिल किया है पहली 2 विकेट हासिल करने के बाद जो पार्टनरशिप लगी? जी हाँ, डेफिनेटली एडवांटेज तो हासिल किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 50% तक इन्होंने एडवांटेज हासिल किया। बीच में जो पार्टनरशिप्स लगी हैं उससे उनका रिदम ब्रेक हुआ है। वो यही चाह रहे थे कि शायद इनको इस स्कोर में जो अभी नज़र आ रहा है इसमें ये ऑल आउट कर जाएं, तो फिर एडवांटेज जो है पूरी तरह उनको हासिल होता। अब जो है अब थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली 300 रन्स करना, फिर उसके ऊपर 300 करना, फिर टारगेट देना, तो फिर ज़्यादा कुछ लग यही रहा है कि एडवांटेज इतना नहीं है। यहाँ पे जल्दी करनी थी, अच्छी कॉल यहाँ पे सरवर आफरीदी की जानिब से मना किया कामरान गुलाम को। 1 रन दिया साथ ने अपने पहले ओवर में, 184 पर 5 केपी। आसिफ महमूद को लेके आ रहे हैं दूसरे एंड से, और इनका डेब्यू अच्छा था और दूसरी इनिंग में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। आज आपको क्या लग रहा है इनकी बॉलिंग जितनी आपने देखी है, कैसी लग रही है आपको इनकी बॉलिंग? इनका जो अप्रोच है वो क्या है, मतलब इस मैच में जिस तरह वो कप्तान इनसे जो चाह रहा है वो क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं? या नंबर सजेस्ट करते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 10 ओवर्स में 49 रन दे दिए, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। कंसिस्टेंसी नहीं हमें देखने को मिली। हमने पहले मैच में जब इनको देखा था तो शॉर्टर साइड पे थे, काफ़ी पीछे बॉल कर रहे थे, और आज बहुत फुल बॉलिंग देखने को मिली हमें, क्योंकि शायद वो जो लेंथ है, जो ड्राइव मी लेंथ की तलाश में रहे और उस चक्कर में बहुत आगे बॉल करते रहे, मुंह में बॉल करते रहे, जिसे बहुत आराम से साहबजादा फरहान ने और कामरान गुलाम ने बाउंड्रीज की तरफ पहुँचाया। तो कंसिस्टेंसी हर लेवल ऑफ क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना इनके लिए बेहतर है। और अगर ऐसे बॉल करते रहेंगे यासिर तो फिर तो रन्स बढ़ते जाएंगे और कप्तान के लिए परेशानी बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखे ना बॉल थोड़े से पीछे किए हैं, तो ये शायद ओवर कंपनसेट करें इस मैच में और ये दिखा रहे हैं कि मैं आगे बॉल भी कर सकता हूँ। लेकिन आप 4 डे क्रिकेट में हमेशा बेसिक्स पे रहते हैं, जब तक आप बेसिक्स पे रहते हैं आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप प्री प्लान आते हैं कि यार मैं ये करूँ, तो ऑब्वियसली उस पर फिर सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं उसमें फिर आप मार खाते हैं। और स्पेशली जब आप वाइड बॉल क्रिकेट खेल के आ रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है अपनी लेंथ सही करने में। देखिए फिर एक बार बहुत फुल बॉलिंग कर रहे हैं, तो यही यहाँ पे इनको सीखना होगा और ये अच्छा प्लेटफॉर्म सेट है यहाँ सीखने के लिए। जी शायद कप्तान को इनसे बात करनी चाहिए
क्योंकि ये पॉइंट तो हमने भी नोट किया है, तो ऑब्वियसली कैप्टन जो अंदर होता है तो उसको तो ज़्यादा समझ आ रही होती इन चीज़ों की कि मेरा बॉलर किस लेंथ पे बॉल करता है। देखिए एक ही लेंथ होती है बॉलर की, वो होती है गुड लेंथ, रेगुलर लेंथ आपने हिट करनी है इस तरह की पिच पे। ये बेहतर है क्योंकि अच्छे तरीके से खेला है कामरान गुलाम ने। अगर आपको कंसिस्टेंटली इसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है, ये आर्ट जिस दिन आपको आ जाएगा तो आप रेड बॉल क्रिकेट के बहुत शानदार बॉलर बन जाएंगे। क्योंकि लंबी क्रिकेट है, 4 दिन की क्रिकेट है, आपको कंसिस्टेंटली दिखानी होती है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर शोबे में, तभी आप मैच जीतते हैं। और केपी इस बार हमें काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है, बॉटम पे हैं टेबल के। अच्छा मौका है यहाँ पे, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सिर्फ लॉन्ग क्रिकेट में, जो लंबी क्रिकेट, इसमें बेसिक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपकी 70% जो गेम है वो बेसिक्स पे है। लेकिन यासिर, क्या बेसिक्स बदल गई हैं T20 क्रिकेट के आने के बाद? क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 फॉर्मेट थे, 4 डे, 5 डे या 1 डे क्रिकेट थी। तो क्या आपको लगता है कि T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा होने से वो बेसिक्स की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो गई है? आई थिंक प्लेयर्स का माइंड सेट चेंज हो सकता है, बेसिक्स तो चेंज नहीं हो सकती गेम की। क्योंकि आप बेसिक्स किस तरह चेंज कर सकते हैं? आपको अगर ये ट्रांसफॉर्म करना है तो इसके लिए ये 1 साल 2 साल नहीं, ये शायद 2 दिहाइयाँ लग जाएं। 4 डे क्रिकेट की जो बेसिक्स तो चेंज नहीं होती, लेकिन माइंड सेट चेंज होगा। बेसिक्स तो वही है आपकी क्रिकेट की, स्पेशली 4 डे की, कि आपने जो टेक्निकली करेक्ट चीज़ें वही करनी है। या लेकिन जैसे वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, पैडल स्वीप्स बहुत आ गए हैं, अनकन्वेंशनल शॉट्स हम देखते हैं, थोड़ा बेसिक से हट के हैं वो शॉट। जब आप या मैं खेला करते थे तब बेसिक्स हमें कुछ और सिखाया जाता था, लेकिन अब जो हम जिस तरीके से देखते हैं, ये शानदार तरीके से कट किया है, स्वीपर मौजूद है, 2 रन्स जी आसानी से हासिल कर लेंगे। इस बारे में बात जारी रखेंगे। केपी के हो गए 187 रन, 5 विकेट्स गवा के। यहाँ तो हम बात कर रहे थे क्रिकेटर्स के बेसिक्स की, माइंडसेट की। आई एग्री विद यू के बिल्कुल माइंडसेट तो चेंज हुआ है, बट वो जो क्वालिटी ऑफ शॉट्स जिस तरीके से जो प्रैक्टिस आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, आज डिफरेंट टेक्निक से प्रैक्टिस की जाती है, डिफरेंट शॉट्स की प्रैक्टिस की जाती है, तो बेसिक्स थोड़ा चेंज होता लग रही है आपको? देखिए अगेन व्हेन सेड दैट, ये कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट, इसमें शॉट्स स्किल्स में डेफिनेटली डेवलपमेंट हो रही है। जो शॉट्स हैं वो नई शॉट्स, जिस तरह पैडल स्वीप है या लैप शॉट्स हैं या विकेट से हट के शॉट्स हैं जो भी कॉर्नर की हैं, तो लेकिन फिर भी शॉट्स तो वही है ना, उन्हीं को मॉडिफाई हो रही हैं। तो वो मॉडिफिकेशन जो है वो डेफिनेटली हो रही है। और लेकिन फिर भी आपको, ये बड़ा शॉट है, ये बहुत ही बड़ा शॉट है, ये चला जाएगा स्टैंड्स में। अगर आप इस लेंथ पे हाफ लेंथ बॉल करेंगे तो सरवर आफरीदी जितने टैलेंटेड है, ये आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। और बहुत ही आसानी से 6 रन हासिल किए। बिल्कुल हाफ क्रैकर दिया साद ने, और बड़ी आसानी से जिस क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं वही आपको देखने को मिली। और T20 की शॉट थी बिल्कुल। और ये वैसे भी ये हर क्रिकेट में ये शॉट तो ऑन, इतने बहुत पीछे बॉल गिरा था, बहुत बुरा बॉल था, बट ये शॉट्स अब ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छी बात है, क्रिकेट की जो है उसमें खूबसूरती में इजाफा हो रहा है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं चौके छक्के, लेकिन विकेट्स भी साथ साथ देखना चाहते हैं। उसके लिए फिर बॉलर का अच्छा होना ज़रूरी है। आजकल जिस तरह की कंडीशंस हैं, स्पेशली T20 में अपने आप को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा लिबर्टी है। और एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमने अभी नेशनल T20 में भी देखा यासिर, और पाकिस्तान की नेशनल साइड में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते हैं। बड़ी हेड भी अगर मारते हैं तो वो एक ही एरिया लेग साइड ढूंढते हैं। ये बॉल चला जाएगा, 1 ही रन।
आसानी से हासिल कर लिया। तो क्या ये आसान शॉट होता है खेलने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि ऑफ साइड के बाहर वाला बॉल भी अक्सर खींच के मिड विकेट की तरफ लेके जाया जाता है। देखिए इसमें ज़ाहिरी बात है, जो ये जिस शॉट की आप बात कर रहे हैं तो वो उसमें जो मसल्स यूज़ होते हैं जो शॉट मारने के लिए, वो बड़े इजीली, वो क्यों स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। हमारा शोल्डर है, जिस तरह बैक फुट पे आके आपने मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर मार दिया इन्होंने 4 रन्स के लिए। या इस लेंथ पे आप बॉल करेंगे तो आसानी से 4 रन आप दे देंगे। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये काम नहीं कर रहा है, और बहुत ही जल्दी पिक कर लिया था इस लेंथ को कामरान गुलाम ने। जी देखें, ये थोड़ी सी इन्होंने लेंथ क्रिएट भी किया। आपने देखा होगा कि ये इतनी बुरी लेंथ नहीं थी जो पहले वाली बॉल थी, लेकिन कामरान गुलाम ने इनको जज कर लिया, चेक कर लिया कि ये पीछे करेंगे। देखें एक दफ़ा फिर पीछे बॉल, और एक दफ़ा फिर इन्होंने 4 रन हासिल किए, बल्कि जी 4 रन। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, महंगे साबित हो रहे हैं साद खान। एक और शॉट डिलीवरी, और जब फील्डर वहाँ मौजूद नहीं हो तो ये हर बार ही 4 रन के लिए जाएगा। बहुत ही शानदार बैटिंग जारी है, काउंटर अटैक किया है कामरान और सरवर ने। बिल्कुल कामरान को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने एकदम सिचुएशन को, उनकी जो बॉलिंग है उनको एकदम रीड किया गया। ये पीछे कर रहे हैं बॉल, तो फ़ौरन उन्होंने 2 बाउंड्रीज हासिल की। और इसके एक रन के साथ अपने 50 रन मुकम्मल किए कामरान गुलाम ने। बहुत ही शानदार इनिंग कामरान गुलाम की जानिब से, एक ऐसे वक्त पे जब टीम को बहुत ज़रूरत थी, थोड़े मसाइल थे, आए और खड़े रहे, रन्स करते रहे। बहुत ही पॉजिटिव इनिंग रही। जी हाँ, बहुत ही अच्छी इनिंग्स कामरान की, मुश्किल वक्त से निकाला अपनी टीम को, 50 रन हासिल किए। 200 रन भी हो गए केपी की टीम के। जिस वक्त ये आए थे उस वक्त 100 रन थे और 5 खिलाड़ी आउट थे, बल्कि 100 से भी कम रन थे। अच्छा 50 के इन्होंने सिंगल्स भी लिए हैं और बैट बॉल्स को इन्होंने पुट अवे किया। 2 छक्के भी मारे अपनी इनिंग्स में। आला इनिंग। आज सबसे ज़्यादा हमें नासिर हुसैन दिखाई दिए स्क्रीन पे। बहुत ही फॉर्मेडेबल, बहुत ही अच्छे अंपायर हैं, अपटाइट हैं, अच्छे डिसीजन भी देते हैं। आज शायद एक डिसीजन ऐसा था जो ये आउट दे सकते थे। ये वाइड बॉल हो जाएगा। बहुत अच्छी कलेक्शन हसन की तरफ से। ये बॉल बड़ा अच्छा इन्होंने कलेक्ट किया है। सुबह भी हमने देखा है, बहुत अवे था इनकी बॉडी से, और डाइव की टाइमिंग बहुत अच्छी है अली इनकी। अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा टाइम करते हैं ये डाइव को। दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं यासिर, आपसे मैं दोबारा वही क्वेश्चन, क्योंकि हमें सही तरीके से उस वक्त जवाब हासिल नहीं हो सका था। मिड विकेट की जो शॉट सिलेक्शन है, बहुत ज़्यादा बैटर्स हमारे पाकिस्तान के सिर्फ एक ही वो एरिया पसंद करते हैं, और क्या वजह है कि उस आउटसाइड की बॉल को एक्स्ट्रा कवर की जानिब हमें छक्के देखते हुए नहीं नज़र आते हैं। देखिए जो मैं समझता हूँ, शायद ये ठीक हो या ना हो, बट मेरी राय में ये है कि उनके जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, जो बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग मसल, वो राइट शोल्डर होता है, ठीक है वो। और पीछे आगे जब आप मिड विकेट पे हिट करते हैं या आप टांग रख के जब आप काउ कॉर्नर पे मारते हैं, तो आपके ये वाले मसल्स यूज़ होते हैं। हालांकि जो आप बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर से, उसके लिए आपको डिफरेंट मसल चाहिए, आपको दोनों शोल्डर्स का वो चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा शायद इस वजह से आप ये भी कह सकते हैं बायो मैकेनिकली आपकी जो स्विंग और फोर्स है आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपने शोल्डर्स को आप अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं ऑन साइड पे, तो स्विंग में जो फोर्स होती है उसकी वजह से वो शॉट जो है वो दूर तक जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया यासिर आपने।
आई एम श्योर काफ़ी यंगस्टर्स को इस चीज़ से मदद हासिल होगी। तो आप जब आप क्रिकेट खेलते थे तो क्या आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती थी? क्योंकि T20 तो ज़्यादा उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आप लोग तो नेचुरली फ्लेयर था। आपकी बात करें, इमरान नज़ीर की बात करें, उसके बाद कामरान अकमल की बात करें, आप लोग नेचुरली, इमरान फ़रद की बात करें, इवन टेक्निकली भी करेक्ट थे और फ्लेयर भी था आप लोगों में। जी बिल्कुल, एज एन ओपनर मैं तो एक चीज़ पे बिलीव करता था कि आपको पॉजिटिवली एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि नया बॉल है, अगर आप उसको ज़्यादा अपने ऊपर चढ़ाएंगे तो वो आपको तंग करेगा। तो इस वजह से मैं तो जो है थोड़ा मेरा जो ये होती थी कि अच्छी बॉल को ऑफ कोर्स उसको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन जो बॉल वहाँ है शॉट के लिए उसको उस पर ज़रूर जाना है, चाहे उसमें आपकी विकेट भी चली जाए, डेंट माइंड। भले वो टेस्ट मैच की पहली बॉल हो और बॉलर जेमी एंडरसन हो, उसको निकल के मार दिया जाए। नहीं नहीं, वैसा तो कोई ऐसा तो नहीं है। कोई आपको आपके सामने मारा है किसी ने उसको पहला बॉल में निकल के? 4 रन के लिए बॉल चला जाएगा। ये इजी पिकिंग्स है। लेग साइड पे आप यहाँ बॉल करेंगे तो 4 रन ही मिलेंगे। जी बिल्कुल, टांग पे बॉल था, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाइन थोड़ी सी उन्हें शॉट को क्रिएट किया, बीच का बॉल था, इजीली मैनेज किया सर्वर ने। कामरान गुलाम ने बहुत शानदार तरीके से अपने 50 रन मुकम्मल किए। कदमों का इस्तेमाल कमाल कर रहा है और बहुत कम बैटर्स को हमने इब्रार को इतनी अथॉरिटी से खेलते हुए देखा है, और उसके ज़्यादा मेन वजह उनके फुटवर्क का इस्तेमाल है। फ्रंट फुट का बॉल हो, कदमों का इस्तेमाल करना हो, बैक फुट पे जाना हो, शानदार तरीके से खेला है। और ये जो वो शॉट्स अपने कलाइयों का भी मदद से भी रन हासिल किए, एक कंप्लीट पैकेज है कामरान गुलाम। जी हाँ, बहुत जल्दी ये बैक फुट की जो लाइन है, जो बॉल है, उसको बहुत जल्दी जज करते हैं, और इनका शॉट हैंड जैब भी बहुत अच्छा है बैक फुट पे। उस पर उन्होंने रन हासिल किए, 20 रन हासिल किए, 15 से 20 रन आई गेस। अच्छा खेले, अच्छा खेल रहे हैं। जब तक ये क्रीज पे मौजूद हैं, मेरे ख्याल से सिंध के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि इनका 100 जो है वो सिंध को उस एडवांटेज से दूर ले जाएगा। एक और तजुर्बा अब साइम अयूब को लेके आए हैं। शायद ये बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि साद खान को हमने देखा कि उनका बॉल सही एरिया में गिर नहीं रहा था, काफ़ी शॉर्टर साइड पे थे। और साइम अयूब में काफ़ी वेरिएशन, ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, मीडियम पेस भी कर लेते हैं। बैटर तो शानदार है ही हैं, और इनके लिए डीप स्क्वायर लेग के फील्डर रखा गया, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान में फील्डर रखा गया है। लेग स्पिन कर रहे हैं अभी। पिछले मैच में इन्होंने ऑफ स्पिन की, और एक जिस तरह आप बता रहे थे मीडियम पेस भी किया इन्होंने। तो ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, बैटिंग में बहुत टैलेंटेड। ऐसा कोई क्रिकेटर आपको याद है अली जो सारा कुछ करते थे? आई गेस सचिन तेंदुलकर थे। आपके जहन में कोई याद? मुझे तो इजाज़ भाई याद आते हैं, अपने लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते थे, मीडियम पेसिंग कर लेते थे, मीडियम पेस बॉलिंग भी, बैटिंग भी हार्ड हिटर थे। और जैसे जैसे अब क्रिकेट में इनोवेशन आ गई है, आप जितने हैंडी होंगे उतनी आपकी ज़रूरत होगी टीम को, क्योंकि जैसे आपने अभी साइम अयूब की एग्जांपल है, लेफ्ट बैटिंग कर रहे हो तो ऑफ स्पिन करते हैं,
राइट बैटिंग हो तो लेग स्पिन करते हैं। ये हैंडी क्रिकेटर होते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्रिकेट अब T20 क्रिकेट ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी जो जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है ऐसे क्रिकेटर्स की। जी हाँ, मल्टी टैलेंटेड है, लेग स्पिन फील्डर अच्छे हैं, अच्छा बॉल रोका और अख्तिताम पजीर हुआ 210 पे 5। बावन रन पर मौजूद है कामरान गुलाम, उनका साथ निभा रहे हैं मोहम्मद सरवर आफरीदी जिन्होंने बनाया 36 रन। 210, 5 विकेट गवाकर केपी एक अच्छी पोजीशन में आते हुए आहिस्ता आहिस्ता। आसिफ महमूद थोड़े डिसअपॉइंटिंग नजर आए हमें इस मैच में, कंसिस्टेंट नहीं रहे, थोड़े से लॉस्ट लग रहे हैं इस मैच में। आसिफ महमूद 10 ओवरों में 55 रन 11 ओवरों में दे चुके हैं और बॉल की इस पर कंडीशन भी जो है वो थोड़ी सी फेवर नहीं कर रही और स्पिनर्स को सेंड से लगाया। मेरे ख्याल से ये शायद नए बॉल का भी वेट कर रहे हैं। अभी 16 ओवर्स रहते हैं नए बॉल में, बहुत टाइम है। यार लेग स्लिप को अब खड़ा किया क्योंकि अब वो वक्त आ गया जब आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ेगी। एक साइड पैक करने की ज़रूरत पड़ेगी शायद, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट आपको मिल नहीं रही है, बॉल काफ़ी पुराना हो गया है, ऑफ द पिच भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो अब बेहतर यही है कि आप रन सेविंग की तरफ चले जाएं, नए बॉल का इंतज़ार किया जाए। जी बिल्कुल, टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं और टैक्टिक्स चेंज लग रहे हैं थोड़े से। अब अगर आप उसके फील्डर को देखें, स्क्वायर लेग का फील्डर थोड़ा सा अंदर है, शॉर्ट फाइन और शॉर्ट स्क्वायर लेग के बीच में उन्होंने फील्डर लिया हुआ है। और देखें पीछे पीछे कर रहे हैं, एक डीप मिड विकेट और डीप फाइन लेग का फील्डर हमें नज़र आ रहा है। वाइड दिया इस बार क्योंकि उन्होंने डेलिबरेटली ये किया और वो उनकी रेंज से बाहर था, इस वजह से। क्या ऐसी शॉर्ट पिच बॉलिंग का ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक तो इजीली निगोशिएट हो जाएगा, इससे सिर्फ एनर्जी आपकी ज़ाया होगी। अगर आपने बाउंसर करना है तो वेल डायरेक्टेड होना चाहिए, हेलमेट की तरफ आना चाहिए, तभी आपको उस बाउंसर का फ़ायदा हो सकता है। और मिसफील्ड हो गई यहाँ पे, बैकअप शांत अच्छा नहीं रहा है, शायद एक एक्स्ट्रा रन, 2 रन, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स कामरान गुलाम की जाने पे, बहुत अच्छी कमिटमेंट दिखाई एंड पे। जी अच्छी रनिंग कामरान की, टैप करके रन दिया था एक और पीछे बैकअप पे कोई फील्डर नहीं आया। मीर हमजा पूरी तरह अपने आप को बैंड नहीं कर सके। साइम आसानी से एक और रन हासिल कर लेंगे सरवर, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही सरवर की। नेशनल T20 में हमने देखा एक सरप्राइज पैकेज बन के सामने आए, बॉलिंग की भी ऑप्शन मौजूद है, नया बॉल अच्छा करते हैं, सर्कल में भी बॉलिंग कर लेते हैं, बड़े हैंडी क्रिकेटर हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर्वर का ये है कि बैटिंग में भी अच्छे हैं और साथ में बॉलिंग में फील्डर भी अच्छे हैं। और केपी का जब जो डग आउट है वो इस वक्त थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि कामरान गुलाम का पिच पे मौजूद होना एक बहुत ही अच्छा साइन है केपी के लिए। जी हाँ, इफ्तिखार अहमद की गैर मौजूदगी में सबसे बेहतरीन बैटर कामरान गुलाम ही हैं, साहबजादा फरहान के साथ साथ, और अच्छा रोल निभाया उन्होंने सीनियर होने का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है और एक दूसरे के लिए खेलते हैं, बहुत जेलन होकर खेलते हैं, ज़्यादा स्टार्स मौजूद नहीं है। आज जैसे हमने देखा खालिद उस्मान कैप्टन थे लेकिन अपने आप को उन्होंने विड्रॉ किया कंडीशंस को देखते हुए। ऐसा बहुत काम होता है कि कैप्टन अपने आप को विड्रॉ कर ले, या से कंडीशंस को देखते हुए कहे मैं बैठता हूँ,
जो टीम के लिए बेहतर हो, एक अच्छे कप्तान की निशानी है ये। जी हाँ बिल्कुल, और ये वाकई ये एक मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन है, ब्रेव डिसीजन है मैनेजमेंट का। ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है इंटरनेशनल? इनर थाई शायद नहीं पहना हुआ और वहाँ ही बॉल लगा जाकर, ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है इनसाइड एज के बाद कामरान गुलाम के लिए। ओह, अभी तो नहीं, लेकिन होटल जाके डेफिनेटली तकलीफ होगी है। हाँ जी, एट टाइम्स ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है। एट टाइम्स मुझे लगता है कि जब भी बॉल लगेगा ये पेनफुल ही होगा इस जगह पे, और कभी कभी ये मजाक का सीन भी होता है, लेकिन जिसको लगी होती है ये वही जान सकता है ये कितनी दर्द में होता है वो। 216 पर 5, 65 ओवर के बाद। Well, 5 wickets in 216 runs, 2 wickets for Mir Hamza, Muhammad Umar and Abrar Ahmad. 128 when the 5th wicket was down. So the 5 wickets have been taken by the bowlers. Have a look. First one to go. Beauty. Then the second one, drag on. Ashfaq was there on 14 runs. Then the third one to go, Rehan Afridi. And he was surprised. Then the edged away, the Farhan. And then we have got the 5th one, edged away. Ball was tipping down in front of the wicket keeper. Now he was there. Good captaincy. But now it's a time to break, or to get a break by Saud. And he must be thinking that who will be the bowler that can be utilized here properly. I've got Shah Faisal along with me. Welcome. Thank you, Ijaz. And a good partnership, really. 128 for 5. KP were 88 runs and in good time as well. Just 124 deliveries. Kamran Ghulam once again proving his mettle. He's holding this middle order together. Good contribution from Sarwar as well. Sindh came out after tea with non-regular bowlers from the far end. They really leaked runs. 17 runs of 2 overs from Saad Khan. Now finally they've given the ball back to Abrar from that pavilion end. Field is well set, so singles are available. Well, Faisal, first day's pitch. I'm not looking at any sort of help here for Abrar. That he's not getting any purchase. Though that he is getting a bit of the bounce from the surface, but not much spin. Although he's not a finger spinner, he's able to get some turn, but there's not a lot of pace for him. And Kamran Ghulam is really good player of spin, so he's really negated his threat. Server also looked more comfortable against spin than pace. So this partnership has worked well for KP.
Excellent. Saim once again throwing himself around. He's been wonderful in the field. Yes, quite energetic. A couple of times ago, we did see that he was filling in the covers quite well. So he's good in circle, like protecting those runs towards offside and making some pressure on the batting line. It's good anticipation. There wasn't much pace on the ball, so batters were looking for the single. Again, Saim in the action. This time the ball eludes him. To build pressure now, Abrar. He got a little impatient, one felt, in his spell towards the end of that long spell. But now I think he realizes he just needs to give his captain some control. Easy pickings in this over. 4 singles. 2-1-8 for 5. Look at that. Beautiful scenery. Plenty of greenery around. The margalas in the background. Beautiful blue skies. There's some fluffy clouds up in there. And a gentle breeze. Perfect setting for a game of cricket. Southwesterly breeze really keeping things cool. Asif has leaked plenty of runs. Once again asking for trouble. He's lucky. Went straight to Mir Hamza. Either side of him it would have been a boundary. The third seamer was a problem for Sindh in the first innings in the previous game. Same is the case here today. Yes, lots of space, time for the batter to play that shot down the leg side. Not accurate enough. Giving easy runs to the opponent side. He gave away 34 runs in his first 7 overs. And now he's given another 30 in 6.2. Almost going at 5 and over. That has really hurt Sindh's plans. Problems for Saud Shakil because he has to rotate his seamers. Hamza has bowled 14 overs, Umar 13. Probably just about time to bring one of them back. He's been very indifferent. Bowling both sides of the stumps, bowling variable lengths, not enough the balls in the good area. If he had his pitch map, you would see that there will be scattered deliveries all over the pitch, either side and in length as well. He's better than that, I can tell you that. He screamed that away. What a wonderful stroke. Just put the front foot down, the high front elbow, and it found the middle of the bat. Exquisite. Excellent. When you are easing into the batting, such kind of strokes you will see for the whole day. Have a look. Beauty. Excellent shot. Full of confidence. And you can hammer those kind of shots for the whole day. If you will be facing such kind of deliveries, really gift. He held the pose. That was copybook. There you go. Another wayward delivery. Really disappointing there from Asif, but Kamran Ghulam, he's really come on leaps and bounds in the last couple of years, and he's becoming a pure technician. Look at that. That is the pose. That is one for the photographers and for the album.
224 for 5. Very gentle breeze. And it's been plain sailing for this partnership, approaching the 100-run mark. You have to give credit to server as well. He's played the part. Normally he's very aggressive, but he's complemented Kamran Ghulam very nicely in this partnership. Yes, you're right. Server is playing good. He's on 42. He has already got a 50 in his career in the first class. But having a good company. They've been able to pick the gaps regularly, rotate the strike. Field is well scattered now. Thanks to the intent of these two, they put pressure back on. They haven't spared any loose deliveries. That is the key to build a long partnership. Yes, you're right. Because we did see in this inning, like it's 98 runs partnership in 148 deliveries. That batters, they were able to, though that it was not a good start from KP, but the middle order, they've been doing a hard job, looking good in the center. Services dot delivery, over bowl, it's 68 bowled, 226 for 5. Well, the body language, that has been giving you the best picture, because almost 1.5 hours ago before lunch, when 5 wickets were down and runs were not being that massive, so the faces were telling the different stories, but now pretty relaxed. Big, tall, fast bowlers will be rested quite well. And if they come to bowl and have a good score on the board, they could really challenge the Sindh batters. But that's for later. Muhammad Umar bowled a very, very good spell after lunch. He took 2 wickets in that spell. Coming off the back of an expensive spell by Asif. So he needs to pull things back, Umar. He's bowled that nagging length. He's found the edges with those away-going deliveries. But generally his lengths have been good. Look at his economy. Compare that to Asif, who's bowled 14 overs for 68 runs, and Umar into his 14th over, just the 33 runs and 2 wickets. A marked difference in the bowling figures. What a wonderful stroke. Just a little caress. Will it have enough legs? It's just coming underneath our commentary box. Saud will get there. Looking for the third. No, just the 2. Gorgeous couple of runs there for Kamran Ghulam. Yeah, good face off the bat there on that shot. Beauty. But hadn't been able to cross the fence. So he's been middling the ball well, and I think that whenever such kind of shots been happening from the bat, this shows the confidence that how good the batter is to go after the bowler. The 100-run partnership has been brought up as well in the meantime. 100 of 145 deliveries. Great recovery by these two, Kamran and Sarwar. Really given their dugout some confidence, because they were reeling at 128 for 5. Now looking set
for a decent first innings total. Yes, exactly, you're right. Good recession time here. Slight change of feel. I think they've got a gully and one slip. Well, you were talking about the runs given by the bowler. Exactly, it's 35 in 13, almost into the 14th over. Somar has done a good job here. The captain given him the plan, and he's just replying to the perfect way. But you have to give credit to these batters. They have done a good job. 100 runs partnership. When the 5 wickets down, the morale was down, the confidence building. So you give credit to Umar there. He's looking to bowl that fuller length, although he got driven on almost every delivery. He's got the field set, but that's where he thinks he will get the wicket. Asking Kamran Ghulam, throwing him the challenge. Yes, exactly. Every time when Umar is there, he's in a question that he's asking the question from the batters all the time when he's bowling. That gap has always been available for the rotation of strike. .69 gone, 229 for 5. Well, all the running has been made by Khyber Pakhtunkhwa in this partnership. Kamran Ghulam looking solid as a rock, especially against spin. Yes, and to me, like the session is tilting towards KP because they have batted well. They are taking their time, spending more on the crease, and they are able to dictate their terms. Bowlers, they are finding it really hard to go through the defenses of the batters. Either they are spinners or pacers. So there should be something extraordinary from these bowlers, or might be with a new ball. That new ball is 10 overs away after this. KP, remember, were at the bottom of the table when this round started. They're making a statement here at the Pindi Cricket Stadium. He's all the time in the world to go onto that back foot. Kamran has probably read Abrar better than anyone else this season. He's completely dominated him. Yeah, this happens. Like, this was the very venue, Rawalpindi, when Abrar was playing against Punjab, but it was totally a contrast, like taking 5 wickets in first inning, 11 overall, and today he's not among the wickets yet, into his 25th over. Dot delivery and made in. 229 for 5 after 70. Immaculate. Not Khyber Pakhtunkhwa on this point table before the start of this game. 22 points, that's all they could muster from the first 3 games, with 1 loss and 2 draws, languishing at the bottom of the table.
They've made the running in this match so far. Already collected 1 batting point along the way. Looking good for a few more. And also good first inning score will really set them up nicely in this game. We've seen teams who've made good first inning scores have made the running. No result has been forced just yet here. But the team that bats first and scores a good total, they really stay ahead in the game throughout. That has been the pattern here at the Pindi Cricket Stadium. Server didn't know much about that. Yes, you're right. This has been a huge confidence booster when you're putting like 300 plus in a first inning, being the batting side. Slight bit of inside of the bat when he was being on to the shot to play. Lucky one. Sometimes you might be dragging it back onto the stumps. So like anything 300 plus in the first inning will surely give you lots of boost, confidence. Away from the offside, and team like KP, like you have already been spoken that they have been on the bottom line on the table. They're good performers, like defending champions. So there should be something extraordinary, like keeping and carrying the session, like the previous season. They were on the top, so that there should be some glimpses in the season too. They are the top class side in the trophy. Well, this man can have a ball too. Remember, he got the wicket of Usman Salahuddin in the previous round. And it was a similar kind of situation, Ijaz. If you recall, there was a big partnership. Sindh really desperately needed to break that partnership, and this man, Fawad, came and did the job. Will Skipper Saud give him the ball? Sindh at the moment looking very lackluster. Nothing's happening. Nothing's beating the bat. No big shouts. Just the ball finding the middle of the bat pretty regularly. Yes, and Fawad Alam was having a bit of the chat with Umar before this ball was about to deliver that where you should be pitching it, and again he's going nearby to him, giving good advices, the test cricketer. I think so he's showing that you have to keep it that margin towards offside, try to make some more drives, like you have got one slip and a gully and cover position fielder on catching position nearby. And that's Umar's top delivery, the one that leaves the right-hander. Not extravagant movement, but just enough. It held its line. Well watched there. Well watched by a server, which shows that he's well set. He was tempted at one stage, then he just pulled out at the last minute. .229 for 5. Very lonely. It's Ali Yunus's friend. Abrar looks lonely as well. Not much chatter. It just looks like he's trying on his own to dismantle one of those. Yeah, they're all chatting. They're all discussing that how we should be getting a breakthrough here at this stage.
close, very close to drag on to the stumps. I think that was slight bit of more quicker than the previous delivery. It's too full to cut. Inside edge, could easily have gone on to hit the stumps. They put the brakes on scoring, that is for sure. Hassan has really kept well behind the stumps. Remember, Sarfraz is not playing. He would be handy in this situation, Sarfraz, because he G's his teammates up always. Yes, and I did see him when he's going down onto the toes. Into the gap, he will surely take a single. He will surely try to see his standing when the ball was delivered, but it's 72 gone. 230 for 5. This batting card looking much better now with this partnership. Contributions from Rehan Afridi, Sabzada Farhan with the half century, but this partnership is really threatening to take the game away from Sindh unless they break through. Well, in fact, they make a few breakthroughs pretty quickly. Sabzada Farhan and then Kamran Ghulam with the half century has really batted well. Not much to come after that though. This should give hope to Sindh. Yes, you're right. And Kamran can convert those 65 into 3 figures. He has got a good time. The things are favoring him. Pitch is supportive. So it's a good time to get 3 figures on the surface. The way he's batting here in the centre on the previous delivery, he was just waiting. And that has been the core for the first-class cricket. And you need to get some more patience. You may be waiting for the whole day to get a wicket, and might be like Majid Khan, who got 3 figures before lunch. These things are happening in a first-class cricket many a times. So you're talking about the partnerships, the long spells, and this is what this red ball cricket is all about. And I think so this man in picture, he's really a good bowler. All the time, on merit, he has got enough energy, enough pace, and accurate enough. That's persistence. This is perseverance. And Umar has done it all day. He's really a trier. We've seen him many times. He gives it his 100% all the time. Not blessed with express pace, but he's disciplined. He's really good. Skill with the ball. He's good. That in-swinger. Not long before he'll bowl that out-swinger of his. Once again, thick inside half of the bat. This is typical example of how you bowl in good areas consistently. Umar has put on a good exhibition of that. Yes, and how good the batter is. Matpi is giving you something there. At any time, like making some mistakes, dragging on, trying to drive, getting an edge. You need to be on the move. There you go. Close. Excellent bowling. This is just about the perfect line and length on this pitch. Slightly back of a length previously, but this one he pushes it a yard fuller, draws that front foot defense. Unlucky not to get an edge.
This over has been magnificent. He's bowled in good areas each and every delivery, asking questions on every ball. Another good one to finish off. 73 gone, 231 for 5. And time for some drinks here at the Pindi Cricket Stadium. खैबर पख्तूनख्वा की बैटिंग इब्तदा में कुछ मुश्किलात, अशफाक और वक़ार अहमद जल्दी आउट हो गए, लेकिन साहिबजादा फरहान और रेहान आफरीदी ने अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन दी। उसके बाद कामरान ग़ुलाम ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुज़ाहरा किया, उनका साथ दिया सरवर ने, दोनों नॉट आउट हैं। कामरान ग़ुलाम ने 66 रन बनाए हैं। ये बैटिंग थी, ये इस छक्के से शानदार आगाज़ किया था, चार्ज ऑन किया अबरार के ख़िलाफ़। पुल शॉट्स देखने को मिली बैक फुट पर, ये ज़बरदस्त शॉट मिड विकेट की जानिब, बेहतरीन बैलेंस, ये ज़बरदस्त कट शॉट और कट पुल, और इस दफ़ा फिर मिड विकेट पर खेले थे 7 के ख़िलाफ़। तो बहुत अच्छी बैटिंग कामरान ग़ुलाम की जानिब से, 2 छक्के लगाए, 7 चौके, और इस तरह ये अपने 50 रन भी मुकम्मल किए थे कामरान ग़ुलाम ने। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। शुक्रिया आसिफ, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कामरान ग़ुलाम, पूरी तरह सिचुएशन कंट्रोल में है, इनके क्रीज को ऑक्यूपाई किया हुआ है और साथ में दूसरे प्लेयर को भी खिला रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट, स्पॉट ऑन। दोनों बैटर्स की अच्छी चीज़ ये है कि इस पार्टनरशिप को जितनी ज़रूरी थी केपी के लिए, उसको संभाला दिया, और
अब केपी की पोजीशन एक मुस्तहकम पोजीशन, 5 विकेट्स गिर चुकी हैं, लेकिन मजमुआ बहुत अच्छा और उसमें आपको दाद देनी होगी सर्वर को, जिस तरह से उन्होंने साथ दिया कामरान गुलाम का। जी हाँ, केपी की टीम इस वक्त कंफर्ट जोन में, और बिल्कुल सर्वर भी इस वक्त 42 पे खेल रहे हैं और सेटल हो गए। शुरू में थोड़ा सा फंसे थे, लेकिन अपने आप को अच्छा सिचुएशन में निकाला इस सिचुएशन से, और अब बहुत अच्छे फ्लो में खेल रहे हैं। अच्छा पैडल स्वीप, मेरे ख्याल से 4 रन्स हो जाएंगे ये सर्वर के, जिनका स्कोर बढ़ता हुआ 46। जी हाँ, ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की और इसको खेल दिया फाइन लेग की जानिब। एक लॉन्ग चेस था फवाद आलम के लिए और यहाँ पर ये 4 रन्स हासिल हुए। 236 पर 5 केपी। कामरान गुलाम अब नॉट आउट हैं 67 पर। एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है, अब इसको इंतहा तक पहुंचाना होगा। अब इनके पास मौका है कि 100 रन्स बनाएं और अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी पोजीशन में ले आए हैं केपी को। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से ये एक 100 करें, या हो सकता है बड़ा 100 करें तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो जाएगी केपी के लिए। और जिस तरह शुरू में 2 विकेट्स गिरी और हमने देखा 80s में 90s में 5 आउट हो गए थे, फिर उसके बाद इन्होंने आके एक एंड संभाला। जिस तरह ये खेल रहे हैं, बड़े अच्छे कंट्रोल से खेले इन्होंने, कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं दी कि यार, शुरू से ही ये बड़ा पिक एंड चूज़ करते रहे। अच्छे बॉल को उन्होंने रिस्पेक्ट दी। हालांकि इब्रार ने उस वक्त विकेट ली हुई थी और उस वक्त वो अपने स्पेल के पीक पे थे और बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते, अपने पास आने देते हैं बॉल को, लेट खेलते हैं, वो जल्दी देखते हैं और लेट खेलते हैं। ये इनकी बैटिंग की क्वालिटी है। उमर ने भी बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है और 2 विकेट्स भी हासिल की हैं। बैटर्स को मजबूर किया है कि वो ड्राइव खेलने के लिए जाएं और फिर वहाँ से एज, और जिस तरह से साहिबजादा फरहान की विकेट हासिल की, लाजवाब। यह बड़ी कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉल की उमर ने। 16 ओवर 17वां ओवर है, सिर्फ 37 रन दिए इन्होंने, 2 विकेट्स हासिल की। और वो स्पेल जो था बहुत अच्छा था, जिसमें इन्होंने 2 विकेट्स हासिल की, फरहान की और नबी। कामरान गुलाम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं और जिस तरह से इनका आगाज़ हुआ था इस डोमेस्टिक में और बड़े शानदार बैटिंग की थी, 10 सेंचुरीज कर चुके हैं। पाकिस्तान टीम के लिए भी इनका नाम आया था, दो के डेब्यू नहीं कर पाए। जी, कामरान गुलाम जो है वो काफ़ी अरसे से बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और शुरू में PSL में इनकी सिलेक्शन जब हुई तो ये बेंच पे बैठे किसी टीम से, इनको मौका नहीं मिला उसमें। और उससे पहले वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी थे, लेकिन फिर भी अगेन उनको मौका नहीं मिला। लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी जो है ये इनकी की है और ये अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं और उसको फिर रन्सों से अपने प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़े ही मैच्योर हो गए एज ए बैट्समैन। और अगर आप इनकी ये इनिंग भी देखें तो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि नीट एंड क्लीन इनिंग्स खेली है इन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वेट करके, और जो
डॉट डिलीवरी और इसके साथ ही इस ओवर का इख्तिताम हुआ है। केपी 237 पर 5। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि सेलिंग और केपी भी बहुत स्मूथ जा रही है। अब आप बात कर रहे थे कि बीइंग अ बैटर, ये आपसे जाहिर है कि जानना चाहूँगा, नौजवानों के लिए भी ज़रूरी है, ये कितना ज़रूरी है कि बॉल का वेट करें बैक फुट पे और स्पिनर्स लाइक अब्रार को फेस करें, जिस तरह से कामरान गुलाम ने आज बैटिंग की है। और यहाँ पर ख़तरा हो सकता था, स्लिप में खड़े फील्डर ने कोशिश ज़रूर की थी लेकिन उनकी पहुंच से दूर और ये बाउंड्री हासिल हुई। जी अच्छा बॉल, थोड़ा सा बाहर एज लगा लेकिन थोड़ा वाइड ऑफ स्लिप था। अगर दूसरी स्लिप होती या गली का फील्डर होता तो डेफिनेटली एक चांस क्रिएट हो सकता था, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉल इब्रार की। जी काफ़ी दूर था फवाद से और उनकी रीच से बाहर था ये शॉट, लेकिन डेलिबरेटली खेले हैं ये शॉट, खेले डेलिबरेटली हैं, बट इस शॉट से अगर इज्तनाब करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये कट शॉट अब्रार का बॉल स्किट करता है। और यही बात इस गेंद से पहले भी हो रही थी कि जिस तरह से कामरान गुलाम ने वेट किया है और लूज डिलीवरी का वेट किया है। पहले 26 गेंदों में कोई रन नहीं बना पाए थे लेकिन शानदार छक्के से अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया था और इस दफ़ा इसको खेला कवर्स की जानिब, एक रन हासिल किया। सो बहुत ही शानदार टेक्निक से बैटिंग करते हैं, बड़ी परफेक्ट टेक्निक नज़र आती है। जी हाँ, पूरा टाइम लेते हैं और जिस तरह इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये किसी टाइम शॉट मारना चाहें तो इनकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी है। हमने ये T20 में भी देखा कि ये सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा रन रेट्स को भी अचीव करने में कामयाब होते हैं। तो एक अच्छे, मैं समझता हूँ एक कंप्लीट क्रिकेटर हैं, साथ में बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। इस ओवर में 5 रन बने अब्रार के 76 ओवर्स के इख्तिताम पर। केपी 242 पर 5। उमर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे कॉम बॉक्स एंड से। अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग का मुजाहरा किया है। और जब हम कामरान गुलाम को डिस्कस कर रहे थे तो आपसे शेयर करूंगा, ब्रायन लारा का अपने का आर्टिकल में लिखते हैं कि दुनिया का एक ऐसा बैटर है जो तीनों फॉर्मेट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है अपनी टेक्निक वाइज, और KL राहुल का नाम लेते हैं। और फिर हमने देखा कि KL राहुल ने हर फॉर्मेट में अपने आप लोहा मनवाया है। आपसे ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह जो बड़े बैटर्स हैं दुनिया के, विराट कोहली, केन विलियमसन, वो उनकी टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। वही चीज़ अब ये यंगस्टर्स सीख सकते हैं और वही टेक्निक लाकर, टेम्परामेंट लाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं। या देखिए, ये जो नाम लिए आपने, केन विलियमसन, बाबर आजम, ये बहुत जल्दी जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं कंडीशंस में और टेक्निकली
दे आर वेरी करेक्ट। और सबसे जो मेन चीज़ है बैटिंग में कि आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप तीनों फॉर्मेट्स के लिए आप अच्छे क्रिकेटर हैं, उसमें ही आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आप अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप उसको अपनी शॉट्स को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। और बड़ी क्रिकेट में आप अपनी शॉट्स को होल्ड कर लें, बस यही थोड़ा डिफरेंस होता है कि आपने कौन सी शॉट्स खेलनी है। 4 डे में आपने सारी शॉट्स नहीं मार सकते। आप वी में खेलेंगे या आप स्क्वायर लेग टू मिड ऑफ, ये आपकी बैटिंग है। कामरान गुलाम अब स्किपर हैं और बहुत ही ज़िम्मेदारी से बैटिंग का मुजाहरा किया है कामरान गुलाम ने। आज बहुत ही शानदार दिन है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट के लिए परफेक्ट कंडीशंस। और ये नासिर जो अंपायर हैं बहुत ही हंसते मुस्कुराते अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जेंटल पुश, सॉफ्ट हैंड से इसको खेले हैं मिड विकेट की जानिब और दूसरे रन के लिए कॉल ज़रूर थी। अच्छी फील्डिंग इब्रार की। देखें कामरान गुलाम पिच पे मौजूद है तो उनका एक एंड उन्होंने संभाला हुआ है, तो साथ में जो भी बैट्समैन आता है उसको वो खिला रहे हैं साथ। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपके पास जब अगर सीनियर प्लेयर आपका ऐसा हो कि जो रन्स कर रहा हो और एक एंड वो संभाल ले। तो फिर 80-5 से लेके 243-5 पार्टनरशिप आप देखें 115 रन्स की हो गई है। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द गेम। और मिड विकेट की जानिब इस दफ़ा इसको खेले हैं स्क्वायर लेग की जानिब, आई बेग यू पार्डन, और 1 रन हासिल किया। इस ओवर में 2 रन्स बने 77 ओवर्स के बाद 244 पर 5 KP। सिर्फ 3 ओवर्स की दूरी पे है नए बॉल से सिंध की टीम, और डेफिनेटली लेना पड़ेगा नया बॉल। वो एक चांस है जहाँ पे विकेट्स ले सकते हैं और इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते हैं। उनकी कोशिश यही होगी 350 के अंदर इनको आउट किया जाए। सर्वर 3 रन्स की दूरी पर है अपने 50 रन से, और दूसरी जानिब अबरार, और इस दफ़ा चार्ज लेने की कोशिश की थी, डाउन द ट्रैक गए थे। खुद भी मुस्कुरा रहे हैं इस शॉट पर। देखिए डाउन द ट्रैक गए और इसको फिनिश नहीं कर पाए। या आई थिंक निकल के सीधा खेलना चाह रहे थे लेकिन बॉल वहाँ पे थी नहीं, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया बाद में कि इसको पुश किया जाए हल्का सा। साइम अयूब एक उभरते हुए नौजवान, बैटिंग और ख़ास तौर पर आज फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है साइम अयूब ने थ्रूआउट आज पूरे दिन में। यह बड़े अच्छे यंगस्टर हैं, एनर्जी होती है इनमें फील्ड में। एक बार फिर पैडल स्वीप की और इस बार लगता है कि इनके 50 रन मुकम्मल हो जाएंगे। तो सरवर अफरीदी ने अपने 50 रन मुकम्मल किए। बहुत अच्छी इनिंग्स सरवर की। जी हाँ, एक मुश्किल वक्त में अपनी टीम को सहारा दिया और एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप। ये देखिए इस तरह अपने 50 रन मुकम्मल किए कामरान आई बेग यू पार्डन सरवर आफरीदी ने। और ये मुस्कुराहट, ये फातिहाना अंदाज, और 50 रन मुकम्मल होने के बाद मज़ीद एतमाद मिलेगा सरवर को। और आज ये पूरा जो बाकी मानदा ओवर्स हैं उसमें बैटिंग करते हैं तो केपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यासिर आपने देखा जिस तरह से बैटिंग की सरवर ने, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेले, अबरार को बहुत अच्छा खेले।
और बहुत अच्छी गेंद इस दफा, लकी रहे सर्वर, इनसाइड एज हुआ है। जी हाँ, लकी रहे इस बॉल पे और इनसाइड एज हुआ। अगर पैड्स पे लगता तो बहुत क्लोज होता ये। लेग बिफोर के चांसेस थे, लेकिन लकी सर्वर अच्छा खेले। इब्रार को, स्पेशली इब्रार को ये इस मैच में अच्छा खेले, लेकिन इब्रार ऐसे बॉलर है कि कुछ कर सकते हैं ये। सात रन्स बने हैं इस ओवर में और ओवर के अख्ताम हुआ। केपी 251 पर 5 और सर्वर ने 50 रन्स मुकम्मल किए हैं। 50 ये देखिए इस तरह से बैटिंग की, मिड विकेट के ऊपर ये शानदार शॉट खेली थी, ये स्ट्रेट ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर इस दफा खेले थे और ये मिड विकेट पर पुल किया। मिड विकेट पर बहुत अच्छी जारहाना शॉट्स देखने को मिली सर्वर की जानिब से। 8 चौके लगाए, 1 छक्का और ये वो शॉट थी जिसमें उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए। जी ऑन साइड पे अच्छी बैटिंग की है सर्वर ने और ज़्यादातर रन इन्होंने ऑन साइड पे किए अपने। अच्छा बॉल उमर का, कंसिस्टेंट है अपनी लाइन और लेंथ को लेके मोहम्मद उमर। यासिर, क्या हिकमत अमली हो सकती है इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए? सऊद शकील जो कप्तान है, सरवर आफरीदी 64.9 की औसत से स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा। क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया जाए? और इस दफ़ा कट किया इसको शानदार तरीके से, फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, 1 रन मिला। जी हाँ बिल्कुल, अभी सिर्फ थोड़ी 2 ओवर्स रह गए हैं, ऑलमोस्ट 10 बॉल्स हैं। इसके बाद नया बॉल ड्यू हो जाएगा, दूसरा नया बॉल सिंध की टीम के लिए, और वही एक चांस है कि उसमें ऑब्वियसली मीर हमज़ा हैं, वो फ्रेश हैं, वो एक एंड से बॉल करेंगे और दूसरे एंड से शायद हमें आसिफ महमूद देखने को मिले बॉल करते हुए। तो वो एक चांस लग रहा है कि वहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा चीज़ें काफ़ी इजी हो गई हैं अभी केपी की टीम के लिए, तो उन्होंने इस टाइम को अपने बनाया है। तो मेरे ख्याल से मेहनत जो की है इन्होंने, तो नया बॉल जो है वो टेस्ट लेगा इनका थोड़ा सा। और 250 रन क्योंकि मुकम्मल हुए हैं केपी के, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स भी मिलेंगे। उमर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश जारी रखे हुए हैं इस टिपिकल लाइन और लेंथ के साथ कि उनको विकेट यहाँ पर हासिल हो। दूसरी जानिब कामरान गुलाम मुतमईन, बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। और ये जो खालिद उस्मान हैं बिल्कुल इस एफर्ट से खुश नज़र आते हैं। उनके साथ इस दफ़ा इसको कट किया है शानदार तरीके से, थर्ड मैन की जानिब ये बाउंड्री हासिल की। तो 4 रन्स, थोड़ा हवा में था ये स्ट्रोक, लेकिन फील्डर से काफ़ी दूर था। 4 रन्स हासिल किए कामरान गुलाम ने। बैक फुट पे आके इसको स्लाइस किया, थोड़ी ऊपर थी शॉट, लेकिन अंदर फील्डर से थोड़ी सी दूर, 4 रन्स। कामरान गुलाम अपना बैट तब्दील करते हुए अब इस वक्त इनके पास मौका है कि अपने इस इनिंग्स को आखिर तक ले जाएं, एक बड़ा 100 स्कोर करें और एक दफ़ा फिर
इस बात का ऐलान करें अपनी परफॉर्मेंस से कि वो तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ 128 रन की पार्टनरशिप और इसी वजह से केपी का जो ड्रेसिंग रूम है इस वक्त हैप्पी। साजिद शाह जो है वो बॉलिंग कोच केपी की टीम के। उमर का 19वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। केपी 256 पर 5। अबरार आज के दिन का अपना 30वां ओवर कर रहे हैं और सरवर और कामरान गुलाम दोनों ही बैटर्स ने शानदार तरीके से फेस किया है अबरार को। अब तक 93 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है। कामरान गुलाम ने जिस तरह से अपनी बैटिंग का आगाज़ किया था आज के दिन में, मुश्किल वक्त में बैटिंग के लिए आए थे जब तीसरी और चौथी विकेट 111 रन पर गिरी थी और फिर उनका साथ दिया जिस तरह से सरवर ने। जी पिच थोड़ी सी आज स्लो भी लग रही है जो बाकी पिचेस के मुकाबले में। काफ़ी टाइम मिल रहा है बैट्समैन को, ये भी एक वजह है कि इनको आसानी हुई। 128 पे 5 आउट थे और 128 की पार्टनरशिप भी हो गई है अब। जिस तरह से एतमाद नज़र आ रहा है दोनों बैटर्स में, वो खेल रहे हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही अबरार के अगेंस्ट। अर्ली ऑन स्ट्रगल ज़रूर किया था लेकिन जूं वक्त गुजरा ऐसा लगता है कि स्पिनर्स के लिए मुश्किलात बढ़ी। सो ये मेडन ओवर है अबरार का और 256 पर 5। जी हाँ, बॉलिंग में तब्दीली और मीर हमज़ा जो है वो मीडिया एंड से बॉलिंग के लिए आए हैं और लगता है यही है कि अब न्यू बॉल जो है वो अवेलेबल है तो शायद कुछ बॉलों के बाद न्यू बॉल ले ले सिंध की टीम। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आगाज़ में और 2 विकेट्स हासिल की थी, 4 मेडन्स किए हैं और मीर हमज़ा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का और कप्तान ने अब हिकमत अमली तब्दील की है और मीर हमज़ा को आजमाने का फ़ैसला किया है। यहाँ बहुत ही मोहताद अंदाज है कामरान गुलाम का और बॉल जो है वो 80 ओवर पुराना हो चुका है और हम देख रहे हैं इस वक्त कामरान गुलाम भी सेट हो चुके हैं। शॉर्ट कवर फील्ड अगर आप देखें, शॉर्ट कवर
गली स्लिप जो है वो तीसरी पोजीशन पे खड़ी है. पॉइंट है एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ. अभी शायद कुछ बॉल करें, कुछ गेंद करें, अपनी बॉडी को खोलें, फिर उसके बाद नया बॉल अवेलेबल है तो लेना चाहिए मेरे ख्याल से. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. और क्योंकि पुराने गेंद से भी रिवर्स स्विंग देखने को तो नहीं मिल रही है सर. नए गेंद से स्विंग में मदद ज़रूर मिल सकती है मीर हमज़ा को. जी अभी ये अपने आप को देख रहे हैं इनकी बॉडी कैसा फील कर रही है बॉलिंग के दौरान, क्योंकि बाज़ दफ़ा यूं भी होता है टाइम्स के आपकी बॉडी इस तरह अच्छा फील नहीं कर रही होती तो नया बॉल लेने का देना भी पड़ सकता है. लेने के देने भी पड़ सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं. लेने के देने भी पड़ सकते हैं क्योंकि दोनों सेट खेल रहे हैं. और उसके बाद जो है नासिर हुसैन अपने मखसूस अंदाज में और मीर हमज़ा की ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया. मीर हमज़ा की बॉलिंग की बात करें, दूसरी जानिब ये बहुत ही मुतमईन डग आउट ड्रेसिंग रूम केपी का गपशप का सिलसिला जारी है. और ज़ाहिर है कामरान ग़ुलाम और सरवर ने जिस तरह की बैटिंग की है अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला है. और इस दफ़ा इसको खेले सीधा फील्डर के पास. फवाद आलम इसको कलेक्ट नहीं कर पाए. ये ऑन द अप खेला, थोड़ा सा शायद अपिश था लेकिन थोड़ा दूर फवाद से. दूसरा मौका है जो फवाद से थोड़ा सा दूर गया बॉल. एक स्लिप में हमने देखा, एक कवर में. और एक और अच्छी गेंद मीर हमज़ा की. इसके साथ ही इस ओवर का इख्तिताम हुआ. 81 ओवर के इख्तिताम पर केपी 256 पर 5. Well, we have got good solid middle order. 78, not out. Kamran Ghulam, 55. Mohammad Sarwar Afridi, 256 for 5. Looking good. Good picture. Not a good start, but they are finishing it on a good note. Down the wicket, over the bowler's head. Approaching to the fence for 4 in no time. I got Ali Yunus along with me. He will better explain you the replay. Just enjoying this partnership. It's been lovely. It's been authoritative. Look at that. Nice use of the wrist. Nice footwork also. The best part was he was hitting straight. Quality batting by these two. The partnership is 132 at the moment. Another one. Over the head of that mid-on fielder. Another boundary for Sarwar. He is dealing in boundaries. Excellent hitting. Well, I think they are utilizing this ball in a proper way, dictating their terms now.
Curtsy 63-78. Then you can play like this. Yeah, the new ball is due. They haven't taken it yet. All these mind games going on at the moment. But how beautifully these two have played. Just commendable. Very good batting. Server has been an excellent change in this game. An all-round cricketer. 64 at the moment. He's held one end together alongside Kamran Ghulam, who's on 78. Just excellent partnership. It's been very, very hard work for this man on your screen. 31 overs, 102 runs for 1 wicket. Too much bowling for one day. Considering that this art, the bowling he does, it's a difficult art. When you bowl 30 overs, it's quite tough for the fingers. They must be a very happy camp. They were in a bother at one point, but now it's relaxed. It's all they made a comeback in this game, and now they are definitely dictating the terms. South Shakil, I would say it's not been a good day as a captain for him. Yes, without delivery. 82 gone. It's 265 for 5 KP. Yeah, let's talk about the captaincy from South Shakil, starting from early when they got 2 wickets. Probably that was the time when he just let loose a little bit, gave away easy singles to Sabzada Farhan and Rehan Afridi. In my liking, he should have attacked a little more at that point. We saw him give away easy singles. There was a fielder at deep point very early in the inning, and it has just made KP come back in this game. Mir Hamza has been the pick of the bowlers, no doubt about that. He's probably been the one who's stuck to the task. Ball consistently at that good line and length. Got a couple of wickets early on with the new ball. Now the new ball is due, and he's into the second over with this old ball. But what may be the reason they're not taking it, Ijaz? Yes, they're waiting too long, like his partnership. 137 in 227 deliveries. This has been mighty long. So I think that they should test their luck here with a new ball. Beautiful delivery. Sarwar had no idea. Great line and great length also. Yeah, good one. This is gone through. Slight bit of late. Must be there is some sort of movement inside somewhere. Yeah, just a little movement. Sarwar played for the angle. He's a quality bowler, I tell you, Mir Hamza. He will bowl you all day at one line and length. Ideally, a bit more pace would help, but still with this pace, he's done really well for himself. Well, what think has made some sort of testing time for the bowling department here? Courtesy, good partnership. That's why they've been making this little bit tougher for the bowlers to bowl on such surface. Earlier on, we did see that this surface was quite greenish. Looked like that there must be some drama. But looking on such kind of batting, this has been totally in contrast. Almost after 5 wickets. Yeah, this is the 4th game that we are witnessing here in Rawalpindi, and the pitches have been similar. And this is the 3rd game for Sindh on the same venue, and they have not learned, I would say. The first 3 matches that we witnessed, they were quite on the shorter side.
and today they've been too full. Only this man on your screen, Mir Hamza, has been consistent. He knows where to bowl because of his experience. But on the other hand, he was not well supported by Asif Mahmood. Mohammad Umar did well. He tried his best. But Mohammad Asif has been disappointing. He's been too full, gave away easy runs. And the tactics you were talking about, there are two fielders that cover, short extra cover. There's a fielder at point and mid-off, looking to make him drive. But this line is not going to work. Outside the off stump, kept low as per Hassan. He's replaced Sarfraz Ahmed. Not easy shoes to fill, but he has done well. But one thing they've definitely missed out is the Sarfraz behind the stump as a motivator, as the next captain. He adds so much value, Sarfraz Ahmed. I'm not saying he did a bad job. He did a fantastic job today. But having Sarfraz behind the stumps is a different feel. It's a different motivation. He's been promoted from the second 11, Hassan. But talking about Sarfraz and his leadership qualities, he was a great help to South also as a captain. I think they've missed him, Sarfraz, big time. It's 266 for 5, KP. Tough job for Abrar at the office. 31 overs, 102 runs for a wicket. Then 2 wickets are shared by Mir Hamza and Mohammad Umar. Well, still no chance for a new ball because we see Fawad Alam now coming into ball in place of Abrar. Another tactic used by Saud Shakil. Because these two batters are well set. And we know that when the new ball comes, it will always race through. It will always go for runs. And that has been the concern that we have seen since morning for Saud Shakil. This is 60 wickets for him. Best of 4 for 27. Fawad Alam. He got the big wicket in the last game against Central Punjab. Abdullah Shafiq, a loopy delivery outside the off stump. Got that big wicket. Can he do the same here? Can he repeat that performance and get the wicket of Sarwar or Kamran Ghulam, either of them? He has that thing. He has that X factor in his bowling, that wicket-taking deliveries. We might not see him bowl regularly, but he has that habit of breaking the partnerships. And that is why he's been brought on by Saud Shakil. It might work for them. Well, you were talking about that Martby. They are waiting for next morning for getting the new ball. But I think life is all about taking risks, gambles. So it's a good time if you may be taking some gamble, some risk, give new ball to you, pace attack. Martby, they can give you a couple of wickets here. Otherwise, I think 266 as finishing off the day. They might be getting like 280, 290. Yeah, 6 overs to go after this one. Yeah, you make a good point. Probably the bowlers are tired at the moment. Mir Hamza has bowled a lot of overs. Asif hasn't got it right. Mohammad Umar also has bowled a lot of overs. It's been disappointing, I think. Better was expected of Mohammad Asif. I think he has had a wonderful first game where he took 7 wickets. But he just didn't get it right today. The length was too full or maybe too short. He hasn't learned from that first game where he took 7 wickets. He was successful there. And that is why Sindh are way behind now in this game. Because this partnership is just building and building. 138 at the moment. It's 266 for 5, KP. Just 6 more overs, boys. Then you can go back to hotel and relax. 6 more overs to go. Yeah.
Shah Faisal there having a word with Muhammad Umar, telling a few tricks how to get wickets. He's played a lot of cricket here in this ground. Shah Faisal, he would know how to get wickets. Wicketkeeper batter by nature though. Mir Hamza will continue into his 17th over. I think both teams have settled down here. They want to get over this day. Come back tomorrow fresh. New ball is, they're not taking it. And KP batters, they're happy with it. Just let these 6 overs pass. Come back tomorrow, fresh mind, fresh legs. Yes, exactly. They didn't start well today earlier on, but they are really relaxed into the comfort zone at this stage. 266 to the last half of the team. The situation is really good for them. 2 is the call. 2 he gets. Very good running by Kamran Ghulam. Although server did slip, but he was always sure that he's going for the second one. That is why he probably is apologizing to server. He didn't even see. Have a look at that. He was so sure that he's going for 2 from the moment he hit it, from the moment he placed it. There you can see a bit of slip by server. But Kamran Ghulam was not ready for say no. He was always sure that there is 2 available. In the air. There is no one there to take it. Just one more run added to the total. Yeah, lots of shouts, but nothing has been productive. So easy here for the batters. We've been speaking this since last 2.5 hours, that this has been really good for the batters. There you go, upishly played, but no one was there at backward point. The field is set for such a miscue, but lucky that it went right towards that third area. How impressive has server been with Kamran Ghulam? We all initially thought that this might be a very expensive change in server in place of Arshad Iqbal or Adil Amin. They've got 2 players there. There you go. We can't see both of them though, but still he has done a great job, and with his bowling, with his capabilities to bowl new ball also, we might see him in action soon. It's been a very good change, I must have to say, admit it. KP without their head coach Abdur Rahman. He's there for Junior Premier League duties. But still they've got Sajid Shah in their camp now. A very, very good cricketer of his time. Fast bowler. There is Adil Amin in whites. Irfanullah Shah also. Both not included in the side. I agree with your point of Abdur Rahman, who really lifted the KPK side on the top in T20s, in Quaid-e-Azam Trophy. Was in the air for a while again. Luck has definitely been on Kamran Ghulam's side. This is not the first time that he has played it uppishly. Look at the frustration. That laugh is out of sheer frustration. Look at that. Yeah, it's just perfectly placed between the 3 fielders. That's luck. 85 gone, 271 for 5. Well, there should be something underneath it.
Anything? Or might be sweat trying to dry that. Nicely driven. Just for one. And he makes a fumble, which will allow the batters to come back for the second. Well, this is not a good time for the fielders here, as the batting has been so easy. Look at that, into the gap. And right on to the boundary line, made a fumble. Umar was there, have a long day for performing his job. Bending down after bowling like 18, 20 plus overs, being a pacer. Tough call. Yeah, it's never easy. Into the last 4 overs rather, after this 2 deliveries. It's been hard work for these fast bowlers, especially Mohammad Umar. Way too easy at the moment for these 2 batters. Yes, and these guys, they are looking, waiting for any kind of big miracle that they can get a couple of wickets here in the dying moments. Down the wicket. This is going high, big one. Excellent take. Superb cricket. It was in his zone, it was flighted, and he just launched it. Look at that footwork. Excellent. Waited enough. Came out late and gave it what it deserved. A huge hit for 6. Superb cricket. Well, this is really a wonderful. Every time he's using his feet, came out of the crease, he has produced the results like this in a form of, or in the shape of boundaries and a 6s. 86 gone, 280 for 5. New ball maybe, just for the last 4 overs. Maybe we could try something different. This is what I would be hoping. Nope. Still shining that old ball. Maybe just looking for that reverse swing a little bit, if they can get one. So easy for the batter. He was just looking onto the ball like some traffic is going in front of him. Excellent. This has been a beautiful batting. Yeah, that footwork was amazing. Just gave himself enough room to get underneath that delivery and played it straight downtown. Yes, he is timing it to the perfection. Bat flow was perfect. Excellent. He's really having a good time in this partnership, going 152 in 252 deliveries. Tough ask, tough call. I think credit has to be given to this man on your screen, Sarwar. The way he has been there, you expect such quality from Kamran Ghulam, but he was falling short of the partners. And Sarwar coming at number 7, playing an inning that he's playing, 72 of 109 deliveries. Magnificent. That is what you want to see from your late order batter. The support. Solid as rock, Kamran Ghulam on the other hand. They've complemented each other very nicely. At any moment when Kamran Ghulam got stuck, Sarwar was the one who took the lead and scored runs at quick rate. Every time the ball is pitched up or pitched short, they've been punishing it. That has been the quality of this partnership. They've definitely brought back KP into this tournament. Remember, they are at the last of the table.
This will be a proud effort by these batters, because they've just only gained 4 batting points in this tournament so far. And for a team like KP, such a huge side, defending champions, just hurting to be on the last of the table. And this is a good opportunity. If they can score big runs here, and with the type of bowling they have, they will have a very interesting. Move aside, Asif. Nice time to have tea, but not right in the front of batters. Very good running. This has been the trademark of this partnership. The running between the wickets have been excellent. They've run well. Yeah, this is what he's suggesting. It was a pitched slower one into the pitch. Yes, excellent running between the wicket. Look at that. Play and run for that. Beauty. Exactly what has been happening here. That bowlers, a tough day for them. 2 wickets for Hamza in his 18th over. A long job. They're waiting to get the day off. Yeah, they were hoping for some reverse swing. It has not happened for Mir Hamza. The last delivery in his run-up, you could see him hiding that ball, hiding the shine. That shows that it is taking the chance of reversing the ball. But with this space and this hour of the day, he's tired also, he's not getting it right. Sindh camp, a disappointing one. $281 for 5. Fawad will continue. Well, what miracle can happen here? They can finish the game here. Well, playing in street cricket, I remember one line from my friend that they were playing like for 8 or 7 overs. He said, make a Yorker on the face. Might be. Don't do it here. That was some brutal cricket you played growing up. Yes, exactly. It's totally a professional cricket. But that's why it has been called like temperament test. You have to show patience. That's why a first-class cricket has been rewarded at international level. Oh, I thought you were talking about the street cricket, that you need patience. You need patience with dealing with people like you, I guess. In street cricket, because at the moment, nothing is happening. First inside, especially. Nicely beaten. Yes, towards offside. Very close. And Khurram is already sat there for any sort of thing because he should be ready. Anything can come up. So, playing in gully cricket, were you a batter? You're a bowler? Who were you? Or you were the one who had the ball and the bat? We used to own it. Well, every time waiting to get a bat and bat there.
I was just on the call. Hadn't batted well, hadn't bowled well. So you were the one who used to own the bat and the ball. Right, I get it. 88 gone, 283 for 5. I think Sam here, Saud Shakil is waiting that anyone can come and can get him a wicket or two at this stage. Abrar should be feeling some sort of pain in his fingers. A long day job and lots of work to do after this game. A change of ends for a change for Abrar. Previous game we saw him ball from the far end all day long. This is media center end for the first time that we are seeing Abrar. He will be bowling against the wind for his googly. Because he's heavily relying on that googly. He's got most wickets on that. So Sindh would be hoping that he can get one more before the day ends. They can sleep better then after that. Because at the moment KP is rattling along. Yes, you're right. They must be looking on for the tomorrow, like with a new ball and fresh things with a good pace. But bagging like 290, 295 for 5, I think KP will be having another good confidence either in batting by tomorrow. Almost dragged it on. An expensive drive by Kamran Ghulam. Although it will earn him a couple of runs, but it was a huge risk outside the off stump. Yeah, disappointed. Yes, definitely he should be. Really lucky at this stage. When the sun is setting, he's still there. Yeah, I wanted to go hard at it. It's a rare bad shot attempted by Kamran Ghulam. He could have easily dragged it on into the stumps. Very lucky. It's been that sort of a day for him. Yes, you're right. Sometimes luck has been really favoring you. Either you're doing bad, the things are happening good for you. But overall, he has batted well. Rare times that we did see that he's just playing those kind of rash shots. That's beautifully played. He has handled Abrar like a pro. 89 gone, 286 for 5. As we come to the last over of the day. That has brought smile on Ijaz's face also. He's had a long day. Eager to go back home. Quaid-e-Azam will bowl the last over of the day. 286 for 5 is KP. They would want to go without losing any more wicket. No more drama needed. What can Quaid-e-Azam do? 6 flighted deliveries outside the off stump. Yeah, starting off with 1. And what we were talking about since morning, that consistency, the way, the temperament, I think he should be attempting here those loopy deliveries. Second one. Flighted. It's been a tough day for the umpires, but he's done a good job. Down the track. What happened there? Just slipped. And that is the sort of miracle you were referring the last over. Maybe that sort of a miracle that where he slipped and get himself out. But he's pretty lucky that the ball is in front of him. It didn't go into the wicketkeeper's hand. That's forcefully hit. Remarkable hitting. That is beautiful.
That is authoritative by server. Although this is the last over, but that makes no difference to him. Yes, excellent shot. But he has hurt himself. Look at that, right underneath of the bat. Extremely well played. Into the gap. Timing is perfect. Slide, bat in vain. Boundary approached. 78 for server. How well has he played? Magnificent inning. He's not happy. He's angry. Quaid-e-Azam. Again outside the off stump. Flighted. It's not happening. Khalid Mahmood. Good umpire. Forcefully hit again. But this time Saad Khan will cut it off. And this is the end of the over and end of first day's play here at Rawalpindi Cricket Stadium for round 4 game between Sindh and Khyber Pakhtunkhwa. The day definitely belongs to Khyber Pakhtunkhwa. They've scored 291 runs for the loss of 5 wickets. It's been struggle for Sindh side. And what a remarkable partnership this has been. Look at that session, the evening session, 31 overs, 108 runs scored, and without a wicket being lost. It's been fantastic. This partnership is 163 that have definitely put KP on top, and they're looking, both of them are looking for a big one. Yes, extremely well batted, this partnership. 163, but tough day for the bowlers. Almost after half day, when 5 wickets they were taken after that, and they were not been able to whip up the batting. They really dictated themselves and made it to the perfect way. Extremely well played. Yeah, that's the scorecard. Early scares by Mir Hamza when he got 2 wickets, that both openers for 6 and 1, and then there was a good partnership between Rehan Afridi and Saibzada Farhan, and after they went to Ibrar and Umar, it was Kamran Ghulam and Sarwar Afridi who held these innings together for 89 and 79 at the moment. They're still not done yet. They're eyeing big ones, both of them. It's been a wonderful effort by these two. 291 for 5, KP. Well, these are the highlights of this session. KP 291 for 5. They played all along the ground. And I think so this session was really belonging to the batting. The way they batted here, the partnership, the shot selection, everything was executed perfectly. It's been wonderful, this partnership. They really handled Ibrar very well. I think he was the main weapon for Sindh side. They did attack him on every occasion. They used the feet perfectly well, and whenever pitched up, they've launched it, and then it was up to Quaid-e-Azam. But Sarwar Afridi had other ideas. He just went hard at him, forcefully hit through covers for 4. It's been an excellent partnership for KP. 163 unbeaten. It's been a really tough day at work for these Sindh bowlers. Mir Hamza and Mohammad Umar taking 2 wickets each, 1 for Abrar Ahmed. Rest have been a struggle, big time struggle. Saad Khan bowled for 2 overs, Saim Ayub tried for 1, Quaid-e-Azam for 4, but nothing has worked for Saul Shakil and his team. Well, that's it from Rawalpindi Cricket Stadium. It has been a fascinating day of cricket. We will see you tomorrow. Till then, take care and goodbye.